हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। और ये गंभीरता से भाई हेलो क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज भाई आई डोंट नो आज के जो मैच होने वाले ना, उसके बाद में एटलीस्ट एक टीम तो भाई दे माइट बी लिसनिंग टू सम म्यूजिक। व्हाट म्यूजिक इज इट? ओ समथिंग लाइक दैट, यू नो। सब लोग को पता है क्या है। यस, विद नो बैंटर भाई, लेकिन रियलिटी वो ही है। क्योंकि यस, इट्स अ ह्यूज ह्यूज नाइट, especially for Barcelona fans and Inter Milan fans. तो भाई आ जाओ सब लोग। और yes, we are going to be having a lot of discussion. We are expecting panel to join us as well. अरे भाई आदिदेव गुरुजी joined us as well. By the way, Guruji, I know that you're very tired. भाई कोई नहीं, you take rest, but hopefully we'll have Guruji very soon. We all know that. Always good to see Guruji as well. And yes, Guruji भाई predictions हो जाए चैट में। आप बोलिए क्या predictions है आपके, बिकॉज इट्स ह्यूज और हम लाइनअप देखने वाले। एब्सोल्युटली दिस इज समथिंग हम वेट करें बस। यहाँ पर बहुत सारा ये भी आ रहा था पहले की सोशियोज ने बेच दिए इन टर्म्स ऑफ द टिकट्स एक्सेट्रा, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड यहाँ पर, बिकॉज देयर इज अ क्रेजी एटमॉस्फेयर ऑलरेडी। आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्वीट्स कमिंग इन, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे। तो something's got to give. It is one of those nights, or these are the nights we wait for. सच में बोलता हूँ। Obviously, as a Chelsea fan, as a Milan supporter to some extent, last night was one of the historic nights, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन हाँ, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड जो हो रहा है अभी में नापोली डूइंग मैडनेस, क्या बोलोगे? और एथलेटिको मैड्रिड, इज इट इवन सरप्राइजिंग कि एथलेटिको मैड्रिड के मैच में ना कुछ तो बवाल हो रहा है, और हम वो भी अब डिस्कस करने वाले। हमें को बिग अप एब्सोल्युटली, फील्स लाइक 6-1 पेरिस, ओके, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट। या बिल्कुल बिल्कुल, हमें 4-1 बोल रहे, चलो 6-1 से 4-1 हो गया। अगेन पीपल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम। ज्यादा लोग आएंगे तो मजा आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट, आप जानते ही हो। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी दिखाने वाला आप लोग को लाइनअप, और वो ऑफ कोर्स हम देख चुके हैं, आई एम गेसिंग। अरे भाई एक एक सेकंड, ये नापोली आयस के मैच में क्या हो गया? 3-2 हो गया। ये कब हुआ भाई? 3-1 हुआ था, मैंने चैनल चेंज कर लिया, मैंने लगा दिया एथलेटिको वाला मैच, भी बहुत इंपॉर्टेंट। बर्गवाइन गॉट अ पेनल्टी, ओके, तो हाँ इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक रेड कार्ड दिखा रहा है इन द मैच ऑफ एथलेटिको। भाई क्लब ब्रुज के प्लेयर को मिल गया रेड कार्ड, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब समथिंग क्रेजी इज गोट टू हैपन भाई। कमल सोवा को मिला है सेकंड येलो और दैट्स अ रेड कार्ड। बट मैं अभी दिखाने वाला हूँ बार्सिलोना का लाइनअप, दैट इज व्हाट विल कम टू, ऑफ कोर्स विल कम टू लिवरपूल्स गेम भाई। काफी बाकी गेम्स भी है, टॉटनहम की बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट है इन माय ओपिनियन। नहीं तो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना कहाँ गया? अच्छा चलो आ गया भाई लाइनअप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी लाइनअप अभी देख रहा हूँ। आई वाज ऑन अनदर चैनल, और मैं दूसरा चैनल में था, तो मैंने देखा नहीं अभी तक लाइनअप। भाई अलोंसो स्टार्ट्स, और हाँ देयर वाज अ वर्ड कि अलोंसो विल स्टार्ट अगेन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैंपियंस लीग में हाँ देव लॉस्ट टू इंटर लास्ट गेम में, लेकिन जनरली ना अलोंसो हैज नॉट बीन टू बैड, सच में बोलूं तो। मैं दिखा दूं आपको भी लाइनअप। ये है आपका लाइनअप, देखिए। अलोंसो स्टार्ट फॉर बार्सिलोना विद एरिक गार्सिया और पीके। तो एरिक गार्सिया पीके तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आज पता नहीं भाई कोई किसी ने ट्वीट किया था कि दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट अलोंसो बिकॉज दे वांट पेस। ओके ओके भाई, as much as I love Alonso, he's nowhere close to that player who has pace. लेकिन I think यहाँ पर tactics is more about having that height of physicality, or maybe you're someone who can bomb on, or beat Dumfries, because Dumfries on the other side बहुत ही weak है in terms of defensive ability compared to the top wing backs in Europe. लेकिन हाँ अटैकिंग वाइज में ही इज वन ऑफ द बेटर वंस, तो यार वहां पर अलोंसो टू लुक आउट फॉर श्योर। ऑफ कोर्स वहां पर स्क्रीनियर है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा हाउ द लेफ्ट विंग गोज, क्योंकि आई वाजंट एक्सपेक्टिंग भाई आज रफीनिया और डेम्बेले वापस से शुरू करेंगे। और यस आई नो काफी बार्सिलोना फैंस उससे इतने खुश नहीं है, बट इट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग मेरे लिए दैट रफीनिया शुरू कर रहे हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब टाइम विल टेल हाउ अलोंसो रफीनिया करते इस गेम में, बिकॉज पिछले मैच में आई डोंट थिंक दे गॉट द ट्यूनिंग गोइंग, और इसलिए सब अटैक्स हो रहे थे मोरलेस डेम्बेले के साइड से। और डेम्बेले के साइड से क्या हो रहा था भाई? टॉस करो इंशाल्लाह, वही हो रहा था। आज होपफुली समथिंग एल्स हैपेंस। दे लिटरली प्लेइंग द सेम लाइनअप यार। मुझे कुछ, हाँ दे लिटरली प्लेइंग द सेम लाइनअप जो खेली थी लास्ट वीक जो हारी थी। तो और यस, रेफरी वाज इन क्वेश्चन वहां पर, लेकिन कम ऑन लेट्स बी रियल कि यार बहुत ज्यादा कोई था नहीं मैच में। एनीवे कोई नहीं, कैसे हो अंकित भाई? वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बारसा, सेंसिंग अ ग्रेट मैच, जस्ट वांट टू सी अ गुड मैच एज अ रियल फैन। हाँ भाई सच में कुणाल, मैं भी वही चाहता हूँ। मुझे तो एज अ न्यूट्रल नो समटाइम्स, वेरी ऑनेस्टली बोलूं, as a neutral sometimes you like watch alongs, you like watching as a content creator भी, क्योंकि यहाँ पर आराम से मस्ती से मैं देख सकता हूँ जस्ट लविंग फुटबॉल ड्रामा, और ज्यादा हो तो यार आई वोंट बी बायस्ड, तो वहां पर बहुत ही मजा आने वाला है मुझे।
LM10 in the house, Viscal Barca, LM10 how's the feel? How is the feel? आप बोलिए कैसा लग रहा है? We are going to win for sure. हाँ कुणाल, मैं दिखाने वाला हूँ ट्वीट भाई थोड़ी देर में, दैट इज अ रियल थिंग. बट अगेन पीपल भाई, जो भी लोग जुड़ा है, प्लीज प्लीज लाइक द स्ट्रीम, डू नॉट फॉरगेट लाइक द स्ट्रीम. और अगर आप शेयर कर सकते हो ब्रिलियंट है. यस आई हैव ऑलवेज भाई, जैसे ही मैं लाइव जाता हूँ ऑटोमेटिकली एक ट्वीट चल जाती है मेरी ट्विटर अकाउंट में, तो प्लीज इफ यू कैन रीट्वीट दैट. मैंने लिंक भी शेयर करना है तो वहां पर करो तो ग्रेट है. प्लस यस, इट्स नॉट जस्ट बार्सिलोना, इट्स आल्सो बिग फॉर इंटर मिलान फैंस. आई विल बी हैप्पी विद द ड्रॉ, बट लेट्स गो फॉर द विन, कॉज व्हाई नॉट. चलो यार, सीन क्या है? सीन ये है, क्या इंटर मिलान के लिए है मस्ट नॉट लूज मेरे ख्याल से. और क्योंकि इट्स अ 6 पॉइंटर. समटाइम्स यू से ना 6 पॉइंटर क्या है, दो टीम्स वेयर दे आर सो क्लोज इन द टेबल, वो भिड़ते हैं ना, तो दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. यहां पर इंटर आर 3 पॉइंट्स साइड ऑफ बार्सिलोना, लेकिन अगर बार्सिलोना जीतती है तो दे गो ऑन 6 पॉइंट्स एज वेल. और वहां पर डिफरेंस बीइंग द हेड टू हेड होगा. एक सेकंड, ओ भाई साहब, एटलेटिको मैड्रिड, व्हाट अ ग्लोरियस चांस he missed भाई. क्लब ब्रूज का कीपर, आई मस्ट कमेंड हिम. मोराटा एज ऑलवेज मिसिंग, लेकिन आई वुडंट ब्लेम मोराटा इसमें. एटलेटिको मैड्रिड याद रखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है. मैच है रादर फॉर एटलेटिको मैड्रिड इन द ग्रुप, क्योंकि क्लब ब्रूज अभी के लिए फेवरेट्स लग रही है उस ग्रुप में. और ये मेरे ख्याल से ग्रुप ऑफ डेथ भी बोल सकते हो. लेकिन अच्छा, मोराटा मारा भाई लिटरली क्लब ब्रूज के कीपर के मुंह पे, चेहरे पर. कोई नहीं. अगेन टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, आर यू सरप्राइज दैट बाल्डे इज नॉट प्लेइंग? आर यू सरप्राइज दैट? आई नो मैं कमेंट लेने वाला हूं, लेकिन अगेन टॉकिंग अबाउट इंटर मिलान, दे माइट मिस कोरिया. कोरिया भाई ये पेसी एलिमेंट थे जो काउंटर में बहुत यूज होता है, स्पेशली द कैंप नु. लेकिन नॉट जस्ट दैट, ऑफ कोर्स दे आर ऑब्वियसली एज इन नॉट विद ब्रोजोविच. तो ब्रोजोविच डिफेंसिवली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वही फर्स्ट लेग में दे डिफेंडेड वेल एज अ टीम. डिमार्को इज वेरी इंपॉर्टेंट लेफ्ट फ्लैंक. ऑप्शंस क्या है बार्सिलोना के पास? है फाटी, टोरेस, कैसी, फ्रेंकी डियोंग आ सकते हैं इस गेम में मेरे ख्याल से, इफ दे आर नॉट एबल टू क्रिएट एज मेनी चांसेस. मेरे ख्याल से करेंगे बिकॉज इट्स कैंप नो. बट अगेन पैब्लो तोरे ऑन द बेंच एज वेल, एलेक्स बाल्डे आप देखिए, जॉर्जी अल्बा. तो भाई ऑप्शंस तो है बार्सिलोना के पास, लेकिन हाँ अगेन इंजरीज भी है साथ साथ में, मे बी दैट हैज टेकन इट्स टोल. बट इंटर के पास भी इंजरीज है अभी. आई नो बार्सा के इंजरीज हम बहुत बात कर रहे हैं. ऑनेस्टली वी आर नॉट टॉकिंग इनफ ऑफ इंटर इंजरीज. आई थिंक इंटर की इंजरीज आर्ग्यूबली, मतलब यहां पर दो स्टार्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ब्रोजोविच और कोरिया. तो आई थिंक स्टार्टिंग 11 में दोनों की इंजरीज है भाई. यहां पर आप देखो स्टार्टिंग 11 में कौन होगा? जूल्स कुंडे होता, राहो होता, टू डिफेंसिव है. अरे यहाँ लड़ाई हो गई यार, एक सेकंड, ड्रामा ड्रामा. भाई एटलेटिको मैड्रिड का गेम और ड्रामा कैसे नहीं हो यार. गोलकीपर को मिला येलो कार्ड, को बॉल दे नहीं रहा है. वो बॉल गई गोलकीपर के पास, वो छोड़ ही नहीं रहा बॉल. पकड़ के रह रहा है बस बस. और वो एथलेटिको मैड्रिड बोल रही भाई बॉल दे ताकि हम गोल करने का ट्राई करें. मजा आता है भाई, मजा आता है भाई एथलेटिको मैड्रिड के गेम्स में. समटाइम्स ड्रामा गिव्स इट अ लॉट. हाँ समटाइम्स बहुत ही फ्लैट होता है, लेकिन समटाइम्स भाई ड्रामा होता है एथलेटिको मैड्रिड के गेम्स में, स्पेशली जो डू और डे गेम्स होते हैं ना. हमेशा डू नॉट मिस दैट. अरे गुड इवनिंग रिजवान, लव फ्रॉम अफगानिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया एज वेल. एब्सोल्युटली मच लव टू यू. आई फील बाल्डे शुड हैव प्लेड फॉर अलोंसो, बट जावी वुड हैव हिज रीजंस. अगेन मुझे लगता है दे माइट हैव फिगर आउट क्या इश्यू था. अलोंसो शुड बी फ्लैंकिंग डाउन, वो एक रनिंग डाउन द विंग वाला चीज ना, उसको ये मिलना चाहिए भाई. आप खाली बाई लाइन पे रहो, आप बेसिकली क्रॉसेस दो, आप अपने हाइट यूज करो टू काइंड ऑफ टेक टर्स टेकन डिस्ट्रीब्यूशन. जो टर्स टेकन काफी अच्छा रहे बाय द वे इन द लास्ट फ्यू गेम्स आई मस्ट से. ठीक है, तो वहां पर मे बी अलोंसो की हाइट विल बी यूज मोर. और ऑफ कोर्स ही इज अ शॉट टेकर एज वेल, ही इज गुड इन द बॉक्स डिफेंसिवली. और यहाँ पे गोल 100% होने वाला है एथलेटिको का, लेकिन समहाउ क्लब ब्रूज डिफेंड करती है भाई. उनका गोलकीपर कौन है? इतना बढ़िया गोलकीपिंग और डिफेंडिंग कर रही है भाई क्लब ब्रूज, और जस्ट अबाउट कीपिंग इट. एंड बाय द वे नापोली 4-2 हो गई है अयाक्स के अगेंस्ट, और वहां पर ऑजीमैन स्कोर कर दिए 89 मिनट में. तो वहां पर अयाक्स डूम एंड ग्लूम. हाँ लिवरपूल के लिए काफी अच्छी रिजल्ट है वो, लेकिन भाई another save from the Club Brugge goalkeeper. Man, Club Brugge are going next level, man. I'm telling you, भाई. I think वही है. Sometimes आप बोलते हो ना, history is on their side, or rather luck is on their side. वो भी है. Plus they are making their own luck. और भाई मिन्योले है. How can I forget? क्लब ब्रूज के गोलकीपर है सीमोन मिन्योले, द एक्सपीरियंस लिवरपूल, एक्स लिवरपूल प्लेयर, एक्स बेल्जियन टीम अभी भी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैन ही डन रियली वेल, he has done really well. Simon Mignolet, याद है आपको? I know on his day he could be a good shot stopper, but काफी क्वेश्चन मार्क्स भी थे. And yes, by the way, यहाँ पर वापस से आते हैं कमेंट्स में.
Early goal is needed for Barcelona. बिल्कुल, नहीं तो you have to change it quick. Xavi cannot wait भाई इतना लेट. और by last time भी क्या किया था, क्रॉस करो इंशाल्लाह वाला चीज, they need a plan B. प्लान बी क्या है? लास्ट टाइम अवेलेबल नहीं थी, इस बार अवेलेबल है, वो है फ्रेंकी डियोंग. फ्रेंकी डियोंग इज देयर ऑन द बेंच, और वो है समवन हु कैन कैरी फॉरवर्ड द बॉल, हु कैन पास इन बिटवीन द लाइंस. तो मुझे लगता है फ्रेंकी डियोंग माइट मेक अ डिफरेंस. ऑल्सो मे बी आई एम गेसिंग कि यार फाटी और टॉरेस को एक जन को यूज करना चाहिए था, सच में बोलूं तो, क्योंकि उनको चाहिए ज्यादा शॉट्स, शॉट टेकर चाहिए. मेरे ख्याल से टॉरेस वुड हैव बीन मोर ऑफ अ शॉट टेकर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. रफीना इज अ ग्रेट शॉट टेकर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड मुझे लगता है दैट वो क्रॉस ज्यादा करेंगे. दैट्स माय ओपिनियन. अगेन मे बी इंस्ट्रक्शन है कि अलोंजो आप खेलो इन्वर्टेड विंगर जैसे, और आप बेसिकली शॉट्स लो. दैट माइट बी वन ऑफ द थिंग्स ही कैन डू दैट. भैया मैं लो था बहुत आज, बट कैंप नु के बाहर का एटमॉस्फेयर देखकर मजा आ गया. अरे भाई बिल्कुल यार संजीव, मतलब आई कैन इमेजिन. अगेन मैं आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज भाई कल जो एटमॉस्फेयर था इन सैन सीरो, बट अगेन did that help Milan? Not really. तो yes, it's very very important. Of course it's important, especially बार्सिलोना के साथ जो हुआ था against Frankfurt last season in the Europa League. लेकिन वहां पर सोशियोज ने जो भी ना had sold the tickets. This time I think it's better, so hopefully it'll be great as well inside Sanjeev. It's a very important game for Barca and it won't be easy to break the inter defense, but Barca gonna pull a victory tonight. मुझे भी लगता है, मेरा तो यही prediction है that Barcelona will be the winners tonight. But again it comes down to अगर दोनों ही जीते ना 1-0, then next goal scored होता है ना शायद मेसी इज गोड. दैट बी इंटरेस्टिंग. तो अगर बार्सिलोना जीतनी है तो दे शुड विन 2-0 टू हैव मतलब एक होता है ना ट्रेजेक्टरी इन द ग्रुप, अपवर्ड्स हो ज्यादा कंपेयर टू इंटर. नापोली 4, हाँ हाला बार्सा, फोर्सा बार्सा, लाइक ठोको सब. अरे आशीष हाउस, अगेन पीपल डू नॉट फॉरगेट हिट द लाइक्स. ये अपना आज का लाइक टारगेट है भाई, ज्यादा लाइक टारगेट नहीं है, सब लोग लाइक्स दबा दीजिए. वैसे ही भाई यूट्यूब बताती है सब लोग को. आप लोगों को सेटअप कैसे लगा आज का, ये बताइए सब लोग. सबसे पहले आज का बहुत ही स्पेशल मैच है, ऑफ कोर्स वी नो दैट. कल भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल मैच था, वो ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में किया, आज यहाँ पर कर रहे. तो भाई सब लोग एक तो भाई ला दो, सब लोगों को कैसे लाओगे, लाइक्स दबा दो. और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द स्ट्रीम इफ पॉसिबल. यू कैन जस्ट लाइक माय कम्युनिटी पोस्ट, be it you can definitely like my Instagram post or share it on Twitter. ठीक है, आप जैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. ओके यहाँ पे और ले लेता हूँ कुछ. अरे शायद, हाँ बिल्कुल मैं देखूंगा भाई, आपका भी देखो शायद. एक सेकेंड, शायद मैं आपसे बात करना चाहूंगा भाई. एवरी लिवरपूल फैन भाई हो गया यार, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट क्लॉप ने जो मतलब क्लॉप बाय द वे इतना बोलना चाहूंगा, ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड ब्रो, ट्रस्ट मी, वो दिख रहा है. क्लॉप बहुत ही बेसिकली बोले हैं, आई थिंक दीदी हमान के अगेंस्ट कुछ बोले ऑलमोस्ट, दैट्स व्हाट आई हर्ड. ही इज अ लिवरपूल लेजेंड ब्रो, लेजेंड नहीं बोलूंगा, कल्ट हीरो है. ही इज पार्ट ऑफ द चैंपियंस लीग ग्रेट विन अगेंस्ट एसी मिलान. लेकिन फॉर मी क्लॉप आंसरिंग दैट वे टू रिपोर्टर्स इज नॉट अ ग्रेट साइन. पीपल अगेन बहुत रिपोर्ट्स बोल रहे हैं देयर इज प्रेशर ऑन क्लॉप, वो होता नहीं है यूजुअली इतने सालों से. लेकिन शायद मैं क्यों बात करना चाह रहा हूँ आपसे और एवरी लिवरपूल फैन से, भाई दूसरा मैच में नापोली जीत गई यार. तो नापोली जीत गई है तो आपके ऑटोमेटिकली हो गया. और बाय द वे क्लब ब्रूज हैव आल्सो गॉट अ पॉइंट ब्रो. एटलेटिको मैड्रिड आर ऑलमोस्ट आउट एंड हैव क्लब ब्रूज क्वालिफाइड. भाई यहाँ पे देखना पड़ेगा, एक सेकंड मुझे दीजिए, आई विल कम टू कमेंट्स अगेन. लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा सीन क्या है, रियलिटी. भाई एटलेटिको मैड्रिड चेहरे चेहरे देखो आप लोग, जस्ट लुक एट दोस फेसेस ब्रो, एवरीवन. Man, Atletico Madrid has been outclassed by Club Brugge. दोनों legs में Club Brugge has got 4 points in this. Who would have imagined when the groups started? भाई साहब, oh, that is like okay. So Napoli is on 12 points. यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. अगेन पीपल आप बोलिएगा, शायद आप भी बोलिएगा, मतलब लिवरपूल ऑलमोस्ट थ्रू मेरे ख्याल से हो जाएंगे. लेट मी सी. तो यहाँ पर देखिए Napoli are 12 points, Liverpool 6 points and Ajax just 3 points. तो अगर लिवरपूल हारती है तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है. बट कम ऑन, रेंजर्स में आई थिंक दे शुड गेट अ ड्रॉ एटलीस्ट. आई थिंक दैट अ ड्रॉ इज इवन गुड टू बी सच में ऑनेस्ट. लेकिन रेंजर्स भी घटिया खेल रही है भाई. तो कम ऑन, यू कैन नॉट से दैट लिवरपूल लूज, बट आई अंडरस्टैंड आपकी फीलिंग्स इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड विद दैट लाइनअप. विल कम टू दैट एज वेल. लेकिन यहाँ पे ग्रुप बी देखते हैं. ग्रुप बी में क्या मैडनेस हुआ है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई साहब. I think people announce कर दो भाई, Club Brugge has qualified along with Real Madrid to that round of 16 because अगर Atletico Madrid जीतती भी है अपने दोनों remaining games,
right? As well as basically the other teams win, I believe हो जाएगा यार. I think they will qualify. Again, it depends on. Acha, basically, if I'm not wrong, let me see. Porto Leverkusen का 2 games. I think again they are playing 1-1 game each against Club Brugge as well. हाँ यार, Club Brugge has qualified. Correct me if I'm wrong. भाई, that is madness. But again, लिवरपूल का ये सिचुएशन आप देखिए. और हम देखेंगे भाई, बारसा का तो भूल ही गए. बारसा का दिखाना है, ग्रुप सी तो दिखाना ही है आप लोग को. बिफोर आई कम टू द कमेंट्स अगेन, भाई डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. चलो ये है ग्रुप सी का, ये है. तो वी हैव बायर्न, इंटर, बार्सिलोना एंड प्लेजेंट. कैन प्लेजेंट सरप्राइज एवरीवन बाय बीटिंग बायर्न? कुछ ज्यादा बोल दिया मैं, आई नो, लेकिन रिमेंबर बायर्न विदाउट अ मुसियाला. ठीक है, तो वहां पर इंटरेस्टिंग रहेगा. अगेन हम लाइनअप्स अभी देखेंगे ऑफ द रिमेनिंग मैचेस एज वेल. डोंट वरी, विल कम टू दैट. जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन. और भाई कमेंट्स में आ जाते हैं इससे पहले कि आप लोग मुझे गाली दो. कैंप नु का सीन देखकर मजा आया. नापोली इज प्लेइंग नेक्स्ट लेवल. नापोली आर्ग्यूबली is playing at the level of attacking wise to at least at the level of Man City and Arsenal, man. मैं बोलना चाहूंगा, मतलब that is the level that playing of. लेकिन हाँ देखते हैं रियल मैड्रिड भी, मतलब that is the level that वो कंसिस्टेंसी दिखा रही है. मिन्योले या रेंजर्स अपसेट पूल्स, वेल बहुत ही सरप्राइज होगा वो, और मुझे नहीं लगता. एट बेस्ट ड्रॉ. लेकिन हाँ, क्लॉप का अच्छा नहीं चल रहा है टाइम विद डियाज मिसिंग. यू कैन से दैट. बारसा लॉस्ट टुनाइट. देन ओके, अगर बारसा अगर हारती ना आज, सपोजिंग, तो इंटर विल बी ऑन 9 points. They have to hope Barcelona that Bayern Munich lose to Pleasant. ठीक है, एंड द रिमेनिंग 2 games बार्सिलोना हैज टू विन विद अ लार्ज मार्जिन. तो बहुत ही डिफिकल्ट है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, देखेंगे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. अगर बायर्न भी जीत जाए तब तो गई, क्योंकि इन हेड टू हेड में इंटर विल बी बेटर अगर इंटर जीत जाती है. रिमेंबर, तो हेड टू हेड पहले काउंट होता है, देन गोल डिफरेंस. आई वांट डेम्बेले टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग एंड ओके राफिनी ऑन द राइट. हाँ, वो हो सकता है, मे बी वो चेंज हो सकता है. मेसी इज गुड. बहुत ही अच्छा कमेंट दिया आपने. Okay, absolutely. Come on, my favorite Liverpool. Okay, Rizwan is a Liverpool fan. भाई मुझे पता नहीं था. Great to have you. हाय अंकित भैया, अभी अभी मैनचेस्टर का इवेंट जो कोलकाता में हो रहा है उसका टिकट्स कंफर्म हुआ. अच्छा, नाइस यार आदरी, नाइस नाइस, हैप्पी फॉर यू ब्रो. अगेन thanks for joining everyone. Don't forget to hit the like buttons. I hate Atletico. Good riddance. Being a Real Madrid fan, कुणाल, मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था आपसे. कोई नहीं, I hear you. भाई इतना मैं बता सकता हूँ, Atletico Madrid in knockout fixtures, भाई ड्रामा तो मिलना है definitely. Feeling very sad. Morata, Griezmann deserve to be in kick-out stage. But you know what? They are not out. Atletico Madrid बाहर नहीं है. Yes, because remember, Porto, Leverkusen are also on 3 points each. Club Brugge is almost qualified. वो हो गया, ठीक है. तो सेकंड आएगी एथलेटिको मैड्रिड, चांस है अभी. प्रेडिक्शन तो पता. अच्छा, प्रेडिक्शन मेरा है दैट बार्सिलोना, आई फील, will get a clean sheet and a victory. 2-0 मैं बताया हूँ बार्सिलोना का. Yes, after looking at the lineup, maybe I'll give 1 goal to Inter Milan. तो मैं बोल रहा हूँ बार्सिलोना 2, Inter Milan 1, because yes, they will have to change. ये easy नहीं होगी victory. They will have to change and come back in the second half, maybe with substitutions. मेरे ख्याल से फ्रैंकी डियोंग, टॉरेस, फाटी, will come on and create an impact. ये मुझे लगता है. Again, Barcelona are missing players to injury, so fair enough. लेकिन so are Inter. Inter का only I think difference being that Dumfries खेल रहे, not Darmian. तो वहां से because Alonso is defending वहां पे, I know Alonso recent games में अच्छा किए है, but I still feel that Dumfries might get the better of him. I feel, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 goal आएगा after looking at that lineup, and that's the only reason. नहीं तो 2-1 होगा. अरे डेरेन, क्या हुआ भाई? सब चीज ठीक है ना? आई होप. लेट मी नो ब्रो, मैसेज मी. सर, राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने तक एक टीम कितने मैचेस खेलती है और कितने जीतने की जरूरत है? ओके, तो आशीष को ऐसे फिक्स नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप सिनेरियो, इसलिए हम ग्रुप के पॉइंट्स दिखाते हैं. मतलब इट इज बेसिकली क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब व्हेन इंटर काइंड ऑफ इज ऑलरेडी देयर और एट 6 points, आप चाहोगे नहीं बीइंग बार्सिलोना बीइंग इन द सेम ग्रुप दैट इंटर गेट टू 9 points और आप वहीं रहो इन 3 points. Whereas Bayern Munich are already आप देख रहे हो 9 points, so they might get to 12 points after beating Victoria Pleasant. तो इसलिए I think it's very interesting. कोई फिक्स नहीं है. अगर बाकी गेम्स ड्रॉ हो जाते then your target becomes less. It helps you, और आप इजीली पहुंच सकते हो. So sometimes हाँ, आप 2 मैचेस खेलते हो हर एक टीम के साथ, और बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द ग्रुप स्टेज गेट यू टू द नेक्स्ट स्टेज, राइट? समटाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है even as low as 9 or 10. Sometimes it you need at least say 12 or 13 points. So it depends on the scenario of the group. Norris sporting director, yeah. तो भाई, to be very honest, therein Norris sporting director has done a lot of work, bro.
Yes, remember he's a sporting director. He's not someone who's the coach. वो कोच नहीं है, तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर डन अ लॉट ऑफ वर्क. इनफैक्ट उनकी जो स्काउटिंग है ना, आई थिंक देयर इज अ लेडी, आई थिंक ही इज वन ऑफ देम who's appointed her, and she in whole of Europe has done one of the best works, I believe. So there is some amount of आपको देना पड़ेगा यार, because yes they do not that good in Premier League, not at all good, लेकिन in championship they have done well, so they have a system in place. Sporting director क्या है, they need a proper system, they are able to come back again, और वो easy नहीं है after going to the championship, तो remember, so there is something to it. अगर हमारे पास एक टेक्निकल डायरेक्टर जो हम ले रहे हैं, क्रिस्टोफर वेवल looks like now, नॉरिच स्पोर्टिंग डायरेक्टर अगर आ जाते हैं, plus we might go for a head of recruitment as well, who is basically, if I'm not wrong, ex Southampton as well as ex City. तो वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है इन माय ओपिनियन. आई थिंक वही एक टीम वर्क होना चाहिए. नथिंग इज इम्पॉसिबल बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना. मैड्रिड हैव ऑलवेज क्वालिफाइड फॉर राउंड ऑफ 16 सिंस स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन. बिल्कुल यू हैव टू गिव मैड्रिड दैट, इसलिए मैंने मैड्रिड का नाम लिया ना. 4-2 बारसा विन अगेन लाइक नापोली, LM10 बोल रहे हैं. बार्सिलोना 3-0 आई बिलीव. भैया विच चैनल स्ट्रीमिंग बारसा वर्सेस इंटर मैच टीवी? भाई सोनी 10-2 पे आएगा. सब लोग जो इंडिया में देख रहे हैं, स्पेशली आई थिंक एशिया में भी आता है. सोनी 10-2 में बेसिकली आ रहा है अपना बारसा का मैच. तो बारसा इंटर आ रही है सोनी. अरे व्हाट एटमॉस्फेयर ब्रो, भाई लुक एट द एटमॉस्फेयर. वाओ वाओ वाओ, खचा खच भरा हुआ है स्टेडियम, भरा हुआ एकदम. और भाई यू कैन सी दैट मैन एज इन क्लूज आर राइट देयर. बट हाँ, सोनी 10-2 और सोनी 10-1 में शायद आने वाला है लिवरपूल वाला गेम, if in case someone is interested in that, or I believe Sony 10-3 में आएगा टॉटनहम वाला गेम, तो that's also good. और Sony 10-4 में आएगा बायर्न म्यूनिख का गेम. Sony 10-4 नहीं, सॉरी Sony 6. पिछली बार तो टोटल रॉबरी हुई थी. वेल टोटल रॉबरी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा रॉबरी हुई थी. आई अंडरस्टैंड टोटली. ताहाकान कैसे हो? ऑलवेज गुड टू सी यू. अगेन लाइक करना मत भूलना. अगेन पीपल लेट्स लाइक शेयर द स्ट्रीम. ज्यादा लोग तो मजा आएगा. बाइक आई वाज लेट फॉर समथिंग काइंड ओवर स्पीड एंड काउ केम. अरे डेरेन मैन, रियली सॉरी मैन, आई होप यू आर बेटर. मतलब बताइए मुझे. कोई नहीं. आशीष भाई थैंक यू. That super chat is more of a gesture which always bhai helps. It pushes me to the next level. Bhai Ashish, thank you as well. And like I say, bhai कुछ भी आता है super chat, कोई भी member बनता है on Almighty Blues FC, definitely it goes back to the channel eventually to upgrade the channel slowly but steadily 100%. भाई much love to Ashish as well. Shout out आपको. बिल्कुल अपने John Terry of the house. अच्छा समझ गया. चलो भैया हाफ टाइम पे मिलता हूँ. बिल्कुल संजीव, बिल्कुल. The reason I don't give UCL prediction is whenever I gave Chelsea loss, so I don't want to jinx. Derain, but how about me and my watch alongs, bro? Derain ने बहुत पुश किया था मुझे watch alongs के लिए. भाई I must give a shout out to Derain as well. और shout out जाता है to Mudit as well, जो बोल रहे glory Inter Milan. Okay, so obviously Mudit, being in the same group of death, he wants basically Inter Milan to come out because of what happened in the Bayern Barca match, और obviously history में भी आप बोल सकते हो. Today match is playing in Barca. यार Rizwan, I think it's not easy for Inter Milan. Inter Milan के लिए, trust me, they have not been great. Yes, they are coming off a victory, I think, against Sassuolo, which is a good one. Edin Dzeko scoring the goals, but like I say, भाई उनको चाहिए पेसी kind of forwards आज. Do they have enough in Edin Dzeko? In my opinion नहीं. वही प्रॉब्लम होने वाली इन द काउंटर. इसीलिए शायद डम्फ्रीज खेल रहे हैं, नॉट डार्मिया, बिकॉज डम्फ्रीज विल गिव यू दैट डाउन द विंग. अरे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑफ कोर्स लव फ्रॉम इंडिया एज वेल टू यू. और सब लोग भी भाई, सब लोग अपने प्रेडिक्शंस अगर नहीं दिया है तो बता दीजिए. यस, वी हैव शोन द बार्सिलोना लाइनअप एज वेल एज द बेंच, और इंटर मिलान की भी हमने देख लिया है अभी. भाई आई नो द लिवरपूल फैंस ऑन द चैट. यस, वी विल कम टू बायर्न म्यूनिख भी हम देखेंगे 1 मिनट के लिए, लेकिन स्पर्स का भी है. ठीक है, तो हम लिवरपूल पहले देख लेते हैं. ठीक है, क्या बोलते हो? यस, वहां का ग्रुप हमने दिखाया था. अभी लिवरपूल का सिचुएशन बहुत ही इजी हो गया कंपेयर टू जो था एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, बिकॉज आयाक्स हग रही है यार, हग रही है आयाक्स आफ्टर द स्टार्ट दैट हैड, और नापोली आर प्लेइंग जस्ट टू गुड. तो यहां पर मैंने दिखाना है अभी लिवरपूल का लाइनअप, और उनके भी प्रेडिक्शन दे दीजिए सब लोग. यहाँ कहाँ गया भाई? आजा रेंजर्स. भाई ये बोलना चाहूंगा, व्हेन वी आर सेइंग द एटमॉस्फेयर इज क्रेजी एट द कैंप नो, राइट? ट्रस्ट मी, यहां पर मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा. आईब्रॉक्स में आर्ग्यूबली इट विल बी डबल. मैं क्यों बोल रहा हूं? यस, टेक्निकली इट्स नॉट, लेकिन इट विल फील लाइक डबल एटमॉस्फेयर. क्यों? आईब्रॉक्स स्टेडियम ही ऐसे यार, देयर लाइक स्टैमफोर्ड ब्रिज, दे आर क्लोज टू द पिच. तो बहुत ही ज्यादा क्या बोलोगे प्रेशर देंगे भाई लिवरपूल फैंस को. स्पेशली याद रखिए, रेंजर्स के लिए इट इज अ डू और डाई गेम.
रेंजर्स इज अ डू और डाई गेम, और पहली दफा आई थिंक हो रहा था ये लेग्स जो हो रहे हैं अगेंस्ट लिवरपूल इन द हिस्ट्री ऑफ यूके फुटबॉल। पहली बार रेंजर्स और लिवरपूल आर मीटिंग इन अ कंपेटिटिव फिक्सचर, तो ये दूसरी बार है। लास्ट मैच ऑब्वियसली लिवरपूल बीट इजीली, लेकिन अभी हु नोज एट आईब्रॉक्स। तो अगेन लुकिंग एट दिस लाइनअप, ये मैं बताना चाहूंगा, लिवरपूल ऑब्वियसली वीकेंड में जो काइंड ऑफ बहुत कंट्रोवर्शियल था, बट एट द सेम टाइम लिवरपूल इन माय ओपिनियन डिजर्व दैट लॉस अगेंस्ट आर्सेनल। डार्विन नूनेज ऑल्दो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका वीकेंड में। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो किया है ना, तो क्लॉप क्या कर रहे हैं, थोड़ा नैरो कर रहे हैं लुक्स लाइक। तो क्या कर रहे हैं, डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उनका मिडफील्ड, क्योंकि फर्मिनो कैन ड्रॉप इट टू मिडफील्ड, सो कैन फैबियो करवालियो। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो इट इज अ 4-5-1 विच इज सो अनलाइक लिवरपूल, ठीक है। लेकिन विल फर्मिनो और फैबियो करवालियो ऑन द अदर हैंड, कैन दे काइंड ऑफ प्ले व्हाट लुइस डियाज और मो साला प्ले, क्योंकि वो विंगर्स है जो कैन स्कोर गोल्स। यहाँ पर दे आर मोर लाइक स्ट्राइकर्स और कैम्स हु कैन स्कोर गोल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, आई थिंक ज्यादा डायरेक्टनेस लाना है लिवरपूल को, लेकिन ऑल्सो दे क्राउड द मिडफील्ड इन माय ओपिनियन। इट्स नॉट अ वेरी बैड प्लॉय सच में बोलूं तो, हाँ, स्पेशली हेंडरसन जो 100% नहीं लग रहे, फेबिनियो भी 100% नहीं लग रहे, बट एलियट प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इंटरेस्टिंग एज वेल। मेरे ख्याल से इज मोर इफेक्टिव ऑन द राइट हैंड साइड, स्पेशली जब फर्मिनो है उनके पास विड्थ नहीं है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। हेंडरसन यस इन द लास्ट गेम ही वेंट ऑन द बाई लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मिनट, लेकिन भाई हुआ नहीं उनसे कुछ। लेकिन होप करेंगे लिवरपूल फैंस की यहाँ पर शिमिकास से कुछ क्रिएटिविटी आए। क्रिएटिविटी थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे यहाँ पर कंपेयर टू जो यूजुअल लिवरपूल साइड होता है, बिकॉज यस you don't see a Thiago, as well. आप याद रखें Thiago is on the bench. तो but is it a must win? No, in my opinion it's a must not lose. हाँ, if they want to even try and get to Napoli somehow, then it's a must win, definitely. हाँ, ambition तो वही होगा, लेकिन let's be real, I'm just being optimistic for Rangers as well. भाई बताइए ये क्या होगा मैच का स्कोर, दैट इज रेंजर्स लिवरपूल एज वेल एज बार्सिलोना वाला मैच। चलो आगे कुछ और लोग, मीनवाइल लेट मी टेक फ्यू मोर कमेंट्स। जिनका ग्लोरी ग्लोरी टाइटल हल है वो यूसीएल। अरे बैंटर शुरू यार, भाई अभी तो शुरुआत ही है आशीष भाई, कम ऑन। अंकित भैया, अकॉर्डिंग टू Fabrizio Romano, AC Milan has officially said that Ankit Ranasaria is not a Milan fan. Your thoughts? अरे भाई साहब, मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्या होता है ना भाई, मैंने जब मिलान फैन बना था तब प्रीमियर लीग इतना देखा ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई यूज्ड टू वॉच चैंपियंस लीग मोर ब्रो। तो द मोमेंट आई वाज एक्सपोज्ड टू प्रीमियर लीग, आई गॉट सो एडिक्टेड, आई लिटरली फॉलोड एवरी मिनट ऑफ इट, ठीक है। और वहां पर बेसिकली आई गॉट अट्रैक्टेड, एंड यस मैंने दल बदला है। यू कैन से दैट, यू कैन ट्रोल मी दैट एवरीवेयर, आई नो मजाक ही कर रहे हो, लेकिन भाई वो बात थी कब की, 1999 की बात कर रहा हूँ मैं। 2000 और 2002 और 1999 के बीच का पीरियड बोल रहा हूँ। उस समय ज्यादा चैंपियंस लीग देखता था। देन 2002 सीजन हैपेंड, ठीक है, एंड देन rest is history. लेकिन आई डिडंट स्टॉप वाचिंग मिलान ब्रो, मिलान इज ऑलवेज हैविंग दैट। लेकिन कम ऑन, इतना इतनी श्रद्धा से जब किसी को फॉलो करते हो भाई, यू हैव टू बेसिकली बिकम अ फैन ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट चेल्सी हैज डन टू मी। यस, मिलान आई विल ऑलवेज हैव द सॉफ्ट कॉर्नर बिकॉज इट मेड मी फॉल इन लव विद क्लब फुटबॉल, सच में बोलता हूँ। एंड आई विल ऑलवेज फॉलो देम एज वेल। सर माय फेवरेट इज लिवरपूल एंड बार्सिलोना। बाय द वे, दो डिफरेंट लीग्स में आप सपोर्ट कर सकते हो यार, दो टीम्स, व्हाई नॉट, आई मीन कम ऑन। बट आई वांट टू सी मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड इन द फाइनल। ओके, इंटरेस्टिंग। अरे नहीं यार अंशुल, ये नहीं करने का, चलो, बट थैंक्स फॉर कमिंग ऑन। लिवरपूल 1-0, सीमोन मिनियोले। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल, लिवरपूल फैंस आप लोग बोलिए यार, सीमोन मिनियोले पे रिपोर्ट बोलिए। हेलो हेलो टू अभिषेक यार, कैसे हो हमारे ऑलमाइटी बोर्ड मेंबर, हाउ आर यू अभिषेक, ऑलवेज गुड टू सी यू अभिषेक। कम ऑन, गेट इन योर प्रेडिक्शन सब लोग। मेरा प्रेडिक्शन पहले, बिफोर लुकिंग एट द लाइनअप, वाज 2-0 टू बार्सिलोना। आफ्टर लुकिंग एट द लाइनअप, मैं बोल रहा हूँ 2-1 टू बार्सिलोना, बिकॉज ऑफ डम्फ्रीज बीइंग देयर, बिकॉज ऑफ अलोंसो बीइंग देयर, or they are also playing two left footers in the wings. So somehow I feel that they needed some plan B वहां पर to begin with. तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में बोलता हूँ 1-1 हो जाएगा, but then Barcelona will come and change, and I think Frankie de Jong or Torres will come on and score in my opinion. तो मैं बोल रहा हूँ 2-1। हाँ, अगर और भी बढ़िया स्कोर हो बार्सिलोना फैंस के लिए और इंटर फैंस के लिए तो भाई गुड फॉर देम, बट आई एम प्रेडिक्टिंग दिस। और टॉटनम, यस मैंने टॉटनम का भी दिखाना है, बाय द वे लिवरपूल का दिखाया था। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड, आई थिंक एक गोल ही होगा उस गेम में। आई थिंक आज एक ही गोल होने वाला है। रेंजर्स एटमोस्फेयर होता है, बट एक गोल होगा ऑफ द बेंच। वहां पर मैं बोल रहा हूँ 1-0 टू लिवरपूल अवे। एंड यस, अयाक्स हगी इसलिए लिवरपूल के लिए, एनीवे आई थिंक इट्स इन इजियर ग्रुप नाउ कंपेयर टू जो हो सकता था लास्ट दो मैचेस के बाद, राइट। लेकिन टॉटनहम का क्या चल रहा है भाई, टॉटनहम का भी है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप, याद रखिए। यस, बाय द वे यहाँ पे हमने दिखाया था दैट व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ
लिवरपूल्स ग्रुप, लेकिन लेट मी एक्चुअली टेक अ लुक एट टॉटनम्स ग्रुप, क्योंकि टॉटनम की ग्रुप आई थिंक मैंने दिखाया नहीं अभी तक स्क्रीन में। चलो, तो ये हमें क्विकली दिखाना है टॉटनम का लाइनअप, और याद रखिए उनके लिए भी इन माय ओपिनियन इट्स अ मस्ट विन। इट्स नॉट जस्ट बार्सिलोना और इंटर मिलान, रादर बार्सिलोना के लिए मस्ट विन है, इंटर मिलान के लिए मस्ट नॉट लूज है मेरे लिए। लेकिन हाँ, सिमिलर टू बेसिकली रेंजर्स, क्योंकि रेंजर्स जस्ट अबाउट ट्राई करेगी फॉर एटलीस्ट यूरोपा लीग, यहाँ पर टॉटनम दे वांट टू विन दिस गेम ब्रो। तो टॉटनम फ्रैंकफर्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये। आप लोग बोलिए उस गेम में क्या होगा। लाइनअप भी क्विकली मैं दिखा देता हूं आप लोग को। फर्मिनो स्कोर रिजाउंड इन द लिवरपूल गेम बाय द वे। लेट्स सी अगेन पीपल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हम सर्टेनली फॉलो करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द मैचेस, लेकिन फोकस विल बी ज्यादा ऑन द इंटर सॉरी बारसा इंटर मैच। और एक और मैच में लगाना हूं, सब लोग बोलिएगा कौन सा मैच लगाऊं मैं ऑन बेसिकली माय अदर डिवाइस इफ पॉसिबल। भाई टॉटनम का ये है, बायर्न का भी मैच है आई नो, विक्टोरिया प्लेजेंट के साथ फॉर द ग्रुप। Okay, so Kane, Son, Richarlison starting, which is good for my UCL fantasy. Having said that, मैं खुश हूँ क्योंकि क्विचा क्वरत्सकेलिया was my captain. Anyway, तो यहाँ पे लॉन्गले, दियर और रोमेरो, ओके, तो will they be able to keep a Frankfurt team with Kamada in there? Kamada मेरे, आपको सब पता ही है भाई, मैंने जब भी फ्रैंकफर्ट का मैच कवर किया है, for me I've always said Kamada has to be the main guy for Frankfurt. Very very good player in my opinion, underrated player है. Of course, talk about underrated. फ्रैंकफर्ट के गोलकीपर बहुत अनरेटेड, लेकिन दे आर कमिंग ऑफ अ बैड लॉस वर्सेस टॉटनम, जो आ रही है 1-0 विक्ट्री अगेंस्ट ब्राइटन। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। सब लोग हो जाए स्पर्स फ्रैंकफर्ट में क्या होने वाला है। आई फील यहां पर, लेट मी एक्चुअली से, यहां पर ना, क्योंकि वीकेंड में इनफ गोल्स नहीं होंगे, आई फील दैट एट होम है, इट्स अ मस्ट विन गेम, तो टॉटनम के गोल्स होंगे आज। तो आई लेट मी से 3-1 विक्ट्री टू टॉटनम। अनफॉर्चुनेटली फ्रैंकफर्ट अगेन खाने वाली है भाई 3 गोल्स लाइक द वीकेंड। चलो आप लोग देखते क्या बोल रहे हैं। मीनवाइल सुपर फरासत अली भाई, फरासत कैसे हो यार? आई नो नॉट ग्रेट टाइम्स फॉर यूवेंटस, बट फरासत ऑलवेज गुड टू सी यू ब्रो। एंड ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड भी एक्चुअली कर रही है अच्छा। आर्थर गिविंग जकारिया वाइब्स। Well, to be honest, he's injured as well. It's even worse, bro. Therein, all luck to him in terms of injuries. Prediction मैंने दे दिया है, मेरा तो धक धक हो रहा है। I can understand, bro. मेरा यही हो रहा था लास्ट मैच में, कल रात को सब लोग जो वॉच अलॉन्ग में थे ना ABFC में, सब लोग को पता ही है। लिवरपूल 3-1 रेंजर्स, हाँ, that kind of looks very much possible, लेकिन मुझे लगता है रेंजर्स ज्यादा टेंस एटमॉस्फेयर रहेगा। या बिल्कुल यार, बिल्कुल डेरिन। टोमोरी फेस वाज सो फनी, हिज माउथ वाज शट। भाई as much as I love Tomori bro, बोलती बंद होगी बंदे की। भाई 2-1 टू इंटर, ओ माय गॉड। अभिषेक, बार्सिलोना 3-1 गाइस, लाइक कर दो। लोन वुल्फ, मच लव टू यू ब्रो, आई नो। भाई वे भाई, लोन वुल्फ एंड सब लोग भाई, आई कैन सी 1 hour बज। कुछ लोगों को स्पेशल शाउट आउट में दे रहा हूँ इस मोमेंट में, क्योंकि यार इनसे मुझे कुछ फीडबैक मिलता है, दे डीएम मी, दे गिव मी फीडबैक। तो आई वुड लव सच फीडबैक, आई एब्सोल्युटली ब्रिंग इट ऑन ब्रो। मैं हमेशा फीडबैक के लिए ओपन हूँ। Tottenham 3-0, Son and Kane score. Okay, Henderson is looking very serious today. 3-1 Liverpool, my prediction. Okay. Light the Sky song में sky में light नहीं थी। चलो भाई सब लोग, अभी it's getting to that moment. सब लोग बार्सिलोना वाला गेम, pretty sure all of us are waiting eagerly. और भाई उसी बात पर भूलिएगा मत, let's like the stream as much as possible, and share भी कर दीजिए on any platform that's possible as well. Okay, so meanwhile I think Fateh is going to join us midway whenever possible. हाँ, Guruji is supposed to be joining us, but कोई नहीं यार, Guruji much loved again, because I know that Guruji is very tired, he's had a very tiring day, तो अगर Guruji feels fine he'll come on, ठीक है? That's the deal. अरे मैं अपना सिस्टम तोड़ दूंगा यार। आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो यहाँ पर मैंने अपना सेटअप करना है, एंड मैंने अपना डालना है, क्या बोलते भाई, अपना डालना है। अरे एटमॉस्फेयर देखिए भाई, एटमॉस्फेयर इज क्रेजी क्रेजी ब्रो। चलो शुरू हो जाए। मेरा टाइम स्टैम्प भी शुरू करने वाला हूं मैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आजा आजा आजा, चलो भाई शुरू। मैच इज स्टार्टेड, द बिग मैच दैट वी हैव बीन ऑल वेटिंग फॉर हैज स्टार्टेड। भाई जो लोग लेट आए हैं, अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, अगेन डू नॉट फॉरगेट टू पुट इन योर कमेंट्स विद योर प्रेडिक्शन। दूसरा मैच में कौन सा लगाऊं, आप लोग सब बता दीजिए। दूसरा मैच बता दो, उससे मजा आएगा थोड़ा, ठीक है? दूसरा मैच बता दो, मैं दूसरे में लगा देता हूँ। आई थिंक रेंजर्स और लिवरपूल बहुत क्लोज होता अगर वो ग्रुप में ना अयाक्स ने कुछ किया था, लेकिन अभी कुछ किया नहीं है, तो फॉर मी
तो स्पर्स और फ्रैंकफर्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इन टर्म्स ऑफ ग्रुप। तो मैं स्पर्स फ्रैंकफर्ट सोच रहा हूँ लगाने का, क्या बोलते हो एवरीवन? अरे भाई इंटरनेट तो आ जा मेरे मोबाइल में, एक सेकेंड। लिवरपूल 1, लिवरपूल एंड रेंजर्स, ओके। बायन, ओके। भाई बायन वाला भी लगा सकते हैं, कोई व्हाई नॉट भाई, बायन वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन वही विक्टोरिया प्लेजन है यार पर्सनली। अच्छा कोई स्पर्स वाला बता नहीं रहे, चलो लिवरपूल वाले डाल डाल देंगे, तो इफ आप लोग बोल रहे हो तो आई लिसन टू यू गाइस एंड गो विद दैट। मे बी हाफ टाइम में चेंज कर देता हूँ, लेकिन हाँ मेन तो डेफिनेटली बारसा वाला है भाई। पहले फ्यू मिनट्स में क्या लग रहा है, इट इज डेफिनेटली एक्टिव स्टार्ट रहा है, बोथ टीम्स गोइंग फॉर ईच अदर। ऐसा कोई सिटबैक वाला मामला नहीं लग रहा है, दे आर गोइंग फॉर द पासेस, ट्राइंग टू विन द बॉल्स। लेकिन भाई ओनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट है फॉर ओनाना, बिकॉज याद रखिए भाई हैंडनोविच का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया बिकॉज ऑफ ओनाना नाउ। हाँ मतलब ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड और काफी किया भी है। दूसरा मैच फीफा 23 का लगा दो। भाई फीफा 23 आए तब ना पहले, मेरे पास तो नहीं आया। लाइट द स्काई वर्ड ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब नाइस नाइस बॉल मैन, आई मस्ट से they've started well bro बारसा। और सर्जी रोबर्टो हैज बीन एक अटैकिंग राइट बैक अभी तक, अब देखते हैं क्या होता है टैक्टिकली, मे बी टैक्टिकली they'll go through the back, who knows, with basically Alonso जो खेले थे सेंटर बैक एट द वीकेंड, he might be a left center back। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बोलेंगे, बिकॉज लग रहा था इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स कि सर्जी रोबर्टो ऑलमोस्ट इज प्लेइंग लाइक अ विंगर, तो यू नेवर नो। चलो मेरा फॉर वॉट एवर रीजन मैं टाटा प्ले एक बार क्रैश हो गया तो वापस मैं डाला हूँ। लिवरपूल कॉन्स्टेंटली पुटिंग प्रेशर ऑन रेंजर्स, ओके। भाई लिवरपूल को टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स लाइक अ मस्ट नॉट लूज हो गया ऑलमोस्ट। अयाक्स इतनी ऐसे भद्दी लगी ना, अयाक्स लास्ट 2 मैचेस में, उनके पास फॉरवर्ड अच्छे हैं लेकिन डिफेंस इज पथेटिक ब्रो अयाक्स का। मतलब मे बी दैट इज वाई। अरे नाइस प्ले ब्रो, नाइस भाई डिमार्को। एवरीवन डिमार्को ओपी हो जाए, यस आई नो लॉट ऑफ बारसा फैंस ना हो, बट डिमार्को लास्ट मैच में भी काफी अच्छा किया था। और द मोमेंट ही गॉट द बॉल अगेन, देखिए सर्जी रोबर्टो couldn't डील विद हिम। और सर्जी रोबर्टो क्या कर रहे हो भाई आप? राफीनिया का टैकल अच्छा था, डिमार्को लुक्स लाइक इज स्लाइटली इंजर्ड बट आई थिंक विल बी फाइन। लेकिन इफ नॉट फॉर राफीनिया, सर्जी रोबर्टो वाज लेफ्ट ड्रीमिंग उस मोमेंट में। टेरिबल ब्रो, कोई नहीं। 22, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं यार, वो तो नहीं लगाएंगे। या वाका वाका वैन, या इट हैज टू बी। मैं तो यार अभी भी ना एक काइंड ऑफ कीप हमिंग दैट सॉन्ग बहुत बार। ओ नियर पोस्ट कॉर्नर लिया इंटर ने, लोटारो विद अ लो हेडर, लेकिन आई थिंक इट्स अ बिट टू मच। डू यू नो इन क्रिकेट आई एम सपोर्टिंग अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, ओके नाइस टू नो, नाइस टू नो रिजवान। अगेन हम बात करेंगे क्रिकेट के फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल। ओके बेटर इन 22, ओके हाँ कोई नहीं। As soon as the channel makes some money, we can get there absolutely, we'll invest more करेंगे absolutely। Why Lukaku not playing in many I have seen, he's just not there, why he's been injured यार। अजिंक्य injured है, but thanks for coming on by the way अजिंक्य always। भाई कौन सा चैनल में आ रहा है, मैं खुद ही बताता खुद ही भूल गया। एक सेकंड, सोनी 10-2 तो हम मेरा लगा हुआ है, लेकिन सोनी 10-1 में देखते हैं। सोनी 10-1 में ना लिवरपूल वाला गेम, हाँ तो वो वाला लगा। चलो waving flags hands down, waving flag, to be very honest, that was the official song। waka waka was more like the publicity song, correct me if I'm wrong people। अभी इस बार भी 2 सॉन्ग है ना, एक है पब्लिसिटी के लिए, एक है बेसिकली अपना ऑफिशियल जो बजाया जाता है, मतलब आई फील, और इज द अदर वे अराउंड, आई एम नॉट श्योर। एक तो था कुछ तो, इफ इंटर विंस द गेम। अरे नाइस क्रॉस, क्रॉस करा इंशाल्लाह, बट कुछ हुआ नहीं इस बार। एंड इंटरेस्टिंग ये रहा है अगेन, यस राफीनिया स्टार्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड, क्या बोलोगे उसके बारे में बारसा फैंस, कमेंट। दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सोनी लिव सब्सक्राइब कर लो भैया, हाँ भाई सब करेंगे सब्सक्राइब, कोई सब करेंगे भाई। जैसे मैंने बोला, एज द चैनल कैन कीप्स गेटिंग लॉट ऑफ मॉनेटरी प्रॉफिट, विल पुट इन एज मच पॉसिबल, कोई नहीं। फील द मैजिक इन द एयर, या ग्रीन टी लिसनिंग टू यू सर, अजय नाइस नाइस। यार टाटा प्ले का ना ऐप एक्चुअली खराब है, सच में बोलूँ तो इट्स नॉट सो रिलायबल, दैट इज द फैक्ट। बट कोई नहीं, मतलब हम स्कोर तो लगा ही रखे, मैं दूसरे टैब में तो लगा ही रखा हूँ लैपटॉप में, लेकिन हाँ आई वाज होपिंग दैट आई वाज एबल टू सी दैट एज वेल। लेकिन आई थिंक मेन एनीवे फोकस तो यही है, लिवरपूल वाली गेम यार एवरीवन, सॉरी बारसा वाला गेम। तो
भाई निको बरेया विल बी की आज, क्योंकि रिमेंबर ब्रोजोविच इज नॉट देयर, चालोनोग्लू और मैकेटारियन है भाई। चालोनोग्लू कैन टेक नाइस शॉट, जो हम देखे थे वो जो गोल मारे थे, बट मैकेटारियन सच में बोलो तो इज नॉट बिन द मैकेटारियन ऑफ द ओल्ड। तो निको बरेया बहुत ही की है इन मिडफील्ड, बिकॉज वी नो दैट बार्सिलोना से अगर बॉल लेनी है अपने को, we need some tacklers is what generally neutrals would say, right? So definitely मैं बोलूंगा कि यार निको बरेया जैसे करते ना आज, वो it might determine how the match goes, बिल्कुल। लेकिन अच्छा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यार, मतलब फॉर्मेशन भी देखिए, वापस से देख रहा हूँ भाई। अलोंसो इज ऑलमोस्ट प्लेइंग लाइक इन्वर्टेड लेफ्ट बैक, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। सर्जी रोबर्टो इज प्लेइंग इन मिडफील्ड ब्रो, व्हाट इज दिस? मैंने अभी रियलाइज किया, इज इट फॉर रियल भाई? ये क्या हो रहा है? अलोंसो और पीके खेल रहे सेंटर हाफ, जहां तक मुझे दिख रहा है, और मे बी जस्ट द गेम प्ले बीच में। मैन दिस इज लाइक क्रेजी मैन, आई वुडंट हैव एंटिसिपेटेड दैट, सच में बोले तो। देखते हैं, मतलब आई एम जस्ट लुकिंग एट इट अगेन। नहीं नहीं, आई एक्चुअली इट्स फाइन, यू नो व्हाट, एरिक गार्सिया पीके है, तो हाँ, you can argue that they are kind of playing like a back three यार, with Alonso, Eric Garcia और पीके there, extra protection। अरे नाइस 1-2 मैन, लोटारो भाई साहब, जेको और लोटारो को बहुत ही बढ़िया। ओ मैन, व्हाट अ चांस, व्हाट अ चांस, नियर पोस्ट था, टर स्टेगन probably had it covered, लेकिन भाई हाउ डिड दैट सेंटर हाफ गेट बीटन? व्हाट, हु वाज इट, एरिक गार्सिया? क्रेजी ब्रो, मतलब वहां पर बहुत ही ज्यादा आई थिंक चांसेस थे कि इंटर स्कोर करती, लेकिन आई थिंक द शॉट जस्ट वाज इन द साइड नेटिंग। या दे आर ऑलमोस्ट प्लेइंग, या ऑलमोस्ट नहीं, बैक थ्री खेल रहे हैं यार, 100%, 100% बैक थ्री खेल रहे हैं। एरिक गार्सिया प्लेइंग एज अ राइट सेंटर बैक, पीके प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, अलोंसो प्लेइंग एज अ लेफ्ट सेंटर बैक, और भाई दोनों विंगर जो है वो खेल रहे विंग बैक्स, और सर्जी रोबर्टो खेल रहे मिडफील्ड में। Do you think Messi is going to return next year towards Barca? Well, it depends on Mbappe, bro. Taha, अगर basically Mbappe छोड़ते ना PSG, I'm not sure PSG will let him go at any cost. हाँ, I know it depends on the contract भी, लेकिन मुझे लगता है that Mbappe अगर रहते हैं, which probably is also a possibility, PSG में he'll probably go to Barca. Yes. अरे, that was a good corner भाई from Dembele. Nice corner, nice corner. लेकिन PK didn't get a header. Uh, या मतलब मेकशिफ्ट नहीं यार, ही इज एक्चुअली प्लेइंग लाइक सेंट्रल मिडफील्डर ओनली, अदरी, क्योंकि मुझे दिखे ही नहीं है वो राइट बैक पोजीशन में, दिखे ही नहीं है, इट्स अ बैक थ्री, और एक गोल होने वाला है। ओ नहीं, अगेन पीपल रिमेंबर, दैट इज व्हाट मे बी बार्सा कैन डू एट होम भाई, दे नो द स्पेसेस वेरी वेल ऑफ द पिच भाई, लेकिन नाइस क्लियरेंस ऑफ द लाइन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज लेवेंडोव्स्की विद द हेडर, लेकिन कोई नहीं, मतलब एटलीस्ट एन अटेम्प्ट ऑन गोल है। द रेफरी इज अ बॉडी बिल्डर। मिडफील्ड कैन लुक कॉम्पिटेंट विदाउट थियागो, नेवर न्यू दैट। कृष्णा भाई, समटाइम्स नो, स्टील इज समथिंग रिक्वायर्ड इन मिडफील्ड भाई, समटाइम्स इट डज। या चलो, ये तो ले लिया था, बट कोई नहीं। अगेन अलोंसो प्लेइंग लाइक अ लेफ्ट सेंटर बैक स्लैश लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर एट टाइम्स, एंड भाई मैं सोच रहा हूँ, व्हाई इज लेवेंडोव्स्की ट्राइंग टू क्रिएट, ये क्या हो रहा है भाई? व्हाई इज लेवेंडोव्स्की नॉट इन हिज पोजीशन जहां पर होना चाहिए उन्हें? ये बहुत ही सरप्राइजिंग है मेरे लिए। अ, अच्छा, तो दे आर हैविंग लेवेंडोव्स्की काइंड ऑफ, नहीं, अभी आ गया लेवेंडोव्स्की वापस अपने पोजीशन में, एंड यस डेफिनेटली रोबर्टो इज अ मिडफील्डर ब्रो, रोबर्टो इज प्लेइंग लाइक अ मिडफील्डर। यहाँ पे गंदा पास फ्रॉम डेम्बेले आई बिलीव, और वापस से जीत लिया सर्जियो बुस्केट्स ने बॉल, एंड गोस टू रफीनिया, रफीनिया विद अ ब्रिलियंट शॉट जस्ट अबव द बार भाई, ओ मैन, Rafinha almost scored in that moment. Almost did. कोई नहीं. Again, people, it'll help me if you can like the stream. भाई likes कितने हुए? If you can please help me out, mods here. But यहाँ Bayern goal, okay. मुझे saying Manabas is saying Bayern का गोल हो गया है, पोर्टो का भी गोल हो गया against Leverkusen meanwhile.
लेकिन बायर्न का गोल दिखा नहीं रहा है मुझे तो। हाँ दिखा दिया, टू बी डिसाइडेड हो रहा है, तो लुक्स लाइक वीआर इज चेकिंग। ओके लेट्स सी क्या होने वाला है वहां पे। दोनों इंटरेस्टिंग दैट अलोंसो को ना जावी इज नॉट यूजिंग विद द विंग बैक, बट इन दिस मोमेंट सेट पीस में आई बिलीव अलोंसो को टैकल किया गया है प्रॉपर, लेकिन आई थिंक नॉट रियली फाउल। ठीक है, फेयर इनफ। और मेरा ना लाइव में यही होता है यार, जब भी पूरा दिन चल रहा था ठीक से फोन, सडन से ना डेटा नहीं चल रहा फोन में, लेकिन कोई नहीं, लकीली मैं लैपटॉप में चल रहा था, आई विल हैव द गेम्स वहां पर ऑन। यहाँ पर इंटर विद द काउंटर, इंटर गेटिंग द बॉल अगेन, डम्फ्रीज ऑन द राइट हैंड साइड, लेकिन वेल डिफेंडेड बाय अलोंसो। आई मस्ट से अलोंसो हैज बीन गुड इन दैट सेंटर बैक पोजीशन, लेकिन ही गिव्स द बॉल अवे। हक दिया अलोंसो ने, लकीली कुछ हुआ नहीं, गंदा क्रॉस गंदा क्रॉस आया, बट कोई नहीं। नजर लगी है अलोंसो को मेरी, पता नहीं, लेकिन प्रीटी मच श्योर दैट उस मोमेंट में 1 सेकंड के तो आ गया था भाई मुंह में। क्या बोलते हैं, माने, ओके माने, माने स्कोर्ड, या माने स्कोर्ड, लुक्स लाइक। चलो कंग्रेचुलेशन मुझे तो, और भी प्रेशर बिल्ड होते हुए, नाउ इट्स एब्सोल्यूट मस्ट विन, एब्सोल्यूट मस्ट विन है फॉर बार्सिलोना। इंटर के लिए अभी भी मस्ट नॉट लूज इफ दे आर ओके विद कमिंग सेकंड इन द टेबल, व्हिच इज क्वाइट लाइकली एनीवे। नहीं नहीं, वाईफाई है ऑलरेडी यार रिजवान, मेरा मेरा वाईफाई चल रहा है, हाई स्पीड वाईफाई यार बिल्कुल। जो आप देख रहे हो ना बारसा इंटर का, जो देख रहे हो वो एकदम है, आपका टाइमर सब चल रहा है, सब ये चाहे। ये मैं दूसरा मैच का बात कर रहा था, व्हिच आई एम ट्राइंग टू पुट इन माय फोन। ठीक है, वो फोन जो है, फोन की प्रॉब्लम है, फोन इज नॉट कनेक्टिंग टू द वाईफाई, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। वाईफाई तो चल रहा है, क्योंकि उसके बगैर अपनी स्ट्रीम कैसे चलती तो वाईफाई तो डेफिनेटली मस्त चल रहा है, टचवुड। लेकिन हाँ, आई थिंक इट्स मोर अबाउट द इश्यू माय फोन आई गेस। नहीं कोई नहीं, लेट मी सी, बार बार मैं देखूंगा लैपटॉप में, आई पुट अदर मैचेस, लेकिन वही दूसरे टैब में डाला हूं ना, तो आई माइट नॉट सी योर कमेंट्स, बट कोई नहीं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। चलो, और कोई गोल्स हुआ नहीं है, जस्ट बायर्न बायर्न हैज स्कोर्ड, आई डोंट सी लिवरपूल स्कोरिंग येट, नॉट टॉटनहम स्कोरिंग, नहीं। चलो ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है भाई। एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक भाई, फर्स्ट फ्यू मिनट्स में क्या लगा है? एंड अगेन फॉर पीपल हु हैव जॉइंड लेट, इट लुक्स लाइक बारसा हैव सेट अप विद 3 द बैक, और बीच में खेल रहे हैं भाई आपके बुस्केट्स और रोबर्टो, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 3-2-3-2 हो गया क्या? एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से तो हाँ, तो 3, then in midfield you have a Busquets and a Roberto, ठीक है, and just in front of them you have basically a Pedri, Gavi, Dembele, Rafinha, तो 3-2-4-1 खेल रहे हैं। अरे नाइस थ्रू बॉल यार, नाइस थ्रू बॉल, बट कॉर्नर हुआ, आई थिंक Lewandowski doesn't get the ball and Skriniar with a nice one। तो yes, for people out there जो फिगर आउट कर रहे हैं अभी तक क्या खेल रही बार्सिलोना, they are literally playing like a 3-2-4-1, or you can call it a 3-4-2-1, जो काफी बार आयरॉनिकली चेल्सी खेलती है दैट्स हाउ इट इज। मुलर स्कोर्स एज वेल मैन, वो तो भाई क्रिकेट स्कोर होने वाला है, मुझे तो वहां तो बिल्कुल क्रिकेट स्कोर ही होने वाला है। क्रेजी ब्रो, सच में, दैट्स क्रेजी। अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बायर्न म्यूनिख भाई, इसलिए मैंने वो मैच नहीं लगाया यार। फायदा क्या यार, मतलब मुझे सीरियसली मैन, मैं बोर नहीं होते भाई सीइंग योर टीम विन वीक इन वीक आउट विद ऑल दोस ह्यूज स्कोर्स। मतलब जस्ट, मतलब नो ऑफेंस, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अप टू व्हाट पॉइंट कैन यू सी योर टीम विनिंग अदर टीम लाइक इतना कन्विंसिंगली? हाँ, मतलब नेसेसरी तो नहीं बोलूंगा रिजवान, लेकिन इट इज मच बेटर, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, इट्स मच मोर यूजर फ्रेंडली। यस, आंसर इज इन माय ओपिनियन यस। लेकिन अगेन जरूरी नहीं है, यू कैन डू इट विदाउट, लेकिन आई डोंट थिंक द इफेक्ट कम्स सिमिलर, वो मैं बोलना चाहूंगा। और ये आप लोग को सेटअप कैसे लगा यार, ये बताइए, हाउ डू यू लाइक दिस सेटअप विद द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, लेट मी नो। भाई इतनी मेहनत लगती है ना भाई, उसी बात पर सब लोग आ जाए भाई, क्योंकि यार ज्यादा लोग आएंगे तो पीपल माइट सी आवर क्वालिटी इवन मोर, दैट माइट बी वन ऑफ द थिंग। Alone room is also, नहीं नहीं रिजवान, that depends यार that depends if your partner is okay, simple as that। लेकिन कोई नहीं। अरे डम्फ्रीज विद इंजरी, भाई डम्फ्रीज आई थिंक इल गो। यहाँ पर दो जगह पकड़ा, एक तो काफ पकड़ा और एक एक तो हील टो पकड़ा,
तो हुआ क्या एग्जैक्टली? डेम्बेले विद जस्ट अ पुश, ओके आई गॉट इट। तो पहले जो पुश का इम्पैक्ट था उसका था, और देन ही फेल ऑन द बॉल, बट इट्स नॉट एज बैड। हाँ यार, मैड्रिड यार, लेकिन मैड्रिड क्यों, मैड्रिड का डिफरेंट आदरी मैं समझाता हूँ अगेन, आई नो मुझे तय ऑफेंड नहीं हो जाए, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैड्रिड का तो फिर भी आप नॉर्मल गेम्स में भी कम करते हो, थोड़ा ड्रामा होता है। बायर्न म्यूनिख यार वीक इन वीक आउट आप जीतते यार। अरे गोल होने वाला है, अरे गोल, हाउ डिड दे सेव भाई? टर्स्टेगन विद अ वर्ल्ड क्लास सेव। दिस हैड टू बी अ गोल ऑफ इंटर, और इंटर मे बी दिस इज द गोल। अगर आपने मिस कर दिया तो आई थिंक वहां पर टाई चला गया, बिकॉज जेको हैड अ ब्रिलियंट गोल। अरे फतेह आ गए यार, फतेह मतलब पता नहीं कब से वेट कर रहे हैं। मैं अपने आप में बड़बड़ कर रहा हूँ, एंड दैट शुड हैव बीन अ गोल। लेट मी गेट फतेह इन वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, ऑफ कोर्स। फतेह कैसे हो भाई? Why? How can you not take that chance, man? Like at the Camp Nou. You have to give Ter Stegen the credit भाई, ये मुझे Was that a लगता है। save or was that the post? फ्रैंकफर्ट स्कोर भाई, ये वहां मैडनेस हैपनिंग मैन। ओ यस, फ्रैंकफर्ट एक्चुअली स्कोर, नहीं इट वाज अ सेव ब्रो, इट वाज अ सेव। आई थिंक इट वाज अ सेव, पोस्ट नहीं था, आई थिंक सेव था। कमाड़ा, यस पीपल कम ऑन, हो जाए भाई अंकित टोपी फॉर अ चेंज। मैंने क्या बोला था, कमाड़ा करेंगे आज, लेकिन फिर भी आई No, it hit थॉट the bar first. But ओ this, बार बार, ओ मैन इट वाज अ बार। जैको मैन भाई, टर्च के नहीं थे, but मैंने who ज्यादा missed क्रेडिट दे the? दिया। There was a stupid guy who missed a chance. Like at least he should have taken that. We have space, man. Come on, do something. You can't be missing chances at Camp Nou. Come गोइंग on. थ्री द बैक, रियलाइज किया आपने? बारसा Acha. मैं 3-4-2-1 खेल रहे, देखा हूँ Okay. चेल्सी प्लेस। मतलब रोबर्टो इन डिफेंस इज कमिंग बैक, लेकिन इन अटैक दे आर प्लेइंग 3-4-2-1। Who was the match ka mujrim who missed that chance? मैच का मुजरिम, No, ओ because there मैन, was it was still a chance when the या ball आई fell. एम, आई नो व्हाट, इट मस्ट हैव बीन लोटारो ओनली ना, नहीं लेकिन सेट नहीं, पीस I था, don't यू think नेवर नो। so. अच्छा, It better not have been Barella. Like I am so pissed with Barella and his, lackluster. But the referee is actually not whistling. Like I यू नो thought. अभिषेक हैज अ ब्रिलियंट पॉइंट यार, असलानी इज एक्चुअली डन डिसेंट ब्रो, दो दो अपीयरेंस हुए ना उसके रिसेंट 2 हफ्तों में, Yeah, Aslani, I think, but I don't think Simone Inzaghi trusts him इन अ yet. बिग गेम। Yeah, he's too young. But you have to play them. I mean, if you're not going to play them, but yeah, that's the thing with Italian Yeah, coaches. but They what just does don't. I agree with this. What does Mkhitaryan give you these days? No, but see, Mkhitaryan's not been that bad. He is comfortable on the ball. Okay, he doesn't really have the legs or the pace, but he's But still got some defensively ज्यादा technique. एलिमेंट चाहिए ना आपको इस गेम में। Huh. So I think maybe we'll see Aslani in the second half, but Mkhitaryan is somebody Look that. at that, bro. Why this was well done. I must say, Gavi man, was it Gavi? Yeah, Gavi. Yeah, and look But at he, Barella. He's just jogging back. He's not even closing down the space. Like yeah, look at he's that. Yeah, I 100% hear you. By Barella, unfortunately, I and don't he's know been doing how this that the attitude is. moment Conte left. He's been just doing this. He अभी doesn't track फाइनली back. चैलेंज डाला, लेकिन चैलेंज डालने के बाद भी लाइक ही इज जस्ट वेटिंग ब्रो, Yeah, and मतलब हिज he बॉडी लैंग्वेज इज नॉट राइट समहाउ। body language. He always acts like a prima donna. And when Conte was there, Conte never let him do that because you have to earn the whole tag of a prima donna. What has Barella sort of? Okay, he's won the Euro, but I don't think he was good even in the Euros. He had only one good game. हाँ मतलब बरेला, he had that one outstanding season bro, apart from that actually he's not ना, Yeah, एक last एक year अच्छा, too, we blamed him. And I mean, let's see how his performance is. But I've been on the anti Barella. ओके नाइस टर्न यहाँ पे, बहुत ही अच्छा टर्न लेवेंडोस्की का। और लुक पीपल लुक एट दैट वेयर सर्जी रोबर्टो वाज, तो क्लियरली सर्जी रोबर्टो इन अटैक इज प्लेइंग लाइक एन अटैकिंग मिडफील्डर एट टाइम्स। दे आर प्लेइंग अ 3-4-2-1 ब्रो, और 3-2-4-1 एक्चुअली ऑलमोस्ट Oh आई वुड से। my, was that other guy Lautaro? वो They should दिखा show नहीं the रहे whole ना, chance. I think ये it चलो was नो probably गोल Lautaro. था, उसके बाद में कहाँ गया रेंजर स्कोर? Did I miss that? Oh my god, ये क्या हो रहा है यार आज, मैडनेस मैन, यस, oh that's why we love the Champions League. I know, sorry इंटर फैंस, मैं तो यार ऑब्वियसली ऑपोजिशन ही मानूंगा लिवरपूल को। No, no, absolutely. तो यहाँ पे रेंजर स्कोर एज वेल, यस, और आरफील्ड है क्या? No, no. या Is it Anfield? No way.
नहीं, आरफील्ड इज द नेम ऑफ द प्लेयर। इंटरेस्टिंग दैट नेम, उसका नाम ही यही है। दैट्स रेंजर्स प्लेयर। सिट बैक एंड अरे लुक एट अभिषेक्स कमेंट फॉर यू। No way. It's if you are an Inter fan, you know that ये there is तो never नहीं an होगा easy game for यार। Inter. या प्रेडिक्शन बोलो, मेरा प्रेडिक्शन 2-1 था आफ्टर लुकिंग एट द लाइनअप्स। 2 बारसा। I'm going with 3-0 for Barca. ओ माय गॉड, बहुत ही पेसिमिस्टिक अप्रोच फतेह लेते हुए, बट कोई नहीं। Oh, हाहा लिवरपूल बोल रहे हैं अभिषेक। अ, लड़ाई हो गई wait, है, what? क्या हो गया? Yeah, and why? एक सेकेंड यार ब्रो, व्हाट हैपेंड टू लिवरपूल? सिंपली पुट दे नीड स्पार्क, जैसे इरिटेट हो रहे ना विद दैट वर्ड मिस्टर क्लॉप। डेम्बेले की लड़ाई हुई है, किसके साथ हुई है लेकिन? नॉट श्योर किसके साथ हुई है। Skriniar. या प्रोबेबली, अरे पहले लेवेंडोव्स्की ने मारा यार उसको, फिर दोनों एक Yeah. दूसरे को मारे। Oh, शोल्डर ही था लेकिन। अरे कम ऑन मैन, डेम्बेले ऑन स्क्रीन यार, दोनों ही नाटक किए, क्या लगता है? डेम्बेले काइंड ऑफ वाज अ लिटिल बिट नॉटी, लेकिन स्क्रीनियर आई time थिंक। to send Dembele off. हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ क्लियर। टॉटनहम वन वन ऑल हो गया। मैन ये But क्या हो रहा है आज यार? आज जब मेरा दूसरा डिवाइस चल नहीं रहा, उसी दिन होना था ये साथ साथ में aren't गोल्स Tottenham away? एट होम। They're at It's home. at the Tottenham, at the Tottenham Hotspur Stadium. Away they got 0-0 ना। Tottenham हाँ 1-1 हो गया। Son scores and because Richarlison मेरा कैप्टन है UCL फैंटेसी में for whatever reason, and that is why he does not score. But कोई नहीं। Hang on, let me see. Are you Watch that certain? 100 liter of sweat doing thumbs up merchant. Yeah, obviously pretty sure you know whom he's talking about, Fateh, Abhishek. Who? 100 liter of sweat. इंटर मिलान के साइड में कौन हो सकता है? 100 लीटर ऑफ स्वेट, एंड हु डज दिस? लुकाकू, I don't, लकाका। I don't know who that is. I don't even know whether that's a player of Inter. They say that he's not even going to come play for against Salernitana at the weekend. He's not even ready for that, and a lot of fans are now speculating that he only cares about the World Cup. So this is No, he doesn't. not He good. cares about just the money, bro. I'm telling you. Simple as that. But yeah, no. But then I don't know. I mean, I don't think so. If he's not playing this year, he's only scored 1 goal. I think 1 assist. Then It's the attitude which sucks. That's a reality. yeah, नहीं? I mean, yeah, no. But we Oh my expected better. God. भाई इंटरेस्टिंग हो गया टॉटनहम वाले ग्रुप। मार्से दे वन द लास्ट गेम बिकॉज स्पोर्टिंग मिस्टेक आई नो, लेकिन नाउ मार्से आर अगेन 1-0 अप। थैंक्स वनाबस टू ब्रिंग द अपडेट। गावी कुछ ज्यादा ही ओवर एग्रेसिव हो गया है, दिस विल हॉन्ट हिम। भाई ताहा देखिए, व्हाइल आई अंडरस्टैंड जैसे भी हम बोलते हैं अबाउट मेसन माउंट एज वेल, समटाइम्स ब्रो एज इन द मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना यू नीड दैट काइंड ऑफ गाय। आई थिंक probably Fateh will remember the kind of guy Pep Guardiola was, for example. Oh yes, Uh, yes. or rather, Van even better, like you have the kind of defense they had, ball Van playing Bommel. defenders as well. No, but Van Bommel, Guardiola yeah. was probably not as mean spirited as Van Bommel. Guardiola knew Van how to Bommel play was the game. next level, bro. Yeah, Van Bommel absolutely. was the big destroyer. I think he was there in 2006 when they won the Champions League. And in defense, they had a Puyol always who had that Yeah, yeah. mean thing in him. So they need Edmilson and Barcelona Gabi needs that. Milito and लिवरपूल गोल। भाई आज मैं पूरा दिन स्कोर ही अपडेट करते रहूंगा, मैं मैच नहीं देख पाऊंगा। भाई क्या करूँ, गोल्स बाकी लोग बंद करो गोल्स मारना, बाकी टीम्स, मुझे भी मैच एंजॉय करना है। कोई नहीं, बट नाइस टू सी दैट इतने सारे गोल्स हो रहे हैं। भाई मजा तो तभी आता है ना जब इतने सारे गोल्स होते हैं, बट लुक्स लाइक इट मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ लिवरपूल का। यस भाई, फर्मिनो स्कोर्स, एंड फर्मिनो भाई ही स्कोर्ड समथिंग लाइक 6 गोल्स इन 4 और समथिंग लाइक दैट, क्रेजी स्टैट ब्रो फर्मिनो। और आज वो he's starting just behind the striker Darwin Núñez. That's even more interesting for me. Or rather on the right hand side आप बोल सकते हो, but this is what it is. भाई Rangers 1, Liverpool 1, Frankfurt और Tottenham भी 1-1 है ना, वो भी अपडेट कर देते हैं अभी। Before you guys tell me that भाई नाम का लगा रखा है क्या स्कोर स्क्रीन पर? Prize ability of Darren Bent and ego of Ronaldo Nazario. भाई Darren Bent was actually good. अभिषेक आप Darren Bent को एज अ फुटबॉलर काफी अंडररेट कर रहे हो, जैसे मैं बोलूं तो। आप उसका रिकॉर्ड देखिए, ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ बैचुआई। या आई एम कंपेयरिंग टू बैचुआई। बैचुआई का आप रिकॉर्ड देखोगे ना,
goals per game. It's actually one of the better in Europe. और Oh, nice stroke, nice shot, nice stroke. बरोबर है, क्रिकेट कहाँ से आ गया? लेकिन हाँ, ओनाना with a good save. I think it was Dembele ना, Dembele with a nice shot, color. Again बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर रखते हुए इंटर, इसीलिए बेसिकली डेम्बेले हैज टू कम देयर एंड टेक दैट शॉट. Taha is talking about Lakaka, अभिषेक, दैट इज. आज ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं लगा है. मतलब लास्ट मैच में क्लियरली दिख रहा था ना फतेह कि पहले आधी घंटा में इट वाज डिमार्को. नाउ इट्स बीन अ टीम परफॉर्मेंस आज. but I think, yeah, I mean, Dimarco, he had that patch, even for Italy, and then he came back and he was really good. But yeah, I mean, I think if somebody will shine, it will be from Barcelona, like a Lewandowski or a Gavi, like you said, like you've been talking about Gavi. Because I don't know how long Inter can. See, that's the thing. Like, if this was a Conte team, I would have still had faith. And I know that people will say, but Conte doesn't do this in Europe or not. But he knew how to set a defense up. Simone Inzaghi, I mean, Okay, yes, the last match we Sergio probably. Roberto getting the ball, Rafinha on the right hand side. You know what? ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. सर्जियो रोबर्टो क्या कर रहे हैं ना, ही इज ड्रॉपिंग इनटू मिडफील्ड, इन फैक्ट इन अटैकिंग मिडफील्ड स्पेस, और वहां एक एक्स्ट्रा मैन. आई डोंट थिंक इंटर आर एबल टू डील विद दैट. तो डू यू थिंक इंटर should also look at changing something, maybe just dropping one of the forwards to midfield? There was a rumor that we tried the 3-5-1-1 or something, but again, we don't really have the squad or the bench. Like हाँ वही, मतलब Aslani एक्ट has में been. लोटारो को ला सकते हैं इन कैम पोजीशन, लाइक वो है ही ऑलरेडी. No, I don't और think that will work. काउंटर But come on, man, if मैन, you don't score पता है now, गोल होना if you don't चाहिए. score now, डम्फ्रीज है क्या? oh come on, Dumfries, come on, man. Direct bhai, it was a glorious opportunity, and thanks Mudit for the update again. Big up to Mudit, one up buzz. And yes, this was like crazy. And by beach ball याद है अभिषेक आपको? Beach ball incident against Liverpool ही हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है. Uh, अरे That was good from man, Barella, but come on, man, like. yeah, Gavi again. He tried his best, but हुआ नहीं enough. But well in that moment. By Dumfries, मतलब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. Fateh, being a Dumfries fan, I am like, Dumfries is a kind of guy. अगर आप you kind of make him a starter, not a starter wala cheese, you don't get the best output. No, I Maybe think that is. Dumfries is a limited winger. Like he doesn't have the crossing ability, and he doesn't really have the kind of pace where the trickery that you need on the wings. But he gets into these good positions, Positions, and exactly. it's a confidence thing with him. Like you said, if he's in and out and the confidence is not there, if he's confident, he can put them in. If he's not confident, then you'll see अच्छा, something like what अरे we भाई did there. फतेह, आपका टीवी वॉल्यूम बंद है ना? म्यूट पर है ना? नहीं, मत म्यूट करो यार, मेरा चैनल बंद कराओगे क्या? अच्छा, is it? हाँ यार, Can you? कॉपीराइट होता है. प्लीज प्लीज भाई, Oh, थैंक्स यार आदरी, मच लव टू यू. भाई फतेह, अब आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस हो इसमें, अभी तो आज तक नहीं हुआ क्या आपको रियलाइज? oh नहीं यार, इट्स God. नॉट फनी एट ऑल, ट्रस्ट मी, इट्स रियली Okay, सीरियस okay, okay. ब्रो. I didn't know this. That, but नहीं I कोई I नहीं. thought you couldn't hear it. Like I was on 15 or 18 the I volume. So wasn't able to hear, लेकिन but my viewers are able to hear, so that's what matters, right? yeah, that's So what matters. Yeah. but thanks यार आदरी, and again Fateh, I know that Oh, happens, but कोई नहीं. let's yeah, let's yeah. move on भाई. Spurs penalty, Oh no. man, कौन लेगा पेनल्टी यार? केन ही I लेगा. Frankfurt need to get something, I think, to make that group really interesting. And. Yeah, but I this वो वाला जो गेम है ना, I was Hmm. hoping that Richarlison scored some goals because of my fantasy. That's all. Otherwise, nahi. But Frankfurt is playing terribly in Bundesliga. Na? Last match, I think they lost 3-0 or something. Yeah, and I think They've been up and down. losing Kostic, I don't know how they've replaced him. It cannot be easy. Although Kostic hasn't really had a great time at Juventus, but then Mm-hmm. yeah. 2-1 हो गया यार. Oh my god. Oh, Oh, what a shot. Onana. Oh man, he screwed it up. And Sergio Roberto, मैंने क्या बोला? He took a shot on Onana. What was that? Lucky. Onana was lucky. Trust me. Lewandowski almost got the rebound. Man, Onana is almost embarrassed, I think, right now. नहीं? Fateh? I think so. Yeah, I mean, this is not what you expect, but Fumble नहीं करना at चाहिए था. the Come same on. time, him getting injured will be a big problem for us because Handanovic just doesn't move. I mean, Yeah. whatever Onana does, at least he moves to make saves. Handanovic, sadly to say, like it's been coming for him
for a good 2 years, but He's what 39 almost, right? Handanovic anyway. 38, 39, yeah. So like it's been मतलब happening, but तो यस पीपल रेंजर्स लिवरपूल 1-1 है. बाय द वे लेट मी नो इफ एनीवन इज वाचिंग दैट गेम. वो गेम कैसा चल रहा है? यस आई हैव केप्ट द टैब ओपन बिकॉज आई एम टेकिंग द कमेंट्स एज वेल. मैं मेन देख रहा हूँ बारसा इंटर, और दूसरा वाला कौन सा वाला अपना बायर्न म्यूनिख आर ऑलरेडी 3-0 अप अगेंस्ट विक्टोरिया प्लेजेंट अवे. गोरेट्स्का स्कोरिंग द थर्ड गोल. तो हम बोल रहे थे मुसियाला मिसिंग, दे विल स्कोर अ फ्यू गोल्स लेस, दैट्स ऑल. मार्से आर 1-0 up against Sporting away again. Genduzi penalty out of all the people. So that's very very interesting as well. तो ऑल ऑफ अ सडन उस ग्रुप का मैं वहाँ मीनवाइल यहाँ पर ओनाना का इंजरी हो रहा है, तब तक मैं ग्रुप्स देख लेता हूँ वापस से. अगेन पीपल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. यहाँ पे आई नो द एटमॉस्फेयर इज क्रेजीली गुड व्हेन इट कम्स टू द कैंप नो, बट इफ यू हैव मोर पीपल इन, कम ऑन लेट्स शेयर इन योर स्टोरीज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. भाई फतेह मैंने आपको भी टैग किया है, इफ यू कैन जस्ट रीट्वीट इट एंड यू नो ऐड इट एज अ स्टोरी, इट विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ब्रो. लेकिन लेट मी जस्ट retweet it. सी द ग्रुप्स. एक सेकंड, कौन सा ग्रुप देखते हैं पहले. अच्छा वापस मैच शुरू हो गया मीनवाइल. तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए नापोली ये वाला ग्रुप ऐसे है, थिंग्स स्टैंड. दिस इज हाउ इट्स स्टैंडिंग. तो लिवरपूल आर डूइंग वेल, बट आर दे डूइंग ओवरऑल वेल? 1-1 है, बट इज गुड इनफ फॉर देम अगर आप देखें तो. ग्रुप का सिनारियो, ग्रुप बी ऑब्वियसली वी नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन लेवरक्यूजन वर्सेस पोर्टो, पोर्टो लीडिंग देयर इज वेरी वेरी क्रूशियल. In the early 6 minutes they scored. तो भाई Hudson Odoi, Leverkusen not doing well. Looks like they're going out as things stand. But in the third group आप देख ही रहे जो हो रहा है on the screen, मेरे स्क्रीन में जो बारसा इंटर एंड टॉटनहम, यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन पूरा ही बदल गया ये. दिस इज ग्रुप डी इन माय ओपिनियन फतेह, एंड ग्रुप बी आर द ग्रुप ऑफ डेथ यार, सच में बोलो तो. Look at this Yeah, group. I mean, you wouldn't have thought that Group D would be the group of that. You would have thought that Tottenham would take it easy, which I think if they are on top now, then they will. But yeah, so far it's very interesting. That's why I said that if Frankfurt can get a point, that would be beautiful. Yeah, brilliant. You have to agree, man. Penalties sometimes we take for granted. People like Ronaldo, Kane, and all. They take a lot of penalties. Sometimes I know they're No, trolled, but at the same time, but Lukaku took a lot of penalties when he was at Inter in those 2 years. He never missed, correct. not a single Yeah, miss. So that was yeah. something that we missed And last people year. remember Alan Shearer, of course. Alan Shearer used to be a great penalty taker. But sometimes वो भी है कि यार people scoring non penalties get to certain levels. I think And both are important. but and Damian, like he is Mr. Dependable. Like he may not excel at anything, but you can really depend on him. And with Dumfries, I don't know. I mean, last year he was good. He really came Yeah. into himself, But later I on. think I know why Dumfries आज खेल रहे हैं यार, सच में बोलो तो, क्योंकि I think Korea not being there, for you having someone who can actually get in those positions ना, Yeah. Dzeko might hold the ball and play a little bit deeper at times, और इसलिए उनको Dumfries actually bombs on and gets to those positions. So I feel that might be the only reason I feel. नहीं तो why would they actually be take a risk of Dumfries defending, which is not as good as Darwin, ना? Yeah. इंटर इतना सही खेलती है क्या गौरव? यार इस सीजन तो नहीं खेल रही, लेकिन इंटर यार यू हैव टू टेल देम ट्रेडिशनली इंटर मिलान डोंट गिव मैचेस अवे इजीली ब्रो. मतलब अगर Yeah. आप पूछे ट्रेडिशनली एज अ टीम ना, एवरी टीम हैज अ डीएनए. तो इंटर मिलान यू कैन आल्सो आर्ग्यू दैट वो ये जोसे मोरिनो कॉमन फैक्टर 2010 के बाद जो है ना एक स्ट्रक्चर, No, I एंड दे think ऑलवेज हैड. we had many issues, but since Spalletti took over, defensively we were doing very well. Like Spalletti and Conte, the worst defeat that we've had has been 4-0 under Spalletti. And that was just Correct. twice we conceded 4 goals. Otherwise, every game, even in the Champions League, we competed very well. Like there was never a easy time against us. But under Simone Inzaghi is the first time I've actually felt like defensively, that organization is missing. Today we are doing okay right now, but I don't know whether we can hold on. Like I don't have the confidence, but that's why I kept saying, like, if it was a Conte team, Ankit, I would be so confident. मार्से 2-0 अप हो गए हैं. बेस्ट पेनल्टी टेकर फॉर यू, आई डोंट नो फतेह, बेस्ट एवर पेनल्टी टेकर. Oh boy. Best ever. Did Matt Laetitia miss penalties? I don't know. I'll have to go with Ronaldo. I think Ronaldo is very clutch. Matt Laetitia is a brilliant shout, in fact. Did he ever miss a penalty? I don't know. Like he had some stat where he never missed or something. हाँ, You'll have to check हमारा that भी out. चेल्सी में भी है ना फ्रैंक लेबोफ. He was very good. Oh yes. He actually took set pieces for us, all the set pieces.
what about was Lampard your penalty kick taker? या ही वाज एक्सट्रीमली गुड, लेकिन मैं Yeah. पर्सनली मैं आई विल कम टू माय आंसर, आई वाज वेटिंग फॉर योर। मेरे लिए एक बंदा ऐसा है ना जो आर्ग्यूबली स्पेशली इन चेल्सी इतना लिया नहीं है, उसको लेना चाहिए था, एंड दैट इज व्हाई आई रेस्पेक्ट हिम। एक्चुअली ही हैड इवन बेटर पेनल्टीज देन लैम्पार्ड। प्रोबब्ली यू हैव अ नेम इन योर माइंड बाय नाउ फतेह, और सब लोग बोलिए भाई। Pirlo was very good. In fact, Zidane also was very good. I felt Zidane also was very good. I always felt. लेकिन yeah, I'm talking about Michael Ballack. यहाँ पे गोल होना चाहिए। ओ व्हाट अ मिस ब्रो, रफीनिया द्वारा। दैट इज अ लाइफ सेविंग मोमेंट फॉर इंटर मिलान। जस्ट लाइक इंटर मिलान को स्कोर करना चाहिए था विद जेको अर्ली ऑन। आई थिंक दैट वाज एज गुड एज एन अपॉर्चुनिटी विद But see, this is रफीनिया's what I'm टेक्निक। talking about. Simone Inzaghi's tactics. Like, what is where is Di Marco going? Where are the defenders? Like, what happened? And this happens every game with Inter, and that's why I don't trust Simone Inzaghi. But you have Also, to give credit to Pedri. No, Pedri was the one yeah. who was the one who Also, won the goal. on penalties, Ankit, I think Mario Balotelli never missed a penalty. I mean, yeah, nobody respects him, but Oh, he had brilliant that. penalties, brilliant. He had David brilliant Luiz, penalties. David Luiz, आई थिंक दोनों एकदम टॉप कॉर्नर मारते थे और एकदम मतलब फाड़ देते थे नेट को ऑलमोस्ट। आई रिमेंबर Yeah, दैट। exactly. And I think so. Yeah, Balotelli is a good shout. I don't know if you can look up the Letizia stat. I don't know whether that's true or not, but I remember it being said that, and I saw Letizia, I think his last two seasons, 98, 99, या and लेटेस्ट around इज there. अ वेरी गुड शाउट यार। मतलब इनफैक्ट एक सेकंड, यहाँ एक बढ़िया क्रॉस, नहीं कुछ नहीं हुआ भाई। हु वाज दैट इंग्लिश, हु, मैं नाम बोल रहा हूँ यार, सब पीपल माइट रिमेंबर, आई डोंट नो फतेह आप भी उसका Who? आप सोच के बता सकते हो। इंग्लिश कोल्ड्स का, इंग्लिश अंडर 21 इंग्लैंड का एक्स मैन सिटी प्लेयर ब्रो, हु वाज ही यूज्ड टू टेक पेनल्टीज। अरे हाउ कैन आई फॉरगेट, आई एम रिमेंबरिंग नेम, कभी कभी होता है ना। ही वाज इंग्लिश अंडर 21 मैनेजर। Stuart Pearce. हाँ, स्टुअर्ट पियर्स, स्टुअर्ट पियर्स। But Pearce missed a penalty in the 1990 World Cup, and हाँ, then दैट इज फेमस, बट took one in डिस्पाइट हिज 96. पोजीशन वो अच्छा लेते थे पेनल्टी, आई थॉट Uh, जनरली। Yeah, I mean, सो Real Madrid had Fernando Hierro. He was somebody who took, it was very weird that a center back was taking penalties, but yeah, he used to take them. But come on, I mean, like you said, Balak was a good penalty kick taker. And when you talk about being good and calm, you generally think about Germans. So I'm sure there'll be other Germans who don't miss penalties. Like oh yes, I think that's a good point. A lot of Germans would have taken over the years. oh अरे गोल, अरे बच गया भाई। सर्जियो रोबर्टो is getting to very good positions, I must say bro. yeah, He is going into that really will good get positions. started. अच्छा, सर्जियो बुस्केट्स saying something, कुछ तो कांटेक्ट हुआ है। No, but come on, this is just not done. Putting the pressure on the referee. या Yes, absolutely. I think Simone Inzaghi has been known to play attacking football. He was a striker himself, and yeah, it is very visible in the way we defend. Like that structure that Conte had, the structure that we had under Spalletti, that's just totally gone. And a lot of us Inter fans were very worried that like what is happening like this. How can you be so bad? And we've been very poor this season. So that's why I have no confidence for this game. Like I am pretty certain that there is a mistake that Inter will make, and it might already be there. I think it's offside. Oh man, still Onana, what a save, bro. I What a know, save. बाद में they'll shout for a penalty to Pedri. By the way, Pedri is doing really well in the last few minutes. Him and Sergio Roberto for Barcelona, in my opinion, have stood out really. बहुत अच्छा खेले दोनों। आई नो डेम्बेले बहुत दिख रहा है आपको बॉल पे, लेकिन मेरे ख्याल से इफेक्टिव जो बोलते हैं ना भाई, जो भी ज्वाइन किया भाई, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ज्वाइन किए भाई, सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम, और ज्यादा लाइक्स हो भाई। मॉड्स, हाउ मेनी लाइक्स हैव वी गॉट? होपफुली वी गेट क्लोजर टू अवर टारगेट। बट यस, अभिषेक का मैं अग्री करता हूँ 100%। लैम्पार्ड बहुत often he used to just go down the middle and go with power, but it was almost unstoppable at times. But David Luiz bro, he goes with precision and power, इसलिए David Luiz मैं ज्यादा रेट करता हूँ to Oh, be around. goal. अरे यार, बारसा स्कोर मैन, इट इज डेम्बेले। और मैंने अभी डेम्बेले का बोला था भाई, बहुत ही अच्छा गेम प्ले, और यहाँ पर इंटर स्विच्ड ऑफ। व्हाट हैपेंड Yeah, ब्रो? exactly. That's what वेयर I वाज said. डिमार्को? Yeah, exactly. Inter switched off, and yes, Dembele with a very, very, very important goal. And yes, Barca fans, congratulations, bro. Like, is it the end? Not really, would say, because Inter might come out, or maybe that will suit Barca now more. But Dembele, you have to give it to him. He's not had a good game and a half, but he's got in the box when it mattered. Yes, Onana did well the previous moment against Pedri, but somehow
he got in the box and no one marked him. Again, देखते हैं, बहुत ही बढ़िया बॉल था. First to Rafinha who won it. तो DiMarco, first error जैसे मैंने बोला was DiMarco himself. How did he lose that ball and not tackling? Not tackling Exactly. Rafinha. Second चीज भाई, Sergio Look at Roberto that. again in a great position. Why was Yeah, no man marking there? yeah, exactly. That's Simone Inzaghi's DNA. Like doesn't know how to set a defense up properly at all. It's all about attack, and if you keep missing chances the way we did, Bhai Saab, look at that Barca bench, bro. Well, again, yes, looks like Spurs have scored as well, and it's Son getting a brace. और भाई साले ने तभी मारना है जब मैंने नहीं लेना फैंटेसी में. पहले एक एक महीने तक लिया था उसको फैंटेसी में, कुछ किया नहीं. कोई नहीं. oh god. Congratulations LM10, congratulations to all the Barca fans because it was a very good goal. I think credit बहुत जाता है to Rafinha in that moment. I know ball किसकी थी यार, मैं वो मिस कर दिया. Even that pass was brilliant, that pass to Rafinha, but even more so I think it was a very difficult ball to actually win against DiMarco. तो Rafinha को जाना चाहिए, and plus he put in a nice pass. He could have crossed himself, right? लेकिन he put a pass to Sergio Roberto, identifying him. So Rafinha playing on the right hand side has actually worked, or Dembele coming off the left hand side and actually scoring has also worked. So you have to give that. But Alonso needs to be sub off. He's literally so bad. Football freaks, I don't know. I don't think so, to be very honest. Yes, Was that pass not from Alonso though? yeah, I thought so. It came from that side. Again, Yeah. I won't claim it until I'm sure. But if someone can tell me who actually passed the ball to Rafinha, भाई मेरे को तो लगता है he might have passed the ball from that side. लेकिन Alonso का देखिए, मतलब I know there was a tweet today that he is going to be playing beside PK because he has pace, which was a joke in itself. You're never going to expect Alonso to beat players on pace, यार. On a nice cross यहाँ पे Onana doing well, but on Onana spilling it in the end. और लगता है, oh my god, Rafinha with yet again attempt, bro. मतलब arguably Barca should have been already, like, it should have been 3-1. सच में बोलूँ तो score अभी तक. No, come on. We had our chances, man. Come on. हाँ, इसलिए We've एक hit दिया the ना मैं. post. We've hit the post. We've had that Dumfries chance after the चलो post too. I 3-2. think Ideally 3-2. मतलब बारसा रफीना के पास 2 chances मिले in the last what but it's 10 minutes or so. उसके मतलब looking at him as leads, he scores such goals at times. People rating Xavi already. Well, let's see. Well, Xavi is very good. I can say that he's very good. Why I'm saying very good, Abhishek and everyone watching. The reason is saying context भी देखना पड़ता है ना. What has he had experience of? Our last season में, yes, he was out of the Champions League. Yes, out of the Europa League. But to be very honest, जो league में किया था ना, and yes, signings helped. मैं नहीं बोलने वाला नहीं किए. I think you have to give it to him that Barca actually looked really good in the last part of last season in the La Liga. और इस season में भी, I know they we are were talking about La Liga. that Bayern Munich game. I thought they were so good. In the second half, right? If I remember right. Yeah, when they had those chances, and I thought, wow, I mean, Correct, how are correct. they not? Yeah, it's about Bayern taking the chances. Yeah, But हाँ, they have, see, मतलब again, if you are expecting Xavi करेंगे, I will not say that he's a world beater already. मतलब jury's out. ये definitely मैं agree करता हूँ अभिषेक से, लेकिन जितना देखा है, I think they are in the right direction. ऐसे नहीं लग रहा है मुझे they're in the wrong direction. yeah, Simple as that. exactly. And they're top of the league, isn't it? Yeah, मतलब देखिए, हाँ, मतलब आप you have to consider the big games as well, क्योंकि यार being a Barca manager, that is what you're judged on. Apart from the entire season, जो arguably he has not even got. Last season, remember, it was Koeman, right? Xavi came in midway, technically, Yeah. right? So this season, yeah, depends on how he does this season after making so many signings. Now you can judge, maybe, yes, absolutely. Barca game is dependent on Dembele. If it's good, Barca, if you stop Dembele, you will win the game. Do you think so? But then if I'm sure Dembele will get injured anytime, so we'll नहीं be नहीं, able to score that. मैं बताना चाहूंगा. हाँ, मे बी आप जनवरी तक का बोलते तो मतलब मार्च तक बोलते तो समझ में आता. गोल होने वाला, अरे बच गया. Similar kind of an attempt. Abhi they have Rafinha also. Abhi Rafinha is kind of playing, he's holding back. You know what I mean? Rafinha can actually bomb down the wing on the right hand side and do a lot in the box.
I think वो जानबूझ के he's playing a role like how Ziyech was supposed to play, how he used to play in Ajax. Rafinha वैसा role खेल रहा है. He's pinging those balls, you know. He's the passer, he's the supplier. लेकिन actually Rafinha can do more than that. It is feisty, but then if you're going away to Camp Nou, A, you have to take your chances, and B, you have to have some defensive structure. I mean, in both the ways, like I don't get it. Like, what is Simone Inzaghi like? Like, I don't think he's going to win a lot. I mean, maybe fourth spot, but if you see him, Yeah, tactically, expectations क्या है यार इंटर फैंस के सच में इस no, सीजन में? अभी तो fourth spot ही है. Like there is no other expectation. But then last year, the way he lost the league, and okay, he won 2 trophies. So I think we have to, like you have to give him credit. But then at the same time, as an Italian manager, you expect to know how to defend. Like that is the sine qua non of being an Italian sort of coach, and he doesn't do that. Like he doesn't set his teams up to not get beaten at all. Like any match you watch, Inter concede goals, and we were surprised that we didn't concede in the first game against Barca. I think that's the only clean sheet that we've kept, and maybe one more game. So like, how do you even think about being an Italian coach if you can't keep clean sheets, if you can't set up defenses properly? That's a big question mark. A lot of people say that okay, modern football doesn't require defense, but come on, I don't believe that. भाई साहब ये क्या खाकर आया आज रफीनिया? उसका क्या दिमाग फ्यूज उड़ गया क्या हुआ उस सेकंड में? मतलब आई नो ही डिड ब्रिलियंटली फर्स्ट, लेकिन इतना ज्यादा करने की जरूरत थी क्या? थोड़ा सा चलो वापस से देखेंगे रिप्ले. बट रफीनिया मैन, ही केम फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर, took the ball out of thin air, plucked it and kicked it out for a corner. वो कॉर्नर वाला चीज थोड़ा सा ही could have just gotten a throw rather. और गोल और मैसेज 100% गोल है जेको का, लेकिन आई थिंक fall in the box. Spotify Camp Nou, yeah, I hear you. If Inter loses today, will he be sacked? Same problem as there is no money to sack him. If he had lost the first game to Barcelona, then yes, I think if we had lost today, then he might have been sacked. Now he's safe till the World Cup, and yeah, I mean it might already be too late. अच्छा हाइपोथेटिकली बोलते हैं, मतलब आई नो many would not want, लेकिन बाई चांस अगर इंजागी जाते, that who's the best fit for you guys in world football? No, if we had money, then obviously Tuchel would be fantastic because he knows how to play 3 at the back too. But we don't have money. Lukaku. Yeah, exactly. That would be even better. I mean, you can't hold the club hostage, but there is no money. So the names that are being linked are like Juric next year, but then Juric will not. No, Napoli cannot win the Champions League. See, Spalletti teams always start well. Even when he was at Inter, we started well. Napoli themselves actually start well, but this बार कुछ लग रहा है यार, मतलब they are not on, they are really turning it on. Let's hope so, man. I mean, I love Spalletti so much. I respect him so much. He's built this Inter. He started our good cycle, and for 5 years we've done pretty well. And a lot of people forget, like they don't give him the kind of respect that I think he deserves. So it would be beautiful if he wins the league, and in that process stops your AC Milan, because AC Milan in the league are looking unstoppable. Okay, so half time हो गया people. Let's see Napoli City final बोल रहे अभिषेक भाई. Half time thoughts, मतलब मैं एक तो मैं definitely surprised हूँ that again जावी का हम क्वेश्चन कर रहे थे. I have to give जावी lot of credit यहाँ. मैं क्यों देने वाला हूँ credit first and foremost. और हाँ, हम देखेंगे क्या हुए other matches as well. तो बने रहना सब लोग. Do hit that like button as well. लेकिन first and foremost मैं बोलूँगा सर्जी रोबर्टो भाई. सब लोग ने सोचा भाई he'll play like a typical right back. वो 98 मिनट खेले थे लास्ट मैच में. He was there. In fact, especially that DiMarco was making those runs, you will think all the more that you need some more defensive cover. Yeah. लेकिन सर्जी रोबर्टो playing as a midfielder, और yes for people saying नहीं in attack he played, भाई ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने बिताया in cam position. जो कल was a mistake by Pioli trying to play Theo Hernandez वहां पर to begin with, which was I think a mistake. लेकिन यहाँ पर Xavi ने with Sergio Roberto doing that, because Sergio Roberto, remember, he's actually a midfielder who actually played right back. It's not the other way around. So you can argue that Xavi has got it right because एक extra man मिल रहा है in midfield. और वहां से क्या हो रहा है, Pedri
is able to get a lot of second balls on the leftist channel. और Dembele एक extra man होने से वो भी free हो रहे, he's coming inside and he's kind of taking those shots. Rafinha is staying a little bit deep क्योंकि Sergio Roberto is going in midfield, तो Rafinha playing a little bit deep is doing more defensively और ज्यादा balls डाल रहे हैं. तो लेकिन फतेह मैं आपको पूछना चाहूंगा, of course we'll talk about Barca's goal, but how much are you regretting the fact that Dzeko ने बार को मारा? No, Dzeko ne Barco Mara, that was a problem, but there was still a chance on that rebound. And I still want to see who missed that, because that was plain. I mean, you have to take the shot. He even missed the ball completely there. Very disappointed though. If you go to Camp Nou and if you make those defensive errors and you get a chance to score, you should take it. If you can't even do that, then Yeah, exactly. Lukaku will be back to Chelsea anyway. But again, I don't see him fitting Potter's system. That is different. We'll come to that. Forza Barca Sanjeev, again, congratulations abhi ke liye. Lekin is 1-0 enough? Arguably not. You need one more goal. That is what I'm saying. Like, in terms of head-to-head or goals, it'll count, right? I'm seeing a City Madrid final. Okay. यहाँ पे लिवरपूल फाइनल हाउस अगेन उनके बारे में बात कर सकते हैं क्विकली. यस, बाय द वे, आप जो स्कोर्स मेरे स्क्रीन पर देख रहे थे, दैट वाज बेसिकली रेंजर्स 1 लिवरपूल 1. और यस, टॉटनहम आर बीटिंग फ्रैंकफर्ट 3-1, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था. भाई सीरियसली क्या देखने लिया डार्विन नूनेस को हमने 100 मिलियन देके. फैबियो कार्वालियो स्प्रिंटिंग एंड विनिंग द बॉल मच बेटर देन हिम. वेल, शायद फैबियो कार्वालियो हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड साइनिंग, लेकिन डार्विन नूनेस आई डोंट नो अबाउट आज, क्योंकि आज इट बी रॉन्ग फॉर मी टू कमेंट, क्योंकि मैंने देखा है पार्ट्स, क्योंकि मैं फोकस कर रहा था ऑन द बारसा गेम. लेकिन आई फील दैट डार्विन नूनेस जो वीकेंड में किए थे काफी अच्छा किए थे. मतलब अगेन, he is a youngster at the end of the day. Is the price tag his fault? Probably not. But anyway, we'll come to that. यार आपके लिए वापस से बोलो शायद, draw is not so bad. Yes, you want to win the group, of course you want to take 3 points, लेकिन let's be honest, आपका ग्रुप नहीं जीत रहा आप. That's what it seems like. Again, I might be wrong. देखते हैं. Barca greater Gavi's pure passion. Yes, Gavi का बहुत ही important role रहा है. I'm talking about Sergio Roberto, but Gavi getting a lot of say tackles in. हाँ, एक मोमेंट जरूर था जहां पर आई थिंक आई रिमेंबर फतेह ने बोला था अबाउट निको बरेया गेटिंग दैट बॉल ऑफ गावी, और चांस बना था आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर डम्फ्रीज. अगेन डम्फ्रीज के पास गए हैं एक दो चांसेस, जेको के पास गए, तो ऐसा नहीं है कि बारसा हैज डोमिनेटेड द गेम. बट अगेन, कमिंग टू दैट गोल, if someone can help me who actually made that first pass, again we think it might have been an Alonso, लेकिन first pass जो गया little bit high था. Like I said, Rafinha has been sticking to that byline on the right hand side. Okay, Rafinha ने header जीता against Di Marco out of all the people, so you have to question Di Marco in that moment. चलो ball, you didn't win the header, Fateh, but even after not winning the header, no. Rafinha was able to take the ball even after that and pass it Exactly to what Sergio Roberto. I'm telling you, Ankit. That is what I kept saying. The moment I got here, I kept saying that our defense is not going to hold. Like we are known for making these sorts of mistakes, and I kept saying I miss Conte, because this is what Conte doesn't allow his team to do. Players to make these sorts of errors. Look at Di Marco here. Look at Mkhitaryan later on. This is not a Italian team defense. Come on. It's really disappointing. This goal is so full of errors from our side, and yeah, But if you have to give credit. You have to give credit too much. I think the absolutely, Roberto ko, absolutely. Rafinha ko, as well as Dembele ko. I think all the three, and of course the first passer. Again, I'm looking for the person who actually passed. वो replay में पता नहीं बार-बार वो दिखाई नहीं रहे भाई. That is a very important pass as well. But कोई नहीं. Big up कैसे हो भाई? Dominating, yeah. Uruguayan Andy Carroll नहीं यार. David Nunes के बारे में बोल रहे हैं अभिषेक. I think jury is out rather. मैं इधर वे नहीं बोलूँगा अभी के लिए. Barca will batter Inter. Just see second half also. भाई LM10. Did Barca batter Inter? Let's take from Fateh. Bhai, would you accept that from a Barca fan? So far, they haven't really battered us. We had our chances and we should have scored. So, but yeah, in the second half, it could happen. And I don't know if that's because Barca are good or if Inter are just that bad. We've been battered by Milan, Udinese, Lazio, Roma, Bayern Munich. So, every big game we flopped except for that one Barcelona game. And I don't know how that happened. So that's how bad we have been this season. So, I wouldn't rule it out. Like I said, when you said predictions, I said 3-0 Barca. And you know what? मैं वापस से goal देख रहा हूँ. People correct me if I'm wrong. But Skriniar was also on his heels here. Yeah, exactly. He's been doing that again all season. I think they say that he's unsettled because they tried selling him to PSG and then it didn't happen or whatever. But
Yeah, I mean, that's what I'm saying. Like, defense is where we were good at under Spalletti and Conte, and now with Simone, it's slowly coming apart. या अच्छा यार, यहाँ पे बैंटर चल रहा है भाई. गावी हैज बीन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बारसा साइड. फॉर मी वो एक स्टील आता है यार बारसा के मिडफील्ड में. मतलब अगेन यू माइट डिसएग्री व्हिच इज फाइन. Who is that आई guy? एग्री विद एमशे Is that ब्रो. Dave एंड Fry? I think Dave Fry missed it. Oh, yeah, Dave Fry was the guy who missed the. ओके. हाँ मतलब यू कांट बी सो हार्श फॉर. मतलब डिफ्राई को कहाँ तो आप एक्सपेक्ट करोगे यार. Just because he's a Dutch player, Ankit, come on. I mean, look, see, even this नहीं this नहीं बट कम ऑन, Dumfries इज अ सेंटर chances. बैक ब्रो, कम ऑन. Oh, I mean, we've had बट the chances on the. या डम्फ्रीज का जो शॉट था ना, आर्गुएबली ही आल्सो हैड एन एक्स्ट्रा सेकंड टू काइंड ऑफ एम एट इट. अरे थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. योलोंजो को 7.2 किसने दिया भाई? पूरा हगा है बंदे ने भाई. अगेन मच रेस्पेक्ट यू. द फैक्ट इज, इन माय ओपिनियन, अगेन यस पीपल माइट डिसएग्री, हाउ मेनी टाइम्स इन हिज लाइफ, अगेन मैं पूछ रहा हूँ सब लोग से, इंक्लूडिंग फतेह, बिकॉज फतेह ने बहुत देखा है अलोंजो को इन फ्योरेंटीना डेज. हाउ मेनी Yeah, टाइम्स इन हिज लाइफ हैज ही प्लेड लेफ्ट सेंटर बैक इन अ बैक थ्री? I don't think I've ever seen him play that. एग्जैक्टली वो प्री सीजन में खेला है. तो आई थिंक वी आर बीइंग वेरी वेरी अनफेयर. एंड आई एम टाइम एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, आई नो आप लोग बोलोगे एक बायस रख रहा है बिकॉज इज नेक्स्ट चेल्सी कल्ट हीरो अलोंसो, लेकिन सच में बोलूं, मैंने बहुत गाली भी दिया अलोंसो को यार ओवर द इयर्स. To expect Alonso to actually beat a Dumfries or someone else in pace, then your expectation is incorrect, with all due respect. Alonso क्या करता है? Alonso is someone who actually is, he gets in the box, he actually gets in the headers, he gets in your shots. Is Xavi playing him like that? No. He's playing a different role. तो यार it's totally new to him, तो थोड़ा सा unfair रहेंगे, लेकिन I understand expectations high being at Barca, being such an important do or die game. तो I understand totally, लेकिन यार honestly question mark अगर आप दोगे तो भाई rather you question Inter. For me, Inter players, for me, there have been a couple of players who have not really lived up to the mark, but again it's just first half. सेकेंड हाफ अभी बाकी है भाई. स्पेसेस किधर है नंबर 9 पोजीशन के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डी बॉक्स में बॉबी को प्लेसमेंट ही नहीं निकाल रहा है. एलियट इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड, गोमेज इज बीस्ट इन फर्स्ट हाफ. ओके, तो शायद यार इंटरेस्टिंग बहुत कमेंट कर रहे हैं. बाय द वे सब लोग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, मॉड यू कैन हेल्प मी आउट. होपफुली द likes have gone up and reached our target, which is obviously 100. तो भाई शायद बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट बोल रहे हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग दैट हावी एलियट ऑन द राइट हैंड साइड आ रहे हैं. तो मुझे लग रहा था हावी एलियट विल प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद हेंडरसन ऑन द राइट हैंड साइड. तो कौन खेल रहा है भाई लेफ्ट हैंड साइड में? अगेन मैं लिवरपूल का गेम हर एक मिनट नहीं देख रहा कंपेयर टू बार्सिलोना गेम, इसलिए पूछ रहा हूं. शायद इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट देयर. रोबर्टो असिस्ट, हाँ आई थिंक रोबर्टो हैज बीन फैंटास्टिक. मतलब संजीव, मतलब फतेह, मैं आपसे पूछता हूँ, हु हैज बीन द मैन ऑफ द मैच इन द फर्स्ट हाफ फॉर यू? No, I mean, see, look, we knew that Dembele had a great game last time too. At the San Siro, he had his chances. Finishing was a big issue, na, in terms of Yeah, but he crossing made that up today. And he decisions. is a nuisance for whichever side he plays on. So So, but why is Dembele having that space today? How is he able to come a little bit more centrally? I think the credit, in my opinion, should go to Pedri and Xavi himself, because Pedri, what he's doing is he's kind of covering for Dembele on the left hand side, or Xavi himself, he has himself done the thing that नहीं Sergio Roberto भाई extra man होंगे in midfield, तो वहां पर क्या हुआ? All of a sudden they're going three at the back, so they are better protective in terms of defense, or they are having Dembele kind of roam around or having Pedri. So I think tactically definitely बहुत अच्छा रहा है, is what I would say. So Roberto certainly मेरे लिए सच में बोलूँ तो for me the better side of Barcelona has been the right hand side, very surprisingly, which is generally Roberto first as a defender and then as an attacker going into midfield, and Rafinha covering for Roberto when he's not there. So I think wo actually have done really well in my opinion. Messi is good in the second half. Inter will not sit back anymore. I think they might I do the don't think same thing actually. Nahi? but did we really sit back a lot? I mean, we had our chances, you saw, and मतलब it was more on the counter. It wasn't like you had एक set piece था, Dumfries वाला definitely counter था. तो yeah, I but mean, at Camp Nou, why would you go for it? I'm pretty sure Inter will not go for it. As in, come on, but you that's just the need a draw. problem with this coach, Ankit. That is what I'm trying to tell you. Like, whatever you think you should do, he'll do the opposite. So trust me, you'll like see him try something in the second half, and that doesn't come off, and Barca win 3-0. That's what I'm saying. I don't know what's going on with Simone Inzaghi. I mean, and
it's so weird. I mean, the substitutions he makes, you get a yellow card, he'll substitute you off. Like, it's like playing FIFA, when you were 10 years old. Like, when you were 10, 12 years old, the moment your player got a yellow, you did that in FIFA. The moment you mature, you don't do that anymore. So I don't know, like, what's going on with him. Let's see, big 45 minutes for him. But I अच्छा don't really बिल्कुल, बाय द expect a lot. वे यहाँ पर भाई मैं देख रहा हूँ भाई 15 लोग हैं आराम से, ये नंबर कैन ट्रिपल हो कैसे होगा, आप लोग लाइक दबा दीजिए भाई। आप देख ही रहो, बहुत सारा मेहनत लगता है यार। आप देखिए मेरे पीछे क्या है, चेक आउट द थंबनेल, सब चीज यार बहुत लगता है। प्लस हम कवर करते हैं लिटरली एवरी गेम, आजकल एवरी गेम हम कवर कर रहे हैं अक्रॉस लीग्स, अगर इन ऑन बोथ द चैनल्स। तो भाई प्लीज लाइक कर दीजिए सब तो। और या बहुत ही आई थिंक उसने यहाँ पूछ रहे हैं अबाउट सेकंड हाफ सब्स्टिट्यूशंस। सच में बोलूं अभी के लिए मैं दो आई एम नॉट सीइंग एनी सब्स्टिट्यूशंस। Yes, tactically, I don't know. जैसे फतेह ने बोला that is Inzaghi that guy who takes the things by the scruff of the neck, right? He's probably not correct. अब इसीलिए Yeah, मैं देखता exactly. हूँ he might not change something क्योंकि 1-0 है। आप लोग को अगेन हम टेबल देखने वाले, टेक्निकली फतेह you will be happy with 1 point, right? Let's Oh, be I would honest. be very happy with 1 point, but I don't expect Simone Inzaghi, his team. I already know what he's going to say. He's going to come up and he's going to be like, well, we created chances, it was the details. I wish we had taken them. Yeah, no, I think it doesn't cut at this stage. You need to be a bit more, I don't know, very aggressive and also very intelligent, and I feel like he's just in both those factors. I think he's too timid. So I don't Yeah. expect anything great. Like, I don't expect any substitutions. When they will happen, they'll be like for like. So you'll see DiMarco go off and Guzins come on. That would be one substitution. Or he'll just take Bastoni off and put DiMarco there and then Guzins. So it's going to be something like that. Like, it's not going to be a tactical change. It's just like for और like. बारसा को तो शायद ही करने की जरूरत है यार। दे आर डूइंग वेल, यस पीपल कॉलिंग अलोंसो आउट। और मेसी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज याद रखिए बार्सिलोना के पास दे हैव अराहो आउट, दे हैव कुंडे आउट, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं, क्रिस्टियनसन आउट। तो डेफिनेटली वहां पर अलोंसो वाज द ओनली ऑप्शन। और बैक थ्री क्यों जा रहे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है, बिकॉज अगर बाल्डे खेलते ना बैक फोर जाते तो द वे दैट इंटर का जो मिडफील्ड है वहां पर 3 लोग है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल पार्ट ऑफ मिडफील्ड। आई थिंक वहां पर ओवररन हो जाती बार्सिलोना मिडफील्ड एट टाइम्स। और वही वो काउंटर जो है ज्यादा अवॉइड करने के लिए दे आर लाइक नहीं, विल हैव वन आर मैन इन मिडफील्ड, और वो है सर्जी रोबेर्तो। सर्जी रोबेर्तो को मार्क नहीं कर पा रहे थे इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। इंटर हैड डिडंट हैव अ क्लू कि सर्जी रोबेर्तो कर क्या रहा है भाई, क्योंकि टेक्निकली स्टार्टेड एज द राइट बैक बट देन ही मूव्ड इनटू मिडफील्ड एंड दैट वाज एन अटैकिंग मिडफील्डर। तो आर्गुएबली बारसा खेल रही है भाई 3-2-4-1, दैट इज व्हाट बारसा इज प्लेइंग, नॉट इवन अ 3-4-2-1। लेकिन हाँ अग्री देयर यहाँ पर। और इंटर आर ब्लडी शैम्बोलिक, मे बी बारसा कॉल्ड पॉगबा टू डू विजार्डरी एंड विचक्राफ्ट। वेल शैम्बोलिक, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स शैम्बोलिक रियली एवियस पर यार। I would still say that the tactic of Inter is not to kind of go for it. They are happy to hit on the break. Yes, our set pieces I think is also a case, लेकिन वहां पर अगेन अलोंसो इज एन इंपॉर्टेंट कॉग। तो यार मैं बोलूंगा बरेला हूँ, यस एक एक मोमेंट था बरेला का जहां पर ही गॉट द बेटर ऑफ गावी। इफ नॉट इट हैज ऑल बिन गावी डेफिनेटली। who would you sub in about in second half? अभी तक मैं किसी को नहीं करता टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ इंटर मिलान के लिए आई वुड हैव थॉट अबाउट इट अगेन। मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपके पास मेसी, आई शो यू द ऑप्शंस एज वेल। एंड अगेन पीपल जो भी जुड़ रहा है भाई प्लीज लाइक द स्ट्रीम, अगर शेयर करें तो और भी बढ़िया है। वी आर कवरिंग लिटरली एवरी गेम चैंपियंस लीग, आप हम करते ही है, सेकंड सीजन वी आर डूइंग इट एंड ऑन बोथ द चैनल्स, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, होपफुली वी गेट देयर एज वेल। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? असलानी, नाउ इंटर कर सकते हैं असलानी। द रीजन बीइंग दैट दे माइट से नहीं, लेट अस एक्चुअली हैव अ प्रॉपर डीएम देयर सो दैट मे बी वील हैव मोर फ्रॉम द अटैकिंग प्लेयर्स, सिंपल एज दैट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगेन यू आर हैविंग एक्स्ट्रा मैन इन मिडफील्ड दैट इज बार्सिलोना अभी के लिए, और यू आर काइंड ऑफ मैचिंग नंबर्स। हो सकता है विद असलानी देयर वो डिफेंसिव एलिमेंट ज्यादा हो, और मे बी वो गावी जो इनफ दिखा रहे स्टील, असलानी might give a surprise वहां पर in defensive midfield formation। हाँ डार्मिया you would have had, अगर इंटर का रहता अभी तक 2-0 मिलाता डार्मिया, बट आई थिंक डम्फ्रीज विल बी देयर बिकॉज दे हैव टू स्कोर अ गोल, इसलिए डम्फ्रीज विल स्टिल बी देयर। अगेन बाकी लोग मैं नहीं देख रहा हूँ। यस यू कैन आर्ग्यू दैट मे बी गोजन्स कम्स ऑन लेट, बट ऐसा कुछ अच्छा खेला नहीं गोजन्स इन इंटर, तो आई वुड नॉट मेक एनी चेंज। हाँ बार्सिलोना के लिए क्यों व्हाई वुड यू मेक अ चेंज? थिंग्स आर गोइंग वेल। हाँ, if you had a centre half, I would have brought him off. Maybe Frankie De Jong comes in late.
ही कैन प्ले सेंटर एज वेल, रिमेंबर। लेकिन यार कैन ही प्ले लेफ्ट सेंटर बैक, थोड़ा सा इशू है वहां पर। तो दैट्स द ओनली कंसर्न मेरे लिए। एग्जैक्टली, बैटरिंग तो नहीं है यार, मैं भी आई वोंट अग्री विद दैट, डेफिनेटली नॉट अ बैटरिंग। इनफैक्ट आर्ग्युबली देयर कुड हैव बीन 2 गोल्स यहाँ इंटर का भी, एंड बारसा कुड हैव बीन 3 गोल्स, वो भी फेयर पॉइंट होता। लेकिन हाँ, बाकी मैचेस भाई, टॉटनहम, फ्रैंकफर्ट और रेंजर्स लिवरपूल, बता दीजिए वहां क्या होने वाला है। और यस, सेकंड हाफ शुरू हो रहा है, थिंग्स स्टैंड, टर्स सेकंड मैन ऑफ द मैच टिल नाउ फॉर श्योर। भाई ऐसा कुछ बढ़िया सेव तो मुझे दिखा नहीं, सच में बोलूं तो, टर्स सेकंड का भी। मतलब वो मुझे लगा था ही मेरा सुपर्ब सेव, बट आई थिंक इट वाज मोर द बार। आई डोंट थिंक ही सेव्ड, राइट? अरे स्क्रीनियर को क्या हो गया यार, सेकंड हाफ शुरू होते ही? ये कुछ तो गड़बड़ हुआ यार, डम्फ्रीज इज कॉलिंग द मेडिकल। ओके, इट्स अ बैक इंजरी, अलोंजो मैन। Your boy. ओके मैन, लुक एट दिस भाई, शायद दिस इज शॉकिंग टू मी। Fabinho is playing like a left center midfielder. What? I have to watch the extended highlights for that later. Because I just watched a little bit now because of concentrating on the Barca match. That's Liverpool he's talking about, Syed. Look at Bayern, they are scoring for fun, getting shivers for the game against them. Also, Inter should have been 2-1, 3-1 up. हाँ, 2 goals. हम Inter, Fateh, honestly, 2 goal तो होने Yeah, चाहिए I थे. mean, Dumfries and Dzeko, we should have had those goals, those. हाँ. But that's the problem, you can't come to the Camp Nou and miss those sorts of chances. Like, no team can get away with that. So Mhm. this is just. 4-4-2 backline, Shimikas, VVD, Konate, Gomez. Midfield, Hendo, Fabinho, Elliot, Fabio. Forward, Bobby Nunes. Okay. Interesting यार, 4-4-2 गए। मतलब I thought हम आप जाएंगे maybe like a 4-3-2-1 with maybe Fabio Carvalho as well as Bobby playing in behind Nunes. But कोई नहीं, if score remains the same, what will happen, cause head to head are also same, who will qualify। हाँ, मतलब यहाँ पर फिर गोल स्कोर होगा ना, if I'm not wrong, let me actually show that। अच्छा, यहाँ पर अटैक होते हुए बारसा का, और यहाँ पे बिफोर आई फॉरगेट, लेट मी जस्ट स्टार्ट द वॉच ब्रो। आज मैं वॉच, चलो भाई, इसी बात पर हो जाए। ऑलमाइटी स्पोर्ट्स ओपी, आज आई रिमेंबर टू रीस्टार्ट द वॉच ऑन टाइम डॉट। तो भाई माई टाइम स्टैम्प है मेरे, आई होप यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन एवरीवन। दिस ओनाना गाय लुक्स डॉजी, टेक लॉन्ग शॉट्स, एक ही मोमेंट तो था। But I think I would still prefer him over Handanovic, considering that एनी डे, Handanovic, एनी डे, एनी डे। you know, अरे सौरभ, कैसे हो भाई? नाइस टू सी यू ऑलवेज। व्हाट बारसा शुड डू इज ट्राई मोर लॉन्ग शॉट्स ऑन आना, एग्जैक्टली वही मैंने अभी लिया था कमेंट। आई यूज्ड टू वॉच सीरिया ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग 12 13 14 सीजंस एंड वाज अडोर्ड बाय द लाइट्स ऑफ योविटिच, गुआरिन, इकार्डी, भाई पापू गोमेज, ऑफ कोर्स ब्रो। योविटिच सैड ही टर्न्ड आउट, भाई योविटिच यूज्ड टू बी द गाय ऑन फीफा ब्रो, ट्रस्ट मी, I ही think यूज्ड it टू बी was द just गाय। injuries, that it was not that he was a flop. He was so good for Fiorentina, if you remember, when he came for आई थिंक द Fiorentina. सिटी मूव डिड नॉट वर्क एट ऑल, राइट? And उसको he was चांसेस good नहीं even मिले। at Inter, but the problem was injuries. And I think sometimes, it's just injuries, they just take you away. And I think with Jovetic, that's what happened. But we had a pretty interesting team, that Mancini team, and we finished fourth, with Jovetic, Ljajic, and Icardi. हम्म। Yeah, so. अरे नवाज तो बहुत अच्छा कीपर है यार, मतलब डेफिनेटली, मतलब टर स्टेगन हैज हैड अ वेरी गुड सीजन। आई नो दैट टर स्टेगन हैज बीन रियली गुड, लेकिन नवाज हैज डन दैट सीजन आफ्टर सीजन ब्रो। तो यू हैव टू, आई एग्री विद यू वहां पर। मतलब देखते हैं वेयर टर स्टेगन गोज। नहीं नहीं, पापू गोमेज भी तो थे। Yeah, and then he went to Atlanta. हाँ हाँ। तो अगेन या मतलब बेसिकली मेरा क्या था ना, मतलब 2000s में तो मैं देखता था पूरा सीरिया, क्योंकि उस समय फॉर वॉट एवर रीजन देन प्रीमियर लीग स्टार्टेड कमिंग मोर, देन ऑब्वियसली आई गॉट बिजी एंड देन लाइक सीरिया के सब बिग मैचेस देखता था सब, और आई डिडंट वॉच एवरी मैच एंड ऑल दैट। लेकिन हाँ, मतलब एक थोड़ा क्रेज चले गया था, दैट्स आल्सो एन ऑनेस्ट फैक्ट दैट आफ्टर मे बी एसी मिलान लूजिंग हिज चार्म। तो आई मस्ट से दैट भाई, एवरीवन कम ऑन, सेकेंड हाफ में। अच्छा अभी देखिए दिस मोमेंट में, नाउ आई कैन सी सर्जियो रोबर्टो प्लेइंग एज अ राइट बैक। वही है, एज व्हेन डिफेंडिंग हिज, दे गोइंग बैक फोर, व्हिच इंटर आर अनेबल टू रीड।
1-1. Goal. Oh man, goal! What a goal, bro! Barella out of all the people, out of nowhere. Where did that come from? Where did that come from? I'll take it. भाई मैं अभी बोल रहा था कि इंटर आर नॉट एबल टू डील विद सर्जी रोबर्टो. सर्जी रोबर्टो भाई दे ही काइंड ऑफ गेव अ थ्रो इन अवे, राइट? वाज थ्रो इन, करेक्ट? कहां से हो गया भाई? थ्रो इन लिया और एक बॉल, हु वाज इट? बास्टोनी. Pretty sure it was Bastoni, correct? What a finish! Yeah, it was Bastoni. It's not offside. It's definitely No, not offside. obviously not. Obviously not. Come on, I mean, we can score more goals, yaar. Come on. People is 1-1, and as things stand, yes, Inter are ahead of Barcelona. They need a draw. Remember, by Gavi tried his best, but I think यहाँ पर I don't think you can fault Barca, can you? It is just that But pass and the Ankit, I anticipation wish of we had Barella. taken our chances, man. We could have been like 2-3 goals up But from them. arguably मैं बोलूँगा this you have plucked out of nowhere, bro. Yeah, It's well. 1-1. Fateh, it's okay. You can smile, bro. It's okay. Now Oh, suddenly, bhai like sahab. conceding the next goal would be so heartbreaking, though. Come on, get it. Ah, This is like almost seeming like the Ramirez moment of Camp Nou, bro. Out of nowhere आ गया ना वाला गोल. I know that was against 10 men जब चेल्सी थी, but man, crazy. यहाँ पर येलो कार्ड मिला है फॉर एडन जेको और नहीं सर्जियो बुस्केट्स को. no. I think it's either Barella or I don't know who got it. Lautaro. पता नहीं, दिखाएगा अभी. हाँ, I think it's an Inter player for sure. For kicking the ball away. I mean, come on, that like the whistle went late. Like, oh, Goal! Oh my god! Very difficult technique, but for a Lewandowski, I would say that's a genuine chance. This match is so much fun now. Trust me, this match is there. Or Dembele, I must give it to Dembele by Pedri. Again, Pedri in that half space, in that forward line, he's getting there and getting his headers back. बहुत ही बढ़िया प्ले बाय पेड्री एंड डेम्बेले. बट लेवेंडोव्स्की भाई टेक्निक आपका है बहुत अच्छा, आप कर सकते थे बेटर, लेकिन कोई नहीं होता है. Again, people, what a pass! And that, I have to say, come what a on, play good Hollywood ball. pass that was for the Come goal, on, man. come on, Dumfries. Come on, man. This guy just, Ooh. I'm telling you, This is an open match now. Yeah. Well, tell me. I just hope that there is some EPL club that bids for Dumfries, man. Maybe he'll No, be better off. you know what I feel? Aslani might come in. Come on, bro. No. Aslani, I don't know. He's a very young player. I mean, I would love to see him there. I mean, this is where you, even if a young player makes a mistake, it's okay. नहीं, because Mkhitaryan, again, we spoke about Barca's goal. Mkhitaryan उस moment maybe he was found out, right? So I feel that Aslani might just come in because he's defensively Lautaro got that yellow. I mean, Lautaro has not scored in the Champions League. He scored that one wonder goal against Anfield at Anfield. Yeah, and you can argue that by मैंने बोला था Korea not being there is not working. अब maybe Korea's been a flop show anyway, Ankit. It's just नहीं, लेकिन first leg में if you remember Korea was making those runs which kind of counter got Barca backline padding. So यहाँ पर only thing मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए with Korea missing, I think the tactic has been that Deco is dropping back a lot of times, ठीक है, और Barella has been asked to kind of get there in the space, and that's why maybe that goal came. You can argue that too. You have to give it to Inzaghi also to some point. अरे ये 2-1 हो गया यार. क्या? नहीं Don't scare me, भाई man. मैं अभी ना स्कोर अपडेट कर, मैं बहुत इंटरेस्टिंग मैच देख रहा हूँ. You scared me. I thought your stream is ahead and I यार मेरा तो 1-1 ही दिखा रहा है मुदित. फर्मिनो कोई नहीं, गेम देख रहे होंगे ना आप. भाई हम तो बारसा वाला गेम देख रहे हैं अभी, लेकिन अपडेट कर देते. थैंक्स मुदित, बिग अप आपको एब्सोल्युटली. एंड अगेन पीपल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. लेट मी जस्ट क्लोज. I think, you know what, Barca have gone for a back four, bro, proper in the second half. How is that? Barca को लगा भाई we are anyway 1-0 up, चल जाओ. अभी देखो, I cannot see Sergio Roberto in midfield anymore. What a tackle! That's a definite yellow by Skriniar द्वारा. बहुत ही नहीं, डिफ्राई लेकिन बहुत ही
Pedri, man, he's a baller, I must say. Yeah. I mean, how lucky us, Spain, that they have all these players, Gavi, Pedri, and they Yeah. sorted for another decade. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे क्विकली। देखिए आदरी Come आप लोग on, मिस कर DiMarco, दियो। come on. डिमार्को Come नाउ इन स्पेस on, बाय द get a वे, proper काउंटर ball हो रहा in. है। Far post, come on. Just give me a second. Yeah, Oh, goal hoga. Oh, what an interception, bro! Is it Gavi again? It is. I am telling you, Gavi has had a tremendous kind of an effort defensively. Huh? You can argue that Alonso should be doing that. लेकिन again, would you expect no, Alonso to do that? तब वो no. expectations wrong है. मैं तो ये बोलूंगा. लेकिन Gavi has covered Alonso's ass इस moment में. और या coming to आदरी भाई, एक और it was basically totally not in turn. आप out of turn almost goal हो गया. थ्रो इन मिला था और सर्जी रोबर्टो डिड वेल टू गेट दैट बॉल ऑफ, और थ्रो इन मिला था इंटर को और बॉल गई बैस्टोनी को इधर लेफ्ट सेंटर हाफ। वहां से बढ़िया पास किया एंड एंटिसिपेट किया निको परेरा हु गॉट इन द बॉक्स समहाउ और Oh, स्कोर्ड गोल। ओ माय गॉड, Hakan. ऑलमोस्ट चालोनोग्लू भाई विद लेफ्ट फुटेड कलर, Ter Stegen saving it in this corner. What's happening, bro? Are Inter going to pluck a victory out of it or what? We bloody deserve it with the kind of chances that we've had so far, man. Come on. पी के चाय पी रहा है। पैब्लो एस्कोबार शोइंग हिज टू कलर्स लेफ्ट बैक। हाँ वही है, मतलब वो है नहीं यार। Oh, हाँ, व्हाट अ सेव मैन, no. व्हाट अ सेव टर स्टेगन। आई एम टेलिंग यू, नाउ आई एग्री दैट टर स्टेगन अगर ये फिनिश होता है टू बारसा 2-1 और 1-1 होता है, टर स्टेगन डिजर्व्स द मैन ऑफ द मैच एंड गावी एज वेल। भाई दोनों ने बहुत ही अच्छा किया है। आई एम टेलिंग यू, दिस हेडर पता नहीं किसने मारा हेडर, लेकिन दैट लो, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सेव ब्रो। जो लेफ्ट साइड जाता है इफ यू आर नॉट अ लेफ्टी, और दैट बेसिकली इज लो एंड यूर डाइविंग। यहाँ पे लकली डिमार्को ने कर दिया इंटरसेप्ट। बहुत ही ओपन गेम हो रहा है, बढ़िया गेम हो रहा है, लेकिन हगा है यहाँ पे। किसने हगा है भाई? Hakan. हकान ने हगा है एंड दे दिया। No, that was चलो Mkhitaryan. Mkhitaryan ne haga tha jo as. अच्छा, And yeah, हकान you're अभी right. गया है। Mkhitaryan maybe, like he doesn't have those Yeah, legs for the night. defensively he's not a Yeah, defensive yeah, yeah, midfielder, right? So you would rather want a defensive midfielder who can just get your clearances। and अभी आपको चाहिए ना, मतलब you don't want to concede a goal right now। I think अगर अभी concede होता है ना, I can't see Inter coming back। सच में what a ball bro, man, what a baller man। Pedri is a baller, what a baller bro Pedri is, trust me, wow। Yeah, under Ter Stegen has been in brilliant form। रफीनिया यार, हाँ रफीनिया भी यार काफी, मतलब गावी एंड रफीनिया काफी किए यार डिफेंसिव वर्क। दैट इज अंडररेटेड इन दिस मैच इन माय ओपिनियन। यू हैव टू से बिल्कुल। by the way, I hope Darren आप you're feeling better। how are you now? I know that you met in an accident, but what a save man। कौन था? डम्फ्रीज ही था शायद, जहां तक मुझे दिखा, जो हेडर मारा। भाई what a save man, that was one of the most difficult saves for a goalkeeper that can be। बहुत ही बढ़िया सेव एंड यहाँ पे वापस this बॉल game आते हुए just बारसा। reminds me of Conte's first season, when we played so well at Camp Nou, had the chances, and then we lost 2-1. Like Luis Suarez turned on the style, and where is he, man? I miss him so much. I think he's gone back to, हाँ, like, he's gone national में। yeah, Nacional. So I miss that guy so much, and I don't know. I ओ wish. डेम्बेले मैन यहाँ पे फ्री है। अगेन मैन, यू हैव टू गिव इट टू गावी मैन। गावी हैज बीन एवरीवेयर। What a mistake again by DiMarco. Oh no! Again. Oh, बच गया। It was like moment was gone, bro। It was almost like taking a gamble। भाई Yeah. रफीनिया with a nice cross, but well done by Skriniar, I believe ना, Skriniar ही था हाँ। अलोंसो गेटिंग इन मिडफील्ड ऑलमोस्ट। अगेन पीपल, अभी यार सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है सेकंड, मतलब एक चीज बताइए, अगेन सर्जी रोबर्टो तो लग रहा है फाइनली वापस मिडफील्ड में आ रहे, तो व्हाई डिड बारसा स्विच टू अ बैक फोर टू बिगिन द सेकंड हाफ? आई डोंट नो, मतलब आई हैव नो आइडिया। मे बी आइडियली दे शुड हैव जस्ट स्टेड व्हाट दे डिड। आई नो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक That अ could have सेट been पीस an जो own गोल goal. आया। अच्छा, पीके का होता क्या?
लेकिन कोई नहीं, Come मतलब on, टॉस please सेकंड. do something. Do something. Do Oh, that's a something. very dangerous tackle. What the hell, man? No Why? man, This guy is such a. no man, what an opportunity, bro. You should have. भाई उसको क्या Take करना the चाहिए था ना shot. उसको. Oh my god. What a chance. And PK, bro, if he had missed that tackle even more, that would have been a outright red and a ban. Lekin Alonso, people criticizing Alonso, yes, he's been bad. I agree. Why this was an extremely important interception by Alonso with his right foot. Remember, वो left footed है. Tuta red card. Oh my god. Who's Tuta? Tuta is a defender who plays for Frankfurt, bro. He's a decent defender. Man, as a neutral, no, I've loved these both legs. I must say, I've loved it. These are some of the nights that you wait for, as a neutral to wait to Attack! watch. Oh god. By Alonso again in the right place. Whoa, he wasn't meant to be there. Remember, he's not a right centre back. Alonso was there. Oh my god, this game is by मजा आ रहा है मुझे तो. मतलब this is like wow. I don't want this game to end. That's how much I'm liking this game. And No, उसी I'll बात take पर a भाई. 1-1 right now. Please end it right now. I know फतेह एकदम उल्टा बोल रहे. लेकिन to be honest, you've had your chances, bro. I'm telling you, you had your chances. We should have probably been 4 or 5 up, man. Come on. तो I mean, 3-0 हो गए. Oh my god. एटलेटिको मैड्रिड गई भाई मुदित. एटलेटिको मैड्रिड टाटा बाय बाय खत्म. Looks like Atletico out? आउट Out of नहीं है that? टेक्निकली, लेकिन पोर्टो गेटिंग 3 points is also big ना आज. So how एटलेटिको many points they does Atletico have? they have got just 1 point ना आज. They drew to Brugge, so they have 4 points. After पोर्टो 4 का भी 6 matches, हो they have जाएगा. 1 point. मैं दिखाता हूँ आपको. देखने मत दीजिए मैच आप लोग मुझे. नहीं, आराम से बाद में देख लेंगे यार वो तो. ये रहा टेबल है, देखियो. Come on. ओ मैन, नाइस कटबैक होना था, लेकिन भाई हु वाज दैट गाय हु वाज देयर इन दैट मोमेंट? प्लीज टेल मी एवरीवन, जो हु वाज देयर डिफेंडिंग फॉर बार्सिलोना इन दैट मोमेंट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन इट वाज अलोंसो और वाज इट पीके? कोई नहीं. PK giving Malang Star vibes. Actually, yes, you are right. PK has been the weakling, not Alonso, bro. Alonso ka to, if you're expecting pace, that is the wrong expectation. Again, Sergio Roberto is a free right back who's not there. Goal 100%. Oh, goal! Oh my god! What a terrific finish by Lautaro. People, man, get in. Fateh बोल रहे भाई वहां पे. Let's get more. That is absolutely bonkers. This is the champions. Yes, I know Barca fans, commiserations के लिए भाई सच में मतलब I am a neutral and I am loving it. The reason being that it is an end-to-end football. बहुत mistakes हो रहे हैं, but at the same time, that quality, that is what is changing. अब Inter they didn't finish well, but again you would say against the run of play almost, but no, Inter have been doing that. That's a tactic. Wow. I didn't expect this. भाई यूरोपा. Sorry, आने वाला लग रहा है. But no, that's too premature. I think Barca still have a lot to give. That's too premature, Ankit. Fateh, come on, bro. Come on, you can't be so modest. Inter का tactics have actually worked better. Let's be honest about it. In second half, first half में Barca was very good. I'm not denying it. लेकिन second half it was much better. But again, भाई, I have to thank especially Darren and Mudit भाई. I cannot thank you guys enough, क्योंकि वही है, सब लोग भाई बारसा का गोल खाए तो सब लोग बारसा चैनल पे चले गए. जैसे हमको बारसा आता नहीं कुछ भी बारसा के बारे में. मैंने ऐसे ही देखा 25 साल बारसा. फतेह ने ऐसे ही देखा है टाइम पास इंटर. लेकिन यहाँ पे क्रेडिट goes where it's due. Because yes, Frankie coming in, that's something that we have seen. तो okay. अरे शाउट आउट बिल्कुल अभिषेक को भी, एब्सोल्युटली भाई. अभिषेक भी यार, come on Lautaro, come on. 100% गोल है. 100% गोल है. इफ भाई अगर इस मोमेंट में पेस होता ना कोई, आई नो इट वाज बेसिकली, दैट्स अ प्रॉब्लम. जैको के पास है नहीं. ओ माय गॉड, the only person who... yeah. Man, Barca are in like
They're nowhere, bro. Where are they? Where is the defensive element? And everyone criticizing Alonso. Look at that defensive clearance. Everyone. Come on, DiMarco, what are you doing? आपको पता नहीं आपके positions. Alonso is the only guy who kept faith in his position and is there and who cleared it. मैं वापस से बोल रहा हूँ Alonso के defense में. लेकिन Dembele on a counter now, and this game is doing madness. In my opinion, Inter should just keep their shape. I don't think they should go for it. Counter attack. बिल्कुल 100% Darren, 100% agreed with you, bro. मैं it bores you to death, at least for me, bro. I don't like possession football. I've But told it so many times. wait, Ankit. But in this second half, where is our counter attack? Like we've been holding the ball and creating. Not counter attack, but you know what I mean. Like in terms of direct football. I'll put it that I way. criticized Simone Inzaghi. He can still lose this game. He's lost. I've seen him lose from his Lazio days games. But then this, he gets the things done. Yeah, and if Barca wins, अभी से अगर Barca जीते तो all credit to them, bro. Yeah, this is going to be a great match. But this has been a fantastic match so far. 25 minutes left. And yes, for people who are joining late. This is what I don't get. It's just a like for like. Defensive. नहीं मेरे ख्याल से ठीक है भाई. आपको you are good with a draw. You are getting a win. Why not take it? No man, you make these changes, you lose the game 3-2. You give the initiative away. Why? भाई लेकिन DiMarco has ran his socks off, bro. नहीं. अच्छा, don't tell me he's coming on the left hand side, Darmiya. Yeah, exactly. हाँ, that is a bit too negative. अब वो थोड़ा tactically change हो रहा है. Why should you change the tactics when it's working? I thought like for like होगा यार. I thought it's basically going to be Dumfries. But no, DiMarco going off people. और यहाँ पर हो सकता है that Inter are going to sit even more back or Barca, yeah, maybe that will be against Barca. लेकिन they are maybe going to the shell too much. What a ball, bro, by Dzeko. Oh, Dzeko dropping back is one of the best tactics in this match. मैं बोलता हूँ. आप लोग देखो, Dzeko has not been touching the line. He's dropping back. He's almost playing like a Firmino of Liverpool. और उसके first touches pass बहुत बढ़िया हो रहा है. Again, Alonso on the wing almost. Now looks like they're going back to back three. That is Barca I'm talking about. And Alonso with the ball. 1-2 का hope करे, लेकिन pace नहीं है उनके पास. Dembele has been important, but Ansu Fati अब देखते क्या करते हैं अलग. यहाँ पर देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं. दिमाग में क्या आ रहा है. काउंटर लिवरपूल 3-1 हो गया यार यहाँ पे. अच्छा, आई मिस्ड इट. चलो कोई नहीं भाई. लिवरपूल विनिंग और यहाँ पे गोल होने वाला था मुझे लगा, लेकिन डायरेक्ट कैचिंग प्रैक्टिस दिया है भाई डेम्बेले ने इस बार. बट कोई नहीं. I don't know, like DiMarco showed he was getting owned defensively, but then going forward he's actually, no, to be very honest, आपको DiMarco चाहिए यार. मतलब your tactic Gozens, man, he doesn't have any faith in Gozens. क्या? He doesn't have any faith in Gozens at all. अच्छा, nice turn. Lucky था थोड़ा, फिर भी nice turn I would say. Is it a penalty? No, it's not. No. But see, again, we were dominating this game and now we've again just decided to sit back. I don't. उत्कर्ष भाई. उत्कर्ष तो खुश होंगे भाई. ये आने वाले memes. Thank you Utkarsh for reminding us. Again, मैं ऐसे Chelsea fan बोल रहा हूँ भाई. Don't take it otherwise. The fact is, I'll be happy that Rafinha and Christensen get to Europa League अगर ये होता है तो. लेकिन of course, Xavi after Barcelona as a club, man, they've invested so much. Imagine the trolls they'll get, bro. Trust me. But you have to give them time. You know, like why is Dumfries, is he injured? Oh, head injury, right? Or is it gamesmanship? I don't know. Oh, no, clash of heads with Fateh. No, but I'm sure that Ankit has really enjoyed this game. Like it's been one of those classic Champions League group stage games. Yeah, I must say, मतलब मैं तो neutral हूँ. Yes, you can say, but again, just to kind of say everyone, भाई मैं AC Milan का outright. I'm not a fan of AC Milan. I have a soft corner of AC Milan, which is a little bit more than soft. I know. लेकिन हाँ, I would not be right to call me like a big fan of AC Milan. Not a big fan of AC Milan players, AC Milan history. Yes, but definitely I support them whenever possible. लेकिन Inter doing this, in my opinion, can only help football. सच में बोलता हूँ तो ये कोई दो राय नहीं है. मतलब एक होता है ना, you have a team which last season, again हम भूल जाते हैं, it was the only team which beat Liverpool at Anfield. So you have to give it to Inter.
Yeah, we are very, like, Padza Inter, very crazy team. Sometimes we'll do some very stupid shit and lose really badly, but then sometimes, we can put on these performances. I mean, consistency probably we don't have, but always up for a fight. Oh, ho, what a tackle, bro! Inter are up for this game. I'm telling you. Calhanoglu is like, oh my god, nahi bhai. Leva has been really. Messi is good, bhai. Can you argue that Leva has been bad? Like, Oh, 2-2. offside. हाँ 100% offside यार. मतलब दिखाया था मुझे. I think वो क्या करना था ना? I think the लेवा को बॉल नहीं लेना था. He should have left it for the person who was there. Let me. I think Roberto था. हाँ Roberto. He made a mistake. Actually, he didn't realize that. देखिए, oh man, Lewandowski, man, what a blunder. Trust me, Sergio Roberto would have scored that goal. Do you agree? Yeah. That is a blunder. Sergio Roberto wasn't offside, people. Sergio Roberto उसके पीछे था 2 yard पीछे, and no inter defender was there. And he was having the momentum. I think Lewandowski, I will actually call out Lewandowski इस moment के लिए. I know Mudit, you're a fan. I know Messi is good. आप भी Barca fan हो, लेकिन by Lewandowski, you expect better being a senior Oh, person like come him. on. ओहो, कट बैक थोड़ा सा ज्यादा हो गया लोटारो के लिए. यहाँ पे But काउंटर कर रहे हैं सर्जियो रोबर्टो अगेंस्ट स्टार्टिंग. भाई व्हाट अ मैच सर्जियो रोबर्टो हैड डिस्पाइट देम लूजिंग. आई मस्ट से भाई ही हैज हैड अ फैंटास्टिक गेम. आई हैव क्रिटिसाइज्ड बहुत बार सर्जियो रोबर्टो को, लेकिन भाई डेम्बेले, मैन व्हाट प्ले बाय डेम्बेले फाइनली. एंड यस, गोल आने वाला 100% गोल. Again, wrong decision by Lewandowski. Lewandowski should have crossed the ball to Fateh. Fateh was there free in space. What a match, bro. What a match. मजा आ गया यार मुझे तो as a neutral watching this match. my heart is sinking, man. What is even Yeah, why going does it help on? football? It helps football, Lou, man, because of the fact that Inter Milan have been shit in I know Need, Fateh is here in the Champions need, League, and the fact need that we have money. another team who No, is but we coming up also again. we badly need the Champions League revenue. If we can just get Yeah, that and money. and for Serie A, do you want even as a neutral? I know Luman is a Manchester United fan. Much love and respect to you. By the way, Balde coming on for Alonso and Ooh, Kessie coming on. This time, the भाई can. थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी आ गए Kessie. Back from fitness. By Sergio Roberto going off, I can understand. He's been running his socks off. But coming back to that point, वही है. देखिए आप Yeah. अगर स्पोर्ट देखते हो तो एक ही टीम को आप देखते जाओ ना, और 4 टीम्स को लो आप. बाकी टीम्स also you want them to do well. मेरा सिंपल सा No, but पॉइंट था. That's football for me. and for us, the reason is that if we can pass this group, finally, passing a group of death. I mean, we've had that, I think, so many times, and we always sort of falter, and we've always had been very unlucky. So if we can be lucky one season, why not? But I think based on the way that the chances that we've created, I think we've deserved to at least be ahead. इमेजिन भाई, मतलब नेक्स्ट इज एल क्लासिको पीपल. यस, बाय द वे यार, फ्राइडे को हम कर रहे हैं एल क्लासिको प्रीव्यू लाइव, और वी आर हैविंग अ स्पेशल गेस्ट, सो प्लीज प्लीज वो भूलना मत. वी आर हैविंग इट ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. इमेजिन बाइंग द होल वर्ल्ड एंड फिर भी नो यूएल, आर्सेनल विल विन इट, नो कैप. वेल, लेट्स सी. मतलब वो बात की बात है मुझे, लेकिन सच में अगर बाय चांस दे मिस आउट, अरे मिकाइल मैन, इट्स क्रेजी भाई. स्कोर अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको. बार्सिलोना 1, इंटर मिलान 2. That is what it is. Lekin big up to Mikhail, absolutely our almighty coach. Yes, and I But think, great. it's been a long time. Taran and Mikhail, two guys that I think are the OGs of, with you. हाँ, So actually, it's always good to see them. Taron, Mikhail, Shrey, Yeah, Fateh, Shrey. भाई हमेशा. तो Kochila, I don't know if you met Kochila. I think you met him. Yeah, Kochila, yeah. Chelsea perspective भी. Hello to Pranav. Tell me a better left winger than Neymar. I'll tell you it's Antonio Rudiger. Oh भाई साहब, कल देखा था Antonio Rudiger का गोल. The way but is he okay? उसका बहुत, मैं एक्चुअली दिखाता हूँ, पिक्चर है मेरे पास शायद. भाई दिस गाय इज नेक्स्ट लेवल ब्रो, आई मस्ट से. एंटोनियो रूडिगर. नहीं, बाद में अभी देखेंगे पिक्चर. बारसा might equalize from this corner. कॉर्नर है नहीं यार, अभी कॉर्नर. आई थिंक दे नीड टू But जस्ट what's कंटिन्यू व्हाट the दे डूइंग deal with बारसा. Ankit? What is the deal with Frankie De Jong? Is he not a starter? Was he injured? What happened? Yeah, he's not a starter ना अभी. मतलब to be honest, Gavi Pedri has kind of displaced him from the team also, you can say. लेकिन जो समर में हुआ था ना, उसके बाद Frankie De Jong is not starting anymore. It's like basically because he didn't play every game of preseason as a starter. He played in games,
but as a centre back pre-season. So he didn't have the best of pre-seasons. I'm guessing one of the reasons. और ऐसे भी गावी पेड्री मैं तो बोलता हूँ fair enough. They are Oh, great players. अरे एक गोल होता बच गया यार, बच गया. मतलब you can argue that taking of Alonso is questionable मेरे लिए, क्योंकि Alonso when it comes to set pieces and all that, right? He's actually very important. But man, what a game! What a game of football, bro. सच में brilliant game. yeah, he was offside. You know what? Coming back to the Lewandowski goal, no, it should have been him leaving Oh it to my, he's Sergio taken Roberto. Hakan off. What? He's changed the formation. What the hell? Gozens. What is he doing? All defenders. सबको ला दिया भाई. कौन है असलानी क्या है कर क्या? रहा है नहीं यार कौन ये है भाई? आदमी? अरे नहीं बेलेनोवा. हो क्या रहा है See, यार ये हो. no man, he's going to lose this 3-2. Hey, you don't ये do पूरा these पूरा things. नेगेटिव टैक्टिक्स ला रहा है बेसिकली अपना. कोई नहीं मतलब. I don't know. I mean, Yeah, is Belanova and coming on Villanova for? has hardly played in the league. I mean, coming from a relegation battling team, I don't know what's going to happen, man. Like, I genuinely do not know. मतलब basically he's playing a back seven. simply put, Gozens or Belanova दोनों coming. Remember Belanova can play on the wing, right? Proper. But you need, Hakan was playing so well, man. Like, Hakan was so good. Like, But what they are tired now. Maybe that's what. oh, come on, Ankit, you don't change the formation like this when you. Happy for Inter Milan. Javis Chiquitaka working. You know, very honestly, Mikhail, it's been an end-to-end game. ऐसे में बोलूँगा कि Inter have been just sitting back and hitting on the counter. It's been an end-to-end game. There have been mistakes. Tactically, Javi got nice cross. लेकिन Lewandowski again not for his standard not doing well in my opinion. लेकिन Javi first half में काफी अच्छा किए थे. Now second half में I think somehow Inter have taken it to the next level. Like what is the difference in the second half in your opinion यार? ऐसा क्या हुआ है second half में? Liverpool score again, by the way. I don't think we changed formation or anything. I I think. think more than that, I think Barca went negative थोड़ा. Second half के शुरू में I saw Barca का जो So I Sergio think Roberto was really well ना. Hakan really came into the game too, and our midfield Yeah. for those 20 minutes, the way we were winning the ball higher up the pitch by pressing them up. That's why I don't understand. Why are we now willing to sit back? I mean, they're going to come forward. You go and attack and get another goal. Like, I know it's not easier said than done. It's Barcelona, but at least, if you have to lose the right way. Like, I don't know. Yeah, See, I think it's यहाँ पर experience नहीं देखा अभिषेक. I think basically he's just gone tactically, and I agree with Abhishek यहाँ पर. I think यहाँ पर yeah, more than tactics, see, you need the experience. but that is what I'm saying. Like, an Italian coach knows how to defend it, but that doesn't mean you just put on every defensive person on your on your bench and take out every attacker. Like there is, but again, I mean, am I being too critical of Simone because we are winning? I don't know. I mean, I think we have to wait हाँ for यार, the final score. I believe you are. By the way, Darmian is looking injured. But imagine if it's a real injury, man. Imagine Simeone how he feel at this point. But or maybe it's just That's a gamesmanship. foul. That's a foul. Why is that not a foul? I think foul नहीं दिया क्या? हाँ, there's 100% a foul because he hit the guy clearly after. Yellow as well. येलो कार्ड है, इनफैक्ट येलो कार्ड है. लेकिन भाई सब लोग अगेन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक्स. भाई लाइक्स कर दीजिए. आई नो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है ऑफ द गेम. बट रिमेंबर देयर आर 12 मिनट्स लेफ्ट. अभी भी भाई 65 लाइक्स हुए. कैन वी गेट टू अनदर 100 लाइक्स प्लीज? कम ऑन. मैं बारसा खत्म हो गया. रॉन्ग. यू नो व्हाट आई वुड से, व्हाट रियली चेंज्ड द गेम, इट वाज सिंपल एज दैट. बोलू सच में, इट वाज Bastoni's pass and Barella's goal, bro. Simple as that. It kind of, somehow egged on, Salah again. Oh my God. ये क्या हो रहा है? 5 हो गया है लिवरपूल. भाई रेंजर्स का हिस्ट्री खत्म हो गया यार. Ankit, do you think, considering how big Lautaro's goals have been? I mean, he scored at Camp Nou when we had Conte. That early goal when we played so well. He scored this great goal today. He scored a great goal at Anfield. Do you think that we'll probably get a 100 million bid next summer? Maybe even from Barcelona? Who knows? Yeah, as in he's Argentine as well, na? There's a lot of history right there. So
I know that a lot of subscribers I know they're Lautaro fans, being Argentine and Really? Barca fans. I know that. Oh wow, what a pass! What a ball, bro! Goal. आज वही है पास है ना यार गलत Why did he decision. pass? Terrible decision. I swear this guy will get trolled for this. Offside है क्या लेकिन? अरे luckily offside है for him. It was offside. Luckily it is offside. Why didn't he play in Fatih? But 100% offside. if it was offside, okay. But then, wow, he had the guy open. Oh yes, absolutely, bro. Abhishek ko big up Ankit, yaar. Absolutely. imagine putting defensive players on and then getting caught on the counter attack. That's limone ball for you. Offside. How could Dembele not see Fatih? Yeah, that's what I was thinking. And that's what the problem with Dembele is as a player. आप देखिए मतलब हम एम्बापे को क्रिटिसाइज कर रहे थे कल. I can't see Mbappe doing this rubbish what Dembele did. I have to say that. Anyway, offside है. Again Salah. Man, by the way, Mudit, आप बोल रहे हो Victoria Pleasant has scored 2 goals, bro. I just noticed that meanwhile against Bayern Munich. So 2-4 हो गया बहुत ही interestingly. मतलब can Victoria Pleasant come off in the last 8 minutes and get a draw against Bayern Munich? I don't know, just calling it for the group. लेकिन हाँ पोर्टो 3-0 up है और yes Liverpool are there very much 6-1 हो गया है. Salah in form. By Liverpool fans will be happy when Salah comes in form by अलग ही level. Remember he didn't start. Oh my man, what is even going on? Oh my god. भाई मजा आ गया भाई फतेह आज तो गेम में सच में बोल रहा हूँ. I'm not saying again I'm hating Barca. Goal. Oh my god, what a scrappy goal. What a scrappy goal at the end of the day. Out of all the chances that they had, Lewandowski finally scores and by it was a deflection. And you can make out unfortunately for Fateh, but 2-2 hai. And can Barca get one more goal? For their sake they need a victory. Remember Inter का अभी भी बोलता हूँ मैं फतेह अगर ड्रॉ होता है तो not bad but highly negative. The substitutions he's made, he's given them the whole initiative, so they will score. Yeah, full initiative is Barca now. There's no two ways. वो लिटरली बाकी नहीं यार इंटर में अटैक करने के लिए. You can almost say that. I 100% agree with you because the kind of substitution you make, you take off Edin Dzeko, fair enough. I can still understand, but why get on some as in why take off Hakan? Gozens. Why take off Hakan exactly completely by bringing on your possession is gone. जो भी possession मिल रही थी वो भी खत्म हो गया. Look at Fateh, बिल्कुल अभी मुदित हंस रहे. Oh my god, sorry Fateh, but that is football for you, bro. पहले भाई we had the opposition laughing. Now the way around. Finally, Messi is good. Lewandowski scores, and when Lewandowski gets to scoring form, you know what happens. So Inter fans, trust me, Fateh, nervous energy, and अभी यार आप changes भी नहीं कर सकते. But the changes that have been made have totally taken our attack out. But anyway, if we lose 3-2, we won 1-0, what happens to the goal difference? Like, क्या? If we finish on goal scored will come into picture, no? So I think now, अच्छा total goal scored आएगा तो I think group में जो हुआ है ना, how many goals have Barca scored? अच्छा वो भी same है यार, literally same है. Oh my god, this is like crazy, bro. Let me see. Just give me a minute. लेकिन what a ball, bro. I think यहाँ पर miss कर दिया है. Dembele, he's had a decent game. Otherwise, बहुत ही हगा है इस क्रॉस में. लेकिन if I'm not wrong, Lewandowski, all of all people. Sportsnet Nathan, उनको भी shout out है absolutely भाई. अपने हैं. No, they can still go through. I mean, if they win their next 2 games, why not? Even of course they can go through. In fact, ऐसा कुछ नहीं है कि they can't go through. But अगर हार जाते ना, chances will be even less, na. So simple as that. But this was a game that we should have won. Like it was there for the taking, Ankit, with the way we were playing. I mean, you don't. Yeah, that's the thing I don't understand about Simone Inzaghi. Why does he always do this? Like even in the derby that we lost to AC Milan last year, he made the changes and then we lost. Like. See, but at the same time, you can also argue that Barca also had 1 million chances, no? No, come on. Their chances were not as good as ours. Come on, man. As good as हाँ मतलब वो बता सकते. लेकिन for Barca's or Lewandowski's technique, I'm saying, like if you see, taken Hakan off and he's kept old man Mkhitaryan there. Can't make it's this up, total rubbish. Yeah, I don't know. Or him getting a yellow card. I think Mkhitaryan. What I feel है क्योंकि he took off Dzeko. Remember, so Mkhitaryan can play as a second striker. So it's almost like Mkhitaryan in your counters can get you the goal or be in that position. How is he taking Barella off? कौन कार्बोनी आएगा कौन आएगा? Aslani?
I think maybe he'll get a youngster on again, knowing him. Serbi. Oh, What full is negative, going bro. on? Full negative. They, मतलब, but draw is good. Let's say Utkarsh बोल रहे हैं ना, draw is good. So I No, think draw is as good, things but you, stand, these changes you don't get a draw, man. What is he doing? Like, no, I think it's now तो मतलब he's showing the white flag यार, simple अभी कि अभी momentum is all with Barca. हम basically हम defend करेंगे, हम time waste कर रहे हैं, हमें चाहिए draw. वो है basically अभी जो हो रहा है. Height इसलिए अचरबी आया ना. Height and experience is what Acerbi brings. no, but you know, Oh, what a technique, bro. What a knobhead. Yeah, 100% Abhishek. यहाँ पर I totally the agree with everything that Abhishek has and been in saying. fact, you can also argue, Fateh. Yes, I understand Jeko being Jeko at this age, and he's been playing like crazy because of the fact that you've had injury to Lukaku. But bring on Aslani, put Mkhitaryan ahead with Lautaro, but don't change your हाँ, shape, don't change yeah, your. and no, even मैं तो बोलता हूँ Jeko भी. What I'm trying to say यहाँ पर Jeko भी he's not run much, right? मतलब Yeah, I अब देखो, mean, no, he's been okay, dropping back I anyway. understand the effort was there, but I just see a Barca winner coming any moment now. Like maybe even in the last kick. Yeah, exactly. You can't be this defensive, especially when you had the initiative. Like the moment we took the lead, he gave them the initiative. By making that Marco change, and he does that all the time. Like it's not even like, see, here it comes. Oh, what a 1-2, bro. लेकिन well done यहाँ पे. I think who was Well it done to defending? Dumfries. Yeah. Dumfries, bro. Um, who would you take in round of 16, Napoli or Liverpool? Actually, both दोनों ही difficult है यार, सच में बोलो. In For Chelsea, European night, Anfield. You can't play Liverpool. Like, who? Like, as in, नहीं नहीं, he's just asking generally whom would you prefer? no, I think Napoli is a good team, but they still have defensive frailties. There are still games. हाँ. If you see in Serie A, there are still games. So I think yes, they've done very well so far. And Kvicha is a world class talent in the making, but I don't think it'll last. So I think, yeah, Napoli probably depends on the kind of team that they get, but at most they'll make the quarterfinals at And most. even But madness happening at the Tottenham Hotspur Stadium with 3-2, especially with them being one man down, right? Crazy, bro. How did Frankfurt, they yeah. score? Frankfurt. 1 second. Yeah. They had Tuta sent off at 60th minute. Oh my god. Anyway, let's enjoy this match as well. और यहाँ पे भाई Ferran Torres, what can he do? Oh, that was well done by Ferran Torres, I must say. Yes, people, भाई जो भी आया भाई लाइक करते जाना स्ट्रीम को. मैं टारगेट डाल देता हूँ लाइक का. प्लीज कंसीडर लाइकिंग द स्ट्रीम. नॉट फॉरगेट दैट. और याद रखिए, लाइक आई एम सेइंग, बाय द वे, आई वाज ट्राइंग टू गेट हु एम आई आज रात को, फॉर पीपल वंडरिंग. अनफॉर्चुनेटली इस बार अचिंत अवेलेबल है, लेकिन गुरुजी अवेलेबल नहीं है. क्या ही तो बोलूं यार, मेरा लक. See, I think we're too stretched, man. We are too stretched. Dembele, But nice cross. Onana, nice waste catch. get- waste as much time as you can. But come on, what is he doing? Oh, really? But we have nobody. Oh my god! Please! Yeah! Oh man! Yes! Is it? Yeah, it is a goal. Goes in out of all the Defense. people. Oh man, I can't believe it. What a moment for Fateh and all Inter fans. Trust me. Look at the celebrations, bro. This is like almost they won the cup, and for obvious reasons. Because trust me, Absolutely. it was totally negative tactics by Simeone Inzaghi. But Again, it Ankit, was about taking that moment. even then, I think we've deserved to win this game with the chances that we've had. And for the guy who said that we'll be going up and then we'll score 4 goals, Messi is GOAT or whatever, up yours, man. Up yours. Wow, man, I can't believe it. This has happened. I can't again, Malab. I know it's all about the emotion. It was all about the passion. And Fateh, I have to give you an inter, man. I have to give you a thumbs up यहाँ पर, because you have done like वही मैंने बोला. This is the feel which is giving is exactly the feel which I got when Ramirez What a- scored that goal. It is that feel, that I kind of was match. saying, Onana waste time. Look at him to have actually had the vision to make this pass, and then Lautaro, as always, keeps his cool. Like wow, like this is what I'm saying. This is what Dumfries doesn't have on that wing. But wow, What a finish, bro. Gozens, all the pressure in the world. Trust me, Ter Stegen has been good. Like in Gozens, you have to give Gozens that. You have to listen, give all Gozens the credit in the absolutely. world, all the credit in the world. Ice cold German press. What is that?
अरे हेया कैसे हो भाई? नाइस टू सी यू भाई, बहुत दिन हो गए देखा नहीं आपको, लेकिन नाइस टू सी यू अगेन। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक्स। और यस You अभिषेक, better not अरे end गोल, 3-2. एक और, डोंट टेल मी इट 3-3। No, please This no. is one of the Champions League classics that you're seeing, people. Remember this, it'll stay for years together. वैसे बैटरिंग गई। अरे कोई नहीं अभिषेक यार, पैशन है, होता है। लेकिन मैं भी यार, कम ऑन, आई डोंट थिंक एनी टीम इज बेटर एनी अदर टीम। इट्स मोर लाइक it's been an end to end football, bro. No, मतलब but yes, people might say that counter है, एक पास है, लेकिन भाई that's part of football. Let's be honest, that is a yeah, tactic. yeah. European Six nights minutes. are all about tactics, bro. How are we going to survive? Like, and look, Barcelona is such a great club. Like, it was 6 minutes, and then they changed it all against PSG, if you remember. And like, I followed Barcelona since the days of Rivaldo, Kluivert. Yeah, you You know, did exactly. We did, man. That's what I'm trying to say from exactly. that time. So That if you know something about Barcelona, it's comebacks, and people will say, okay, Barcelona is not, like they're doing well in the league. I don't know what happens in this match, but trust me, I think within the next 2 3 years, you'll be seeing another great Barcelona very soon. Like that. पेनल्टी मिस्ड इट सीम्स, वन आवर बस बोल रहे हैं वहां पर। एनीवे थैंक्स मुदित, शाउट आउट आपको। एब्सोल्युटली यहाँ पर बारसा, इट्स ऑल बारसा ब्रो। आई एम सीइंग अ गोल कमिंग, 6 मिनट्स ऑफ स्टॉपेज टाइम है। आई एम सीइंग अ बारसा गोल कमिंग, एज मच एज फतेह विल नॉट लाइक मी सेइंग इट, बट आई एम सीइंग इट कमिंग। No, I सर्जियो think रोबर्टो हैज बीन द मोस्ट। let us have this win, in peace. 3-3. गोल हो गया। Oh man, it's a goal. This is a crazy moment, and yes, Fateh is not happy at all right now, as you can make out. But bhai, I saw it coming. It was all Barca, man. It was like koi PK out of all the people, is it, or Lewandowski? This is crazy, bro. Why were they letting Barca have that? Like, I didn't get that at all. Why? What a ball, I must say. What a ball that was. And yes, Lewandowski with a brace. What a world class header. But where was the defense? Where was the guy who actually came on? Remember, Yeah, Bellanova Belanova. came on for a reason. No Where reason, and was that's it. Dumfries and Bellanova? Though they had two right backs technically in this moment. Where was Dumfries? Where was Bellanova? Where was the centre back of Inter Milan? Please tell me. De Vrij. Sorry, Skriniar in this case. It is 3-all. Yes, वो गलती नहीं है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे. This is craziness. Will Inter come with a fourth goal? This is one of the all-time Champions League classics. I cannot even be joking यहाँ पर. Offside है अभी, और अभी अगर Inter do not maintain ना, I won't be surprised if the Barca goal, another one, I'm telling you. Yeah. I was just talking about that remontada against PSG. It happened in injury time with I think 6 minutes or whatever, 5 minutes. So yeah, यार what can भाई you do? बैंटर चल रहा है यहाँ पर, आई नो, मजाक मजाक में चल रहा है यहाँ पर, आई नो। शायद भी दे रहे बैंटर, बट कोई नहीं भाई, बढ़िया लिवरपूल के लिए मैच रहा, लेकिन यार नहीं, मूड खराब हो गया। नहीं यार, मूड बहुत अच्छा मैच है यार, अभी भी द गेम, दे थॉट द गेम इज डन। मैं तो बोलता भाई, हे यार, दिस गेम शुड नेवर एंड। दिस इज सो मच एट द न्यूट्रल इट्स गिवन मी ना आज। मतलब वो मोजो इन फुटबॉल गेटिंग बैक, यू हैव टू वॉच सच गेम्स लाइव टू गेट द मोजो बैक इन फुटबॉल, इफ एनीवन Oh, वांट्स दैट। oh, 100% ये होने वाला है। लेकिन नाइस इंटरसेप्शन वहां पे इंटर का, लेकिन नहीं, इट्स अ नाइस टर्न। आई थिंक अगेन फाटी हैज हैड एन इम्पैक्ट, मैं बोलूंगा। डेम्बेले हैज बीन ब्रिलियंट I एज think वेल De एट Jong is टाइम्स। also. डियोंग, नाइस पास। Oh my god, crazy, bro. It's a craziness happening. Onana catching the ball finally. Please, just full time. Please, full time. ओ भाई साहब, ये वो पास कौन किया था यार? एक सेकंड, कौन किया था? Who got the assist? Eric Garcia. What a ball, bro. What a ball by Eric Garcia. मैंने एरिक गार्सिया को काफी कॉल आउट किया है, मतलब आई हैव टू पुट माय हैंड अप. What a moment and what a ball, bro. Eric Please, Garcia. please, please, please do ओ something मैं, right. नहीं होगा, Please do नहीं something होगा, right. एक लेफ्ट 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 में पास कर यार, लेफ्ट में करना था यार, होगा, हाँ. No, come on. Oh man, what a miss! What a miss! What a miss by Inter Milan! Was it Bellanova? No, it's And yes, we are not twins. Aslani. हम दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. Come on, How did he man. miss it? Score I think it's that. probably was Bellanova, right? Aslani, I think. I can't believe it. Ter Stegen, bro. Would you give him the credit or what in that moment? Obviously, great save, man.
What is this match, man? Ankit, what is this game? Just please, This just has lived up to the expectation. ये टाई एंड यस मैंने बोला था भाई क्या होगा यार ये ग्रुप ऑफ दैट इंटर हग रही है. आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग ब्रो, लेट मी टेल यू. I have to put my hand up there. Absolutely. By Inter Milan, yes, they have not done well generally. And now Inter Milan, look at that strength, bro. Oh my God. Bad pass though. बहुत ही naive pass था वो वाला. But now right wing में बचाओ यार, जाओ यार. Right wing में हो रहा रन. बहुत ही क्या कर important रहा है? interception. But he misses it. और यहाँ पे नहीं 100% फाउल है. चलो बच गए इंटर. I thought they have missed it यार. इंटर मिलान का फाउल है डेफिनेटली. सॉरी बार्सा का फैन फाउल है और इंटर मिलान. यहाँ पे बैटर चलते हुए कोई नहीं भाई, चिल है. आई फील बार्सा विल स्कोर अगेन जस्ट गट प्लीज नो. या मुझे भी लग रहा था वही. फतेह इज एवरी चेल्सी फैन फ्रॉम 2021 यूसीएल फाइनल ब्लो द विसल. असलानी क्लाउन. ओह माय गॉड असलानी था मैन भाई साहब अगेन. बट वुड यू एक्सपेक्ट असलानी टू स्कोर दैट? मतलब you But had then the that's wrong. why when you said, Ankit, that Aslani should have started, that's probably why, But नहीं please just आई blow मेंट the डिफेंसिवली ना. मतलब yeah. अगेन But कमिंग बैक टू मेरे ख्याल से ना द फैक्ट how दैट यू come? हैव लुकाकू आउट, you shouldn't have got Dzeko off so early. That's simple as that. मुझे लगता था अगर जेको होते in those moments, you 100% would have put your house that Dzeko will score, bro. Come on, just milk it, man. Just milk it. Come on. मनोलास वाला फीलिंग आ रहा है. और भाई साहब नहीं यार अभी हो गया. इंजागी बोल रहे खत्म करे बस Red खत्म. card for इंजागी इज Inzaghi. हैप्पी. रेड कार्ड. इंजागी लाइक भाई गाली वाली दे दिया भाई. तू कितने पैसे लिया है, विसल को नहीं ब्रो कर रहा है. 6 मिनट हो गए. बट कम ऑन ब्रो, स्टॉपेज टाइम में गोल हुआ है ना, तो आई थिंक इट्स ओनली फेयर. Oh, we इंजागी got इज a गॉट इट corner. रॉन्ग. Come on, come on, come on, come on. Yeah. Just finish the game off. Inzaghi is happy referee. with the whistle being blown. हाँ अभी आउट नहीं है. They are having 2 matches. Remember, just like Liverpool has come back in the group, you never know. Barca can come back. Yeah, अभी we are ahead in the head-to-head, and Barcelona are hosting their big rivals, Bayern Munich. So let's see what Bayern plus Munich do. या प्लस इंटर का यही प्रॉब्लम है ना, इसलिए फतेह थोड़ा बहुत रिग्रेट करेंगे आई एम श्योर आज, क्योंकि इंटर हैज बीन वन ऑफ द टीम. अरे व्हाट अ हेडर. Gozens has been It's brilliant over. after coming on, and it's full time. Was that hitting the post? And yes, you can see Fateh in the larger scheme of things, it has really been Yeah. a great performance and a great draw. Just a point. But Barca, I have to question the second half start. But the way Barca came back, आप बोलोगे that Barcelona are also one of the side जो आप underestimate नहीं कर सकते हो. But Inter Milan, Fateh, hats off, bro. I think Inter Milan for the entire performance, or especially not having Brozovic, I have to say. Lukaku तो छोड़ो, ब्रोजोविच नहीं थे आपके मिडफील्ड में, फिर Not भी having Brozovic. so I think I have to go. I think again this match for me, this match deserves an applause, bro. Yeah. Yeah, unofficially out. Yeah, मतलब again मैं दिखाना चाहूंगा for people wondering. And yes, by the way, यहाँ पर I believe सब जगह हो गया full time. Victoria Pleasant 2-4 हार गए हैं. Obviously Bayern Munich looks like they are winning the group unless they lose against the next 2 opponents, जो मुझे नहीं लगता होने वाला against Inter and Barcelona. And that might be one of the possibilities. लेकिन वहां पर मार्से beat Sporting, Tottenham beat Frankfurt 3-2. Crazy. And Liverpool have got a great victory 7-1 against Rangers away. This is one of those UCL classics that मैं यहाँ पर अपडेट भी कर देता हूँ for people who don't know. लेकिन साहब I am like speechless almost. Fateh, how are you feeling right now? Same. I need moments to collect my thoughts. What the hell was this match? मैं तब तक कमेंट लेता हूँ भाई, सब लोग के कमेंट लेता हूँ. एंड यस बाय द वे सब लोग उसी बात पर लाइक कर लीजिए. यस बाय द वे वी आर हैविंग फॉर मी द बिगेस्ट इन इंटर अल्ट्रा दैट यू कैन फाइंड इन होल ऑफ इंडिया. तो भाई सब लोग यहाँ पर आ जाइए भाई, सब लोग को ला दीजिए. बिकॉज ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. फॉर मी फतेह इज द बिगेस्ट और द मोस्ट नॉलेजेबल इंटर फैन दैट आई हैव सीन इन होल ऑफ इंडिया. प्लीज भाई सब लोग ला दीजिए. And he is here. And for Inter fan, this is a huge moment. So everyone, let's like the stream and let's get more people, because we're going to be discussing the game. But Barcelona, you have to say that as much as thoda sa issues the, I feel that Barcelona ka Camp Nou came to the fore. Yes, definitely Inzaghi did help कि इतना negative हो गए, and then उनको red card भी मिला खुद को. लेकिन in my opinion there was a lot that Inter could have done. यार मेरे लिए यस इंटर के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, लेकिन मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि जेको को जो जल्दी ले लिया ना बाहर,
in my opinion, Yeah. and even I think Hakan. Calhanoglu. Hakan. Yeah, absolutely. Exactly. And the तो way ये Hakan दोनों played in that second half. थोड़ा सा, नहीं तो बारसा हारनी थी यार, सच में बोलो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, नॉट दैट आई वांटेड, बट आई एम जस्ट सेइंग द वे इट वाज गोइंग, मुझे लग रहा था अगर वही चांसेस पड़ते ना जो हुए थे, आई थिंक आई एम प्रोबब्ली श्योर दैट इट वुड हैव बीन a Barca loss अगर जेको एंड हकान would have been on the pitch. Anyway, best match of group stage बोल रहे हैं, UCL classic कृष्णा बोल रहे हैं, इंटर deserve to Yeah. win that chance in the end, could create Yeah. problems. My respect for Inter absolutely there is, लेकिन वही है, Inter has been one of the sides they are capable of losing the next two. That is the whole painful part for Fateh, जो मैं I know it's a good moment for Fateh, मैं उसको spoil कर रहा हूँ, लेकिन वो reality ये है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बारसा के को चांस अभी भी है, तो people think yes they needed a victory in my opinion as well Inter, लेकिन हाँ बारसा needed more. Lord Christensen getting good game time in Europa League, नहीं यार अभी तक नहीं हुआ Europa League, Aslani Lord, Inter should have won it again. Exactly, man. You wanted a Hakan or a Dzeko or even a Barella to be in that moment. To be They in were that not on the position. pitch. Absolutely. तो मैच अगेंस्ट बायर्न विल बी की. टर शेगन व्हाट अ प्लेयर यार, अरे मैन ऑफ द मैच सब लोग आप लोग बताइए यार. आई नो लेवेंडोव्स्की गॉट अ कपल ऑफ गोल्स व्हिच वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. Eric Garcia's pass for that header, people will not remember. Why, that was a Hollywood pass. Talk about Hollywood passes. Bastoni ka Hollywood pass to Barella. Barella ka neat finish. Wow. This game had not only comebacks, this game had basically a red card in the end. This game had basically a fantastic world-class pass, a fantastic finish in both Barella and Lewandowski. भाई हर चीज जो आपको चाहिए ना गेम में, हर चीज थी. Extra stoppage time, लड़ाइया, मतलब this was one of those absolutely classic games that we're talking about. 4-3 हो सकता था अगर लास्ट में शॉट लेने के जगह पास हो जाता. वेल अगेन भाई लास्ट सेकंड में जो हेडर हुआ था ना, मुझे लगा था वो गया है अंडर. अगेन मुझे पता नहीं वो टर्च सेकंड सेव किया कि नहीं, जो लास्ट सेकंड में हुआ ना, इवन दैट आई थॉट दैट इट वेंट इनसाइड. भाई पीके ने, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, he was an extra man forward towards the end, so that's why maybe he took off Alonso and kept PK. And yes, LM10 it was basically अभी भी यार बहुत ही important goal था for Barcelona to keep their chances. तो यहाँ पर ये है आपका लाइनअप और परफॉर्मेंसेस. भाई सब लोग डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. साथ साथ मैं ये दिखाना चाहूंगा फतेह व्हाट इज एक्चुअली द सीन इन द ग्रुप फॉर पीपल हु मिस्ड इट. भाई फतेह अभी नेक्स्ट मैचेस क्या आपके, हाँ एक तो है विक्टोरिया प्लेजेंट, ठीक है. I think the next match that we have is Pilsen at home. We need to win that, and then we need to hope that Bayern Munich take their rivalry with Barca very seriously, and they probably will. They'll not go easy. They'll probably But play their it's at the best. Camp Nou as well, no? Yes, but they'll still play their. I think Barca, yeah. I mean, Barca Bayern is going to be massive, and if Bayern can do something there, then yeah, I think we'll be through. But yeah, I mean, massive point. I don't even know. Like honestly, I wanted 3 points, but I'll settle for 1-2. Like as long as we didn't lose. I didn't expect this. Like I honestly didn't think that we had this sort of performance, this sort of to just go out there to Camp Nou and just keep attacking them throughout the 90 minutes, even towards the end. It was us who looked like we could have won it. So wow. Yeah. नहीं मैं भी समझाता हूँ फॉर एवरीवन आउट देयर हु वंडरिंग क्या इक्वेशन है. देखिए इंटर आर येट टू प्ले बायर्न एंड प्लेजेंट, ठीक है. तो आप देखिए ये दो मैचेस थे, तो अगर प्लेजेंट के साथ फॉर हाइपोथेटिकली सोचते हैं देवेश और एवरीवन भाई जो भी देख रहे हैं, अगर इंटर लाती है एक ड्रॉ, लेट्स से बेस्ट केस सिनेरियो फॉर बार्सिलोना आई थिंक इज अ ड्रॉ, लेट्स बी ऑनेस्ट. तो क्योंकि आज एक्चुअली प्लेजेंट डिड प्रीटी वेल टू बी ऑनेस्ट, तो ड्रॉ हो सकता है, यू नेवर नो, कम चांसेस है, हो सकता है 8 पॉइंट्स पे होंगे. एंड बायर्न के साथ क्वाइट प्रोबेबली दे कैन लूज एज वेल, वो तो हाई प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे सब लोग दे कैन, राइट. आई नो इट्स अ 6th मैच डे, वहां पर बायर्न माइट टेक द फुट ऑफ द गैस, इट माइट सूट इंटर, लेकिन ऑन दैट डे हो सकता है द 6th मैच डे में जो सब्स्टिट्यूट्स है दे विल गिव दैट इवन मोर, दे वांट टू गेट इन द टीम. सो आई एम जस्ट सेइंग दे माइट लूज इट. तो 8 पॉइंट्स हो सकता है. आई नो बेस्ट केस सिनेरियो ही है बारसा का ये, और बारसा हैज टू विन बोथ द मैचेस. सिंपल, बहुत ही सिंपल है. लेकिन अगर बारसा टेक्स 4 पॉइंट्स, वहां पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग हेड टू हेड में इंटर आर बेटर, एंड दैट इज व्हाई बारसा नीड टू विन बोथ द मैचेस. तो प्रोबेबिलिटी मैं अभी भी बोलूंगा इंटर हैज ऑलमोस्ट लाइक अ 67 to 70. No, but Ankit, if we beat Pilsen next, then we have 10 points. So even if Barca win the next 2 games, Correct. they're out. Correct. They're out. Correct. Yeah. Absolutely. Absolutely. And that ठीक would है. be the Inter thing to do, to not beat Pilsen. You're totally correct.
there too. Shit. Yeah, that's Pazza Inter, you know, crazy Inter. नहीं प्लेजेंट आज by the way, yes, for people watching भाई आपको नहीं पता तो प्लेजेंट did score 2 goals आज against Bayern Munich, against the mighty Bayern. तो you never know, but Inter knowing that they will qualify 100% अगर वो जीत जाती है प्लेजेंट के साथ, आई स्टिल फील दैट मैं इसलिए दे रहा हूँ 70% चांस इंटर को दे रहा हूँ, यू नो बहुत ही कम चांस है, मे बी 70 भी कम दे रहा हूँ, 75 to 80% चांस है इंटर का, मे बी इज जस्ट यू नो मे बी 4/5 इंटर का है, 1/5 बारसा का चांस है. Okay, does now Liverpool and Man City hype has increased with Liverpool coming back from 1-0 down and Mo Salah? Not really, Syed. With all due respect, and yes, of course, it would have been a fantastic performance, bro. इतना मैं जरूर बोलूंगा about this, and we'll come back to Barca in just a few seconds. देखिए, यहाँ पर clearly है that for Liverpool, it was against Rangers. Yes, it was away, but Rangers have been one of the, as in, absolutely out of form teams. Yes, they are coming with European glory, or you're saying almost, by reaching the final last time. लेकिन कम ऑन भाई, वो एक अलग लीग थी. तो आई वुड नॉट से दैट. अब देखते हैं, अगेन आपने बोर्नमथ के साथ भी जीता था, लेकिन देन व्हाट हैपेंड. सो आई थिंक jury is out with Liverpool. कैन दे डू इट वीक इन वीक आउट? थोड़ा सा प्लेयर्स रन आउट ऑफ गैस. एमशे बोल रहे हैं, oh my what, in Dishant is also an Inter fan bhai. What a game, we frustrated the shit of Barca in Camp Nou. Wow, I'm so proud again bhai. So यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, yes, this match I didn't want it to end. Yes, it's भाई अभी यार 2:40 बजे इंडिया में, for people watching it's 2:40 AM in India, ठीक है, but still I am like नहीं भाई, this was one of those games जहाँ पर your mojo is back, bro. I remember there are few matches जैसे Chelsea Ajax था 4-all, crazy game, you know, it was one of those games. And this is, we are talking about Inter Milan away to Barcelona, so that's even bigger in terms of both the, you know, histories that they have. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे फॉर दैट रीजन. बट अगेन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगेन क्विकली मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले भाई आई हैव टू गिव टू बारसा दैट फर्स्ट हाफ में I genuinely believe that Barca were the better team. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, yes, Inter had a lot of chances, लेकिन I thought Barca were the better team because of basically एक सर्जी रोबर्टो फैक्टर, वो who really played out of his skin. लेकिन फिर निको बरेला का जो मोमेंट था ना, इट काइंड ऑफ, मतलब somehow एक होता है ना infectious energy, क्या बोलते हो, मतलब it really motivated you guys to play something and come out of nothing. It was that moment. एक throw in था, and ironically Sergio Roberto lost मतलब that possession and gave the throw to Inter. And that throw in से Alessandro Bastoni took the ball, ping किया ball, और Barella somehow beat his man or got in the box and scored with a brilliant technique. और Ter Stegen was founded there. लेकिन फिर Lautaro this was crazy as well, ठीक है, this was crazy as well, the moment that happened. मुझे it's been so long कि मुझे याद भी नहीं क्या हुआ था exactly. Fateh, I don't know if you remember what exactly happened in Lautaro goal. Because I remember that goal. This is like we were now praising Lautaro like crazy as well in that moment, right? That's all I remember. फिर the difference was, in my opinion, the substitutions. ठीक है, जो गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया फॉर न्यूट्रल, और ज्यादा बहुत ज्यादा क्या कर दिया, मतलब नर्वस कर दिया फॉर अ बारसा और एन इंटर फैन. क्योंकि यहाँ रफीनिया was taken off, Busquets was taken off, Ansu Fati or Frankie, in my opinion, positive changes. On the other hand, this guy he brings on Darmian for DiMarco, who was having a brilliant game. Then he brings on Robin Gosens, who actually had effective, you know, kind of half. लेकिन for whom? For Hakan और Edin Dzeko, जो बहुत ही अच्छा किए थे, my opinion. और Belenova आ जाते. On the other hand, Alonso goes, Roberto goes, because they ran their socks off, और Kessie and Balde come in. लेकिन again Robert Lewandowski doing the trick, और ये this was almost, you would say that उसके पहले chances मिले थे, you missed it. Robert Lewandowski in Fateh, that goal, finally getting the deflection, थोड़ा लक आया Robert Lewandowski को, and then Ferran Torres came on, और भी अटैक किया, by the way Inter और भी डिफेंड किया, आप देख ही रहो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन में, and then obviously जो हेडर था with Eric Garcia getting the ball, wow, what a ball and what a header, brilliant. I don't think Onana could have done anything. लेकिन हाँ, you can argue that अगर आप ला ही रहे हो, if you got Belenova and you already have, I think Dumfries was still on the pitch, so how did Lewandowski, you know, leap that much? ये थोड़ा सा question mark करेंगे. But Inzaghi trying to waste time in the end, I think गाली दे दिया, क्या दिया, it was a red card. भाई again man of the match आप लोग को सबको पूछता हूँ, I genuinely believe that मतलब is one of those matches बहुत ही difficult. First half में I would still say Sergio Roberto. Second half में you can argue Lautaro, bro. As in, I know Lewandowski. I think Lautaro gets it. That finish, for example, and then that pass right at the end, you know, like or Ter Stegen. Oh God, I'd go for Lautaro today though.
Inter will win. Okay, yeah, Inter will win. But वो ये मैं I'm trying to be the neutral and seeing that और भी interesting कैसे होता है ना group. Who knows? मतलब again it has happened. Inter in Europe. I know फतेह को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये fact है. Inter in Europe you always have that question mark. सच में बोलता Yeah, हूँ. yeah, After 2010. yeah. No, even before that, I mean, with we were the original money dough club that never won anything till the special one arrived on the scene. So, yeah, I mean, so no. But I think with Inter you never know. I mean, we are the kind of club that can put in these two performances against Barcelona and then just take a draw at home to Pilsen and then suddenly you're like going to Munich यार to वो last chance मतलब again rather than heading the ball you should have passed, but I think even that heading the ball could have been no, it could that have been a goal. Aslani I chance. think That Aslani chance, though. I अच्छा mean, असलानी वाला क्या अच्छा yeah, that chance. हाँ He had all असलानी the वाला time in the फिर world. He had all the time in the world. Like he just needed to, and he would have become such a star, To, no you just needed a better finisher in that second, simple as that. yeah, yeah. uh, yeah 99% बोल रहे हैं इंटर के chances. Okay, I love this guy, again man. I love the it's all optimism. over for us. Oh, I'm sorry, bro. Again, मतलब, again, bhai, I have no idea. I know financially it's going to take a huge impact. Again, there are high chances. Again, मैंने दिया 80% or close to Inter को and 20% दिया Barca को. That is only considering कि यार you are depending on Victoria Prison. That's the only thing. Or I don't know. It's crazy, man. Only. हाँ मतलब it would have been. I know group में you're still good. मतलब आर्ग्यूबली यू कुड हैव बीन इवन बेटर है. मतलब आप हम अज्यूम करें कि आप बायर्न म्यूनिख से हारोगे, लेकिन आर्ट इंटर थिंकिंग कि यार अगर वो असलानी का गोल होता तो मे बी वी कुड हैव बीन ऑन 9 पॉइंट्स और वी कुड हैव बीट बायर्न एंड टॉप द ग्रुप ब्रो. देयर इज अ That's स्कूल ऑफ थॉट. ज्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया आज के लिए. But why not? आज जैसा दिन है. We can say yeah, why not? Like we'll go there See, and will this matter next match or whether it's a blessing in disguise that Inzaghi is out in the next match? yeah, exactly. Like he'll not be making these. I don't know what to say though. He brought in Guzans though. Like that's what I don't know what to say to Inzaghi. Like this is what he did today. He could have easily lost it, and he could easily have won it. Like I don't know. Like I'm still, you know. Oh, Ter Stegen, man. One of us बोल रहे should get the man of the match. मतलब हाँ मतलब it's a game of two halves. सच में बोलता हूँ. Like I said, first half में I thought Barca were the better team just But about. come on, man. The chances that Dzeko and हाँ Dumfries chances. had, come on, we should have at least scored one. So Yeah, if yeah. they have one goal, we should have had one goal. Like I don't know. Like I can't say, considering the kind of chances that we missed, I cannot say that. I think but tactically you have to agree that tactically I thought that Barca first half में अच्छे second half में Inter outplayed Barca tactically. Why I'm saying that because I think first half you weren't able to figure out where Sergio Roberto is going. तो Yeah, देयर वहां पर एक एक्स्ट्रा मैन जाता. लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा नेगेटिव इवन वी आर टेलिंग कि यार इंजागी नेगेटिव थे. इन माय ओपिनियन जावी भी नेगेटिव थे सेकंड हाफ की शुरुआत में. मैं वापस से बोलना चाहूंगा द मोमेंट द गोल हैपेंड राइट सर्जी yeah. रोबर्टो वाज इन द राइट बैक स्पॉट. इमेजिन अगर वो होते नहीं मे बी इंटर वुड हैव गॉट अ चांस ऑफ कंटिन्यूइंग दैट बॉल जो गेम प्ले हो रहा था और वो लोग मिस कर देते गोइंग बाय इंटर चांसेस इन द फर्स्ट हाफ. क्योंकि सर्जी रोबर्टो ने दिया वो थ्रो इन. Out of nowhere, Bastoni got that Hollywood pass, and out of nowhere, Barella plucked the goal out of thin air and got that goal. So I think that was the moment of the game मेरे लिए. सच में बोलूँ तो मतलब despite एक beautiful pass from Eric Garcia, I know Lewandowski brilliant header. मैं बोलता हूँ आप लोग बोलिए which was the moment of the game. मेरे लिए it has to be that Bastoni pass, bro. The Bastoni, man, that was a super pass out of nowhere, I thought. If Barca make it to Europa, seems so. Is there a chance they win that? I feel maybe Manchester may win it. To be very honest, there's Europa League और भी देखने का मन करेगा. Simple as that. लेकिन again, pretty honest that सच में बोलो between Manchester United and I know it's early days. लेकिन क्या बोलते हो between Manchester United and Barcelona? I think Barcelona should take it. The Europa League. You never know with the Europa League. Like, come on. I mean, no. In case Barcelona और Manchester मिलती है United. बहुत जल्दी है. Yeah, Messi is good. That is where we have to now start talking about Xavi, because somebody said that Xavi's tactics, like Messi's goat is now saying. And do you not think that Ter Stegen is a better, Ten Hag is a better coach than Xavi, and probably I think Man U. I think Man U will, he knows his stuff. Like it's just more experience. and Man U, I feel like Man U will make top 4 this year. Like what's their position? Oh, is it? Yeah, so I think they will make
top 4 this year. यार And so, मेसी इज गोट मतलब जस्ट कमिंग टू दिस मतलब आई वुड नॉट से नॉनसेंस ब्रो मतलब देखिए मैं तो बोलूंगा डेफिनेटली यार एज ए न्यूट्रल आपको पता ही है इस केस में yeah, I मैं mean, वापस De से बोल Jong, रहा हूँ but De Jong had a good impact though, when he came on. हाँ मतलब व्हाट आई वुड से टैक्टिक्स इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड हाफ वाज रियली नेगेटिव अपार्ट फ्रॉम दैट अलोंसो का पता नहीं इतने लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे थे मतलब अगेन प्लीज प्लीज करेक्ट मी फ्रॉम वेयर डिड द गोल्स कम डिड दे कम फ्रॉम अलोंसोस मिस्टेक्स प्लीज टेल मी एनीवन मुझे So मुझे याद नहीं है they came because we were just too talented. मतलब आप देखिए इफ कैन यू टेल मी दैट द मोमेंट ऑफ द गेम जो मैंने बोला है अबाउट बरेला वाज दैट अलोंसोस मिस्टेक नहीं तो यस अलोंसो व्हाट आई रादर से मेसी इज गुड इज अलोंसो को ढंग से आपने यूज ही नहीं किया अभी तक इन बारसा ही हैजंट बीन यूज्ड वेल ही इज अ विंग बैक ब्रो ही हैज ही बीन You यूज्ड know, एज अ विंग बैक I'll say this about Barcelona, Ankit, that there was a time when going to the Camp Nou meant that the team, that the opposition team, played just with 10 men. They parked the bus, and I'm talking about stuff from 1998 till about 3-4 years ago. And I think what has happened is that that fear factor is just gone. Maybe it's because modern football, the other team also believes in keeping the ball and passing it around. But one of the things that I have taken from these last 2 odd years is that fear factor that Barcelona had, that when you had to go to the Camp Nou, that's gone. Teams are going there and they are playing their football. And it never Yeah, happened. Like Frankfurt in the proved it. Now Inter Milan proved yeah, it. in the Chelsea have 90s, proven it. yeah, in the 90s, nobody went there and played football. Like Mhm. if you tried playing football, Rivaldo, Figo, Kluivert, Yeah. later on Ronaldinho, and then Messi and the Messi era, they would just carve you open. But now, the way Barcelona are, I think that a lot of teams simply go to Camp Nou and they believe that they can go and win. Like I'm telling you, Bayern Munich, when they're going to come there, they're going to play their attacking football. They're going to, and if Barca's defense is like this, then they are probably not going to be able to get maybe even a point there. Like Yeah, don't be yeah, and surprised if again, just on Barca's defense, मैं ये भी बोलना चाहूँगा. Yes, people might troll Barca and Xavi, and I know that will happen, whether I like it or not. ठीक है, होना नहीं चाहिए. लेकिन साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा that the jury is out for a reason because Xavi अब देखिए तो technically it's his first full season Barcelona, and no, again we tend to forget his record has been very good. Otherwise, in Europe, Barcelona's record generally has not been good as a club, and Fateh has a great point. Maybe the fortress of Camp Nou is not there. because There's something more Ankit, to it. till about 2 years ago, nobody could have sort of said that Barcelona would be losing by them. And I'm not talking about this match. I'm talking about what has happened with them in against Bayern Munich. Like I don't understand why Bayern Munich have a problem with Barcelona, for example. And they do, you know. And that rivalry that's come up and the kind of goals that they've conceded, and over the last 2-3 years, I've seen the way Barcelona have lost. I think that COVID season they lost 8-2 or 8 something Yeah, 6. yeah, yeah. It has been that match itself, right? No, which has And I gotten think the something's really changed from there. And you can see more and more teams sort of take on Barcelona. Like last year, I remember Galatasaray played Barcelona and Galatasaray were very good at Camp Nou. They got a draw and Javi had just come on. So I think that's what Barcelona will have to bring back, where at Camp Nou, they are the ones who are thrashing teams. They're the ones who are, and for that, maybe they need that special player because Barcelona have always had one very special player. Like every time I've yeah. seen them, Rivaldo, Figo, they had Kluivert, they got Riquelme. Okay, it didn't work out. Ronaldinho came to the scene, and from there on, Messi, Neymar, and today I don't know if Dembele is that guy. I think Lewandowski is a great goal scorer, but again, he's not that name They need a anymore. creator. They need that big name. I think that and I don't know when that will happen, but I hope it happens soon. चलो भाई उसी बात पर अगेन कंग्रेचुलेशंस अगेन मैं क्विकली आई जस्ट गो थ्रू द groups just in a second and then we'll end the stream. I know it's been a long night but a memorable one at that for sure. Again we are coming with a short review as well so people don't forget that on Almighty Blues FC our other channel. भाई ग्रुप ए में आप देखा लिवरपूल गॉट अ क्रेजी वन लुक एट द गोल डिफरेंस इट हैज सर्टेनली हेल्प्ड लेकिन नापोली का और भी भाई क्रेजी है तो यू हैव टू गिव टू नापोली यहाँ पे लेकिन हाँ Ajax भाई बहुत ही रद्दी खेल रही है और यहाँ पर यू कैन सेफली से दैट लिवरपूल एंड नापोली आर ऑलरेडी थ्रू ठीक है नापोली तो डेफिनेटली आर लेकिन हाँ इवन आई वुड से लिवरपूल और ग्रुप बी में क्लब ब्रुज पोर्टो एथलेटिको लेवरक्यूजन अब यहाँ पर विद पोर्टो विनिंग टुनाइट looks like Porto all of a sudden have got a strong hold apart from Club Brugge who have already qualified.
ग्रुप सी में इट्स बायर्न, इंटर, बार्सिलोना, प्लेजेंट, तो दैट मींस दैट इंटर का ऑलमोस्ट 80 to 90% चांस है विद, अगर विक्टोरिया प्लेजेंट लेती है कुछ इंटर से, देन मे बी बार्सिलोना हैव अ चांस, व्हिच प्रोबब्ली इज लेस. दैट्स द रियलिटी ऑफ इट. ग्रेट क्लासिक मैच, लेकिन यहाँ पर इवन टेक्निकली दैट वाज अ गुड मैच. आई वॉच द एंटायर हाइलाइट बाय टॉटनम अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, जस्ट अबाउट बीटिंग देम. लेकिन दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रुप, क्योंकि मार्से हैज बीटन स्पोर्टिंग बैक टू बैक. तो यहाँ पर क्रेजीनेस हो गया इस ग्रुप में. तो टॉटनम कमिंग टू वेयर दे प्रॉब्ली वांटेड इन द फर्स्ट प्लेस. और ये तो हम कल डिस्कस ही किए थे भाई, चेल्सी आर डूइंग वेल बट नॉट येट देयर. रियल मैड्रिड ऑलरेडी क्वालिफाइड, मैन सिटी ऑलरेडी देयर, एंड PSG Benfica is also an interesting one. Juventus helping them more really. तो भाई उसी नोट पर I think we should end the stream. But again, Fateh, thanks a lot. And yes, Thanks. भाई ताहा, भाई लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम आपकी ये है ना, आपने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, लीवर्स हो गए, ऑल दोस थिंग्स, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. बट कोई नहीं, इट्स No, फुटबॉल, but इट if हैपेंस. how can we हाई say रिस्क. they have no future when they're top of the league? And like why not? Like Yeah, you have to win La Liga. Put it that way. अगर La Liga नहीं जीते तो then probably there are huge issues financially. You have to win. There's no two ways about it, I would say. But oh my God, let's see. El Clasico. By the way, yes, people, भाई El Clasico preview हम करने वाले हैं परसों. So don't forget that. कल हो गया आज तो technically, but definitely we are doing that. Special guest आने वाले. But again, thanks Fateh. Again, congratulations to Inter fans because thanks, that was man. better result. But Liverpool fans as well. Barca, bad luck, but that's part of the game. Unfortunately होता है. ग्रेट क्लासिक एज ए न्यूट्रल यार, कंग्रेचुलेशंस टू न्यूट्रल्स भाई, जो जग के देखे Yeah, मैच. मैं तो बोलता हूँ, फॉर मी, absolutely. आई लव्ड इट. मतलब फॉर मी दिस वाज वन ऑफ क्या, वन ऑफ द बेस्ट वॉच अलोंग इन टर्म्स ऑफ जस्ट एंजॉयिंग इट Yeah, ब्रो. इट वाज ग्रेट. absolutely. This is a core memory for me now, Ankit. Like I'm going to keep thinking of how I saw this match with you for the rest of my life. एग्जैक्टली, इट हैपेंस एब्सोल्युटली. मेरे लिए भी राइट अप देयर. बट चलो उसी नोट पर विल मूव. एंड ऑफ कोर्स भाई, द बेस्ट पार्ट इज यू हैव एक आएगा भाई बारसा का अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और दैट विल बी इंटरेस्टिंग. एंड यस, यहाँ पर जाते Yes. जाते एक्चुअली दिखा देते हैं, दैट इज व्हाट Champions League football has brought to you. What has been the moment of this Champions League round? मैं बोलूंगा भाई Chelsea beating AC Milan, और आज का crazy match was probably the moment for Inter and probably the moment of the Champions League अभी तक. लेकिन I think this one probably deserves right up there as well. And this is what this guy can bring. I have to say this note पर I have to end the stream. Brilliant, जो किया है, and this is what his current state is. And I would be shocked if he's there at least on the bench. And that is what you get, and that's what I miss. But कोई नहीं. नहीं ऑफसाइड तो डेफिनेटली नहीं था फुटबॉल क्रीज, बट कोई नहीं. मच लव टू एवरीवन. चलो लाइक द स्ट्रीम, डू नॉट फॉरगेट, और रिमेंबर वी विल बी डेफिनेटली कमिंग आउट विद अ डिटेल्ड रिव्यू एज वेल, और शॉर्ट रिव्यू, इधर वेज. लेकिन अभी के लिए मच लव, एंड वी विल बी बैक ऑन इवन चेल्सी. ब्रो हमने करना है बस. अभी वही है, इंटर का ये परफॉर्मेंस ना हमको एक दे दिया है कॉन्फिडेंस कि यार यू नेवर नो इन फुटबॉल व्हाट कैन हैपन. बाय. Yeah, absolutely.